Conference. We welcome you on this very, very beautiful morning. Today we all have gathered here for yet another important plenary session, Tale of the Tall. The leadership mantras and understanding from the legends themselves and getting inspiration from their stories. As we can see, please welcome with a big round of applause, my friends, former Vice President of India, Shri M. Venkaiah Naidu ji. Please give them a big hand, please. स्वागत अभिनंदन करें श्री वेंकैया नायडू का। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद हैं हमारे बीच श्री वेंकैया नायडू, वृंदा करात जी, तमाम लोग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। और आप तमाम लोग जो यहाँ पर जुड़े हुए हैं हमारे साथ, आप सबसे आग्रह है कि ज़ोरदार तालियों से स्वागत करें। श्री वेंकैया नायडू, मीरा कुमार जी, सुमित्रा महाजन जी, लोपसांग सांगे मंच पर हाजिर हो रहे हैं। बहुत स्वागत अभिनंदन आप तमाम लोगों का। I request them to ring the bell of democracy. Ring the bell of democracy, please. Ring the bell of democracy, please. वेंकैया नायडू जी से आग्रह है। वेंकैया नायडू जी, सर, इफ यू कैन सी देयर इज अ It's okay. Lighting the traditional lamp has been the important tradition of our country, and at the august hands of former Vice President of India, Shri M. Venkaiah Naidu ji, Madam Brinda Karachi, Madam Sumitra Mahajan ji, किसी भी शुभ काम की शुरुआत जो है हमारे यहाँ दीप प्रज्वलित करने से होती है। तो स्टेज पे आप देख सकते हैं कि ये दीप प्रज्वलित करने की परंपरा आगे बढ़ रही है। श्री वेंकैया नायडू जी, मीरा कुमार, सुमित्रा महाजन, वृंदा करात, तमाम लोग एक साथ यहाँ मंच में मौजूद हैं, लोपसांग सांगे, और दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। और इसी के साथ आज ये तीसरा दिन उसका शुभारंभ हो रहा है। बहुत ही दिलचस्प सत्र यहाँ पर होने वाला है। टेल ऑफ द टॉल, यानी कि तमाम हमारे बड़े नेता जो हमारे बीच मौजूद हैं, उनकी कहानियाँ, उनकी जीवन की, उनकी सफलता की कहानियाँ आपके सामने हम सब लेकर आएंगे। कुछ ही देर में शुभारंभ हो रहा है इस सत्र का, टेल ऑफ द टॉल। आज तीसरे दिन आप सब लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और ये दीप प्रज्वलित करके आज के दिन की हम शुरुआत कर रहे हैं। Absolutely. A very, very important tradition just took place, and I'm sure this lamp will keep showing us the path to the righteousness. And I hope by walking on this path, we all would be successful in strengthening the democracy of our country. I would now like to request all the dignitaries to kindly accept the chairs on the dais. I would like to request for welcoming them. नीचे बैठे होंगे शायद। तो मैं आग्रह करूंगी हमारे तमाम विशिष्ट अतिथियों से कि मंच पर आएं और अपनी अपनी जगह लें। श्री कुंवर मानवेंद्र सिंह, श्री अवध बिहारी चौधरी, डॉक्टर सीपी जोशी, श्री रजनीकांत सिंह, श्री कुलतार सिंह संधवान, डॉक्टर चरणदास महंत, श्री कुलदीप सिंह पठानिया, श्री पसांग दौरजी सोना, श्री लालरिनलियाना साइलो मंच पर आएं और अपनी जगह लें। Yes. I would also like to request Shri Devesh Chandra Thakur ji, Basavaraja S. Horati ji, Satish Mahana ji, Girish Gautam ji, UT Kadir Farid ji, Gyanchand Gupta ji, Ramnivas Goyal ji, Arun Kumar Upareti ji, and Ambalam R. Selvam ji to kindly come up on stage. आप सबका बहुत स्वागत।
अभिनंदन। आज ये तीसरा दिन जब हम इस राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन के तीसरे दिन में हैं। ये पहला राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन, एक ऐतिहासिक सम्मेलन जिसको आप सब लोगों ने ऐतिहासिक बनाया है और आप सब लोग इस इतिहास के साक्षी रहे हैं। ये पहली बार है कि इतने बड़े मंच पर हमारे तमाम सम्मान्य विधायक मौजूद हैं। तमाम विधान परिषद, विधानसभा से जो विधायक हमारे आए हैं, देश के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग राज्यों से आप सब यहाँ पर पधारे हैं और आप सब ने इन तीनों दिन पे बहुत सारे अपने तजुर्बे को साझा किया है, अपने एक्सपीरियंसेस को एक दूसरे से बांटा है और इस मंच का यही उद्देश्य था। इस पूरे कार्यक्रम की कल्पना इसलिए की गई थी ताकि सब लोग एक साथ आएं और एक ऐसे गैर राजनीतिक मंच पर जुड़े जहां पर पार्टी लाइन से ऊपर उठकर एक दूसरे के साथ आप अपने अपने विचार साझा करें और एक दूसरे के तजुर्बे से सीखें। जो अच्छी बातें हैं हर राज्य के, उसको एक दूसरे के साथ साझा करें। सो इसी मकसद से इस मंच को सजाया गया था। Absolutely. And history has shown us that the remarkable individuals possess the wealth of knowledge, experience, and wisdom that can inspire and shape our own lives. By actively engaging with their narratives, we can gain invaluable insights into their triumphs, their failures, and lessons learned. Their stories become a source of motivation, guiding us through our own challenges and helping us chart a path towards success. So let us open our hearts and minds to the tales of the talls. For their stories, we discover a treasure trove of inspiration and guidance. जी बिल्कुल, बता दें आपको फिर टेल ऑफ द टॉल जो अभी भी बताया प्रोफेसर गौतम बापट ने, वो ये है कि ये तमाम विशिष्ट लोग जो आप मंच पे देख रहे हैं, उनकी कहानियां, उनकी सफलता की कहानियां। So let us begin with this session today. Before we begin, I would like to request everyone on the dais to kindly rise in their seats for national anthem. मैं सभी से विनती करूंगा कि वे अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। And I now request my technical team to kindly relay national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मागे। गाहे तब जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Thank you very much. And now, as per the tradition of this dais, National Legislators Conference, I would like to felicitate and welcome the dignitaries on the dais. First and foremost, I would like to request Madam Sumitra Mahajanji to kindly felicitate and welcome the former Vice President of India, Shri M. Venkaiah Naidu ji. और अब आग्रह करूंगी डॉक्टर मीरा कुमार से कि वो सम्मान करें श्रीमती बृंदा करात का। श्रीमती बृंदा करात जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, सीनियर लीडर रही हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की, रिक्वेस्ट करूंगी डॉक्टर मीरा कुमार से कि फेलिसिटेट करें बृंदा करात जी को। A big round of applause, my friends. I would once again request Madam
Sumitra Mahajanji to kindly felicitate and welcome the former President of Central Tibetan Administration, Dr. Lobsang Sangyeji. A big round of applause, my friends, for the presence of all these tall personalities for this very, very important session. बहुत बहुत एक बार फिर से स्वागत अभिनंदन हमारे तमाम अतिथियों का जो मंच पे हैं, हमारे तमाम अतिथि जो आप सब हमारे साथ बैठे हुए हैं। और अब समय है कि इस सत्र के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी और दे दें कि ये सत्र जो है वो क्या है। तो एक छोटी सी फिल्म के ज़रिए, एक ऑडियो विजुअल के ज़रिए आप देखेंगे कि क्या है आज का ये सत्र, क्या है ये टेल ऑफ द टॉल, यानी कि कहानियाँ उन तमाम शख्सियतों की जिन्होंने अपने लिए इस जीवन में अपनी छाप छोड़ी है। तो अपनी टेक्निकल टीम से आग्रह करेंगे कि एक ऑडियो विजुअल के ज़रिए आपको आज के सत्र के बारे में जानकारी दें। Bharat, the world's largest democracy celebrating 75 years. With this grand celebration, we bring you the first ever National Legislators Conference, Bharat, a unique coming together of more than 50 national and regional parties under one umbrella. The Indian Parliament, the temple of the world's largest democracy, is the source of inspiration for this conference. Under the patronage of 4 honorable former speakers of the Lok Sabha, Srimati Sumitra Mahajanji, Dr. Meena Kumarji, Shri Manohar Joshi ji and Shri Shivraj Patil ji. For the first time in the history of the country, more than 4,000 elected representatives from all the states and union territories will converge on an independent and apolitical platform. With more than 80 brainstorming sessions, this conclave deliberating topics like enhancing legislative performance, new best practices for good governance, economic progress based on social inclusion, and being effective and sensitized public representatives. In this forum, we will find solutions to chronic problems. A platform where different political parties will come together to make Bharat stronger. Where the youth will get inspired to enter politics. A new dawn of good governance, leadership, democracy, education, and world peace. आजादी के बाद देश आज जहां पहुंचा है उसमें इस देश के सभी प्रधानमंत्रियों का योगदान है। The patrons and advisors of this grand mission have already met at Pune, New Delhi, and Mumbai to discuss the details of this iconic conference. The seed was planted in 2005 with the setting up of the MIT School of Government, the aim of which was to give formal political training to the youth. In 2011, MIT School of Government organized the largest youth parliament, Bharatiya Chhatra Sansad, where thousands of young leaders from different parts of the country came together to give shape to their political dreams and ambitions. This was followed in 2017 by the National Women's Parliament aimed at helping women enter legislative bodies. In 2018, the Rashtriya Sarpanch Sansad came into being in order to strengthen grassroots democracy in the villages. The National Legislators Conference Bharat is born from these visionary milestones of over 20 years to give in every hand the tools of nation building. Come, be a part of this festival of democracy, the first ever National Legislators Conference Bharat, which will be organized on 15th, 16th, 17th June 2023 at Geo World Convention Center, Mumbai. Thank you very much for that film. जी, आप तमाम लोगों ने देखा कि ये जो पूरा ये कॉन्फ्रेंस है वो किस लिए है, क्या है, इसका उद्देश्य क्या था। और अब मैं आपके सामने
हाजिर कर रही हूँ श्री अशोक गहलोत को, जो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ रहे हैं। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान, राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ रहे हैं। श्री अशोक गहलोत का संदेश आप सबके लिए। Can you hear us, sir? परम आदरणीय वेंकैया नायडू जी, आदरणीय नितिन गडकरी जी, शिवा पाटिल जी, श्रीमती मीरा कुमार जी, सुमित्रा महाजन जी, वृंदा कावत जी, प्रतिभा चौहान साहब, हमारे स्पीकर राजस्थान के डॉक्टर सीपी जोशी जी, राहुल कराज जी और तमाम उपस्थित विधानसभाओं के माननीय अध्यक्षगण, उपाध्यक्षगण, विधान परिषद और विधानसभाओं के तमाम अध्यक्षगण और विधायकगण, विधान परिषद के सदस्यगण, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि पहली बार ये आयोजित हो रहा है राष्ट्रीय स्तर पर विधायक सम्मेलन। अच्छी पहल है। मैं तमाम आयोजकों को इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। पूरे देश के विधायकों का एक साथ संवाद करना लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है। मुझे खुशी है कि इस सम्मेलन में विधानसभा, विधान परिषदों के 25 वर्ष बाद की जिम्मेदारियों पर चर्चा हो रही है। ये सम्मेलन पार्टी विचारधारा को छोड़कर एकता और समरसता के लिए समर्पित होना भी मैं समझता हूँ कि एक अच्छी शुरुआत है। इस प्लेनरी सेशन का टॉपिक टेल ऑफ द टॉल लीडरशिप मंत्र है, जो बहुत ही प्रासंगिक है, नई जनरेशन के लिए एक प्रेरणादायक है। हम जानते हैं कि देश में लगभग 4,000 विधायक और 800 सांसद हैं। लगभग 125 करोड़ के देश में लगभग 5,000 लोग नीति निर्धारक हैं, जिनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इन 5,000 लोगों की जो जितनी लीडरशिप क्वालिटी होगी, उनकी अपनी प्रतिबद्धता होगी, उनकी जीवन शैली होगी, उसी प्रकार से मैं समझता हूँ कि देश की जनता को मैसेज आएगा। राजनीति में आने के बाद में हम सब पब्लिक प्रॉपर्टी रहते हैं, जनता के ट्रस्टी हैं। मेरा शुरू से मानना रहा कि राजनीति सेवा का माध्यम है। पूरी ईमानदारी, निष्ठा, प्रतिबद्धता, जनता की सेवा करना ही हमारा परम धर्म होना चाहिए। अपनी पार्टी और विचारधारा के लिए समर्पित और प्रतिबद्ध रहना एक बहुत बड़ा गुण होना चाहिए, क्योंकि पार्टियों में अप एंड डाउन चलते रहते हैं। तो कई बार लोग लालच के अंदर पार्टी बदल देते हैं, जो नहीं होना चाहिए। नई पीढ़ी को गलत संदेश जाता है। जितना हम अपने जीवन में ये लड़े विचारधारा की हमारी है, कोई दुश्मनी नहीं है विपक्ष के साथ में लोकतंत्र के अंदर, इसलिए जरूरी है कि हम अपनी विचारधारा के लिए पक्के रहें, प्रतिबद्ध रहें, निष्ठावान रहें और किसी भी कीमत पर हम दस बदल करने के लिए सोचें। आजकल हॉर्स ट्रेडिंग से सरकारें गिरे जाती हैं और विधायक में भागीदार बनते हैं। ये बहुत ही चिंता का विषय होना चाहिए देश के लिए। वो एक पार्टी का सवाल नहीं है। देश के लिए अगर हॉर्स ट्रेडिंग होगी, सरकारें गिराई जाएगी, तो लोकतंत्र के मायने क्या रह जाते हैं। 75 साल हो गए हमारी आज़ादी को। 75 साल में हमारे देश में जिस प्रकार से लोकतंत्र कायम रहा, मजबूत रहा, पाकिस्तान हमारे साथ में आज़ाद हुआ और बार बार सैनिकों का शासन हुआ, लोकतंत्र की हत्या हुई। हमारे मुल्क का सौभाग्य है कि हम लोग 75 साल के बावजूद भी यहाँ पर एकता, अखंडता रहा हमारा मुल्क। तो इंदिरा गांधी जान चली गई, कोई खालिस्तान नहीं बनने दिया। लोकतंत्र की जड़ें मजबूत रही, सरकारें बदलती रही शांतिपूर्वक। और ये बहुत बड़ी खासियत है पूरी दुनिया के मुल्कों में हमारा सम्मान देश का, इसलिए कि गांधी का देश है। ये लोकतंत्र जहाँ मजबूत है, इसलिए हमारा मान सम्मान पूरे देश के अंदर होता है। इसलिए मेरा मानना है कि राजनीति में आने के बाद में नई पीढ़ी को प्रेरणा मिलनी चाहिए कि हम
राजनीति में कितने ऊंचे पद पे पहुंच जाएं, परंतु ह्यूमिलिटी हमारे साथ रहनी चाहिए। हम नम्र रहें, हमारा व्यवहार ऐसा हो जो लोग उससे इम्प्रेस हो, सादगी के साथ रहे, ईमानदारी के साथ राजनीति करें, तब जाके हम देश को नई पीढ़ी को सुपुर्द करेंगे। तो मैं समझता हूँ अपना कर्तव्य निभाएंगे। अगर हमारे अंदर करप्शन की शिकायत आती रहेगी, बढ़ती जाएगी, सभी तरह से अगर हम लोग वो प्रेरणा नहीं दे पाएंगे नई पीढ़ी को, आने वाली जनरेशन क्या कहेगी हमें, जिसके लिए आपका 25 साल के बाद में क्या जिम्मेदारी हो, वो आपने विषय भी रखा है। अन्याय हो, अत्याचार हो, उत्पीड़न हो, जनप्रतिनिधि भी चाहिए किसी कीमत पर उनके साथ नहीं दिखे हुए, उनकी सिफारिश नहीं करी, चाहे वो कितने नजदीक का आदमी है, परिवार का आदमी है, तब भी उनको चाहिए मजबूती के साथ में वो न्याय सुनिश्चित करने के लिए काम करे। ये हमारा ध्येय होना चाहिए। जब जाके एमएलए एमपी हम सब की जो है जो क्रेडिबिलिटी है समाज में बनी रहेगी, तभी जाके हम लोग गुड गवर्नेंस दे सकते हैं। मैंने पहले कहा कि कोई हमारे दुश्मनी किसी से नहीं है, यही भाव होना चाहिए। पहले जमाने में हम सुनते थे असेंबली के अंदर या पार्लियामेंट के अंदर कितनी गर्मा गर्म बहस होती थी, आरोप लगते थे, जैसे बाहर निकलते थे लॉबी के अंदर, और वही पक्ष विपक्ष के लोग प्यार से, मोहब्बत से, भाईचारे से हंसी मजाक करते थे। ये टेंडेंसी जो थी, आज उसके लौटाने की आवश्यकता है। आज धीरे धीरे दुश्मनियों में बदलती जा रही है, तनाव दिखता है पक्ष विपक्ष के अंदर। उसको समाप्त करने के लिए जो सत्ता वाली पार्टियां होती है, केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है इस भूमिका को निभाने के लिए वो पहल करे। विपक्ष पहल नहीं करेगा, पहल करनी पड़ेगी जो शासन के अंदर, उनको पहल करनी पड़ेगी। और आज आवश्यकता है केंद्र में भी और राज्यों के अंदर भी। अगर आपने इतना बड़ा सम्मेलन किया, मैं तमाम आयोजकों को, जो हमारे स्पीकर रहे हुए हैं पूरे लोकसभा के, और सबने मिलकर जो किया है, बहुत बड़ी पहल करी है और ये बहुत सफल हो रहा है, क्योंकि पहला सम्मेलन है। धीरे धीरे आने वाले वक्त में और ज़्यादा मजबूती के साथ में ये कामयाब होगा। मेरा मानना है कि आज जो आपने विषय रखा है, विषय के आधार पर हम लोग चलेंगे तो आने वाले वक्त में हो सकता है कि नए माहौल के साथ में देश का नई दिशा देने में कामयाब हो पाएंगे। मेरा मानना है कि कुछ जो है फैसले डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी के वक्त हुए थे, यूपीए गवर्नमेंट वक्त में। आज़ादी के बाद में पहली बार अधिकार आधारित युग की शुरुआत हुई। लोकसभा में कानून पास हुए, नरेगा का, आरटी का, एनएफएसए का। ये कानून कोई मामूली बात है, नरेगा का होना बहुत बड़ी बात है। आरटीआई है, आरटी है, एनएफएस है। ये कानून बना के हमने अधिकार दिए जनता को। अब जो नई पहल करने का आपने जो विचार व्यक्त किया है, आज हमने प्रयास किया राजस्थान में राइट टू हेल्थ। पूरे देश के अंदर एकमात्र राजस्थान राज्य है जिसने राइट टू हेल्थ एक्ट बनाया है। 25 लाख हम लोगों ने इंश्योरेंस दिया है। सारे इलाज फ्री है, प्राइवेट के अंदर ही और पब्लिक के अंदर भी। बहुत बड़ा इम्पैक्ट इसका हुआ राजस्थान के अंदर। ऐसे हमने कई नवाचार किए राजस्थान के अंदर। इंदिरा गांधी के नाम से हमने शहरों में रोजगार नरेगा शुरू किया है। जैसे नरेगा है गाँव के अंदर, ये शुरू किया गया है। मेरा प्रधानमंत्री जी को मैंने पत्र लिखे हैं और मैंने रिक्वेस्ट करी है, आप राइट टू सोशल सिक्योरिटी एक्ट लाएं। वक्त आ गया है कि पूरे देश के लोगों को, जैसे विदेशों के अंदर जो नीडी है उनको वीकली पैसा मिलता है, फोर्टनाइटली मिलता है, उसी ढंग से हमारे मुल्क के अंदर भी आज मजदूर काम करता है 55 साल 60 साल के बाद में उसका जो उसकी बॉडी है वो काम नहीं कर सकती है मजदूरी के लिए। ठेले वाला है, गरीब आदमी है, उसको कम से कम जिंदगी में सोशल सिक्योरिटी मिली पक्की, जिससे कि वो आराम से अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। कई बार बुजुर्ग आदमी के उनके बेटे होते हैं, पोते हैं, तो वो इस लायक नहीं होते हैं चला सके फैमिली को। तो धीरे धीरे तमाम देश के अंदर सोशल सिक्योरिटी लागू होनी चाहिए। ये थीम भारत सरकार को मैं समझता हूँ कंसिडर करना चाहिए। और आप जो सब यहाँ हमारे सीनियर लीडर्स बैठे हुए हैं, अगर वो सब मिलकर के इस पर विचार करेंगे तो मैं समझता हूँ कि सोशल सिक्योरिटी और एक हेल्थ के लिए राइट टू हेल्थ, ये ऐसा
वक्त आ गया है जब हम पूरे दुनिया के अंदर विश्व गुरु बनने की बात भी करने लग गए हैं। तब बन पाएंगे जब हमारे खुद का जो है घर, हमारा देश है, उसके गरीबों का, दलितों का, पिछड़ों का और निडी लोगों का, निडी किसी जाति किसी धर्म का हो, उनका हम भला कैसे कर सकते हैं, उनको न्याय कैसे दिला सकते हैं, सुनिश्चित कर सकते न्याय उनके साथ में, और सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकें। सोशल सिक्योरिटी बहुत आवश्यक हो गई है मेरा मानना है। राजस्थान में हम करीब 1 करोड़ लोगों को पेंशन दे रहे हैं, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे विधवाएं हैं, एकल नारी है, निःसंतान है। उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है राजस्थान के अंदर। इस प्रकार हमने कई नवाचार किए हैं। समय कम है कि मैं उन नवाचारों के ऊपर चर्चा नहीं करूंगा, पर हमारे नवाचारों की चर्चा आज पूरे देश में हो रही है। इस बात का मुझे बहुत गर्व है। हम चाहते हैं कि सोशल सिक्योरिटी के माध्यम से एक मैसेज दें गरीबों को भी कि सरकार आपके साथ में खड़ी है, ये मेरा मानना है। इस सम्मेलन को जो आप लोगों ने बुलाया है उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत बधाई देता हूँ, मेरी शुभकामनाएं हैं। और बड़ी संख्या में विधायकगण आए हैं, सब लोग विधान परिषद के सदस्य आए हैं। मैं सबको मेरी बहुत शुभकामनाएं, मेरी बहुत बधाई है। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। Thank you very much, sir. Thank you very much for taking time out for all the honorable MLAs and MLCs from all across the Bharat. बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आपके बिजी शेड्यूल से समय निकाला और फर्स्ट नेशनल लेजिस्लेटर्स कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए. Thank you very much. My friends, this is the beauty of this session where we listen to the views and experiences of such tall personalities. And now we have with us one more such tall personalities in online mode. We have with us Shri Prithviraj Chauhanji, who is a seasoned politician who has made a significant contribution to Indian politics, serving as the Chief Minister of Maharashtra from the year 2010 to 2014. Shri Chauhanji has showcased a leadership, skill and policy expertise. With the strong focus on development and governance, he has played a crucial role in shaping the political landscape of Maharashtra and beyond. I'm really happy to share with you that Prithviraj Chauhanji has been associated with Sri Rahul Karad sir for more than a decade now, and he was instrumental and I would say a prime force and the motivation while the MIT School of Government was being founded. We are really honored to have him here today. He wanted to come physically in person, but unfortunately because of some unforeseen meetings and circumstances, he couldn't make it. But it's our good fortune that he's here with us online. So if he could hear us, I would like to welcome him with a big round of applause. I would like to request everyone in the audience to please welcome him with a round of applause. Thank you. Sir, can you hear us? I think we are not able to hear him. Technical team, can you please? Can you hear me now? Yes, sir. Thank you so much, sir. Over to you. No. Thank you. I'm sorry that I could not join you in person. Let me first congratulate the organizers, the MIT group, for conceiving this gigantic event for the first time in the country, where so many legislators from across the country, from across the party lines, have assembled together to strengthen the future of India's democracy. I've been involved in planning this event with Rahul for some time. Rahul was kind enough to invite me for a couple of meetings, and I had given some of my ideas. This was, of course, I couldn't be here today because I had to be away from Bombay for a party meeting. As the legislators from across the country are joined here today in a massive gathering for the first time ever in our country, and perhaps I don't think anywhere else in the developing world such a gathering has ever been put together. I think I must compliment the organizers and Mr. Vishwanath Karad, Rahul Karad, and the entire MIT team, and others who have these senior leaders from the country, the former speakers of the Lok Sabha, who have been kind enough to grace the occasion. The challenges before all of you is how we develop India into a
developed country in near future. The dream that our Prime Minister has for India to make India a developed country by 2047, when we celebrate 100 years of our independence. There are challenges. Saying that we'll become a developed country is one thing, but trying to develop the country, go into a trajectory of fast economic growth, and also serve the cause of equity is not very easy. Of course, we all would like India to become prosperous, wealthy, and remove the endemic poverty, the lack of education, the ill health, and all that as soon as possible. But bigger challenge, I think, before us today is how India remains a liberal democracy, a democratic republic that our founding fathers conceived us to be. As we develop, there are challenges, and challenges would be there. Different states could pull in different directions. But the idea of India that was conceived by the founding fathers when we founded the republic, when we wrote our constitution, that India should not be allowed to slip out of our hands. The liberal democracy that we conceived, a secular democracy that we conceived, must be strengthened, because that alone will ensure that India becomes a prosperous country, a developed country in near future. If you lose that dream, if you lose that ideal, then I think mere economic growth rate without equity, without justice, without brotherhood, and without true liberty will be meaningless. We have in the past slipped a little as far as our freedoms are concerned, whether it is a media freedom, whether it's a democratic index. And I think some people argue that it's bound to happen as we develop, but I don't agree. I think we must, while we develop, we must preserve our democratic republic, our secular democracy, freewheeling democracy with its problems and all. But we cannot, in order to achieve faster development, give up this ideal of a democratic republic. There are countries, there are examples in the world where a more authoritarian regimes have developed faster. And we are given examples of East Asian countries, we are given example of China and some other countries. But I would never sacrifice the idea of India that was conceived when our republic was founded. But the dream of being a developed country in a short time is something to be cherished, and I definitely cherish it. You have before you a large agenda. One of the immediate challenges which legislators face today is what to do with the anti-defection law. The anti-defection law, as it was conceived in 1985 by late Rajiv Gandhi, with the particular events happening around us, that served us to some extent. It had faults, and then there was a major overhaul of the anti-defection law in 2003. And we have today the law as it stands, which was amended in 2003. Apparently, that law has not worked. We have seen examples in many state legislatures where there have been rampant defection. Governments have been brought down, new governments have been created. And I think I'll urge you to really introspect and discuss whether there is a need, and as I believe, there's a need to scrap the current version of the anti-defection law and enact something more, which will really not allow defection to happen. There are many suggestions which have been made. I think this is one thing which I think I'll strongly urge that you discuss in the deliberations for the next 2 days. Another thing I would really ask you to ponder is the Constitution framers considered a separation of powers between the three arms of the government, the legislature, the judiciary, and the executive. But we don't seem to be anywhere near that ideal. I think the parliament, moment it elects the leader of the largest party, and that leader becomes the prime minister, and he has a cabinet at his disposal and a huge bureaucracy to govern, that executive becomes all-powerful and
Parliament virtually commits a hierarchy. Parliament cannot legislate itself. Parliament has no role in budget making at all. Parliament cannot disagree with the ruling party whip if they have a different view, or if the electors who are elected them have a different view. They cannot do it. They become really slaves to the whip. This is exactly what was talked of by late Madhu Limaye when the original anti-defection law was being enacted. And he said, please don't do it. The legislatures across the world, very few of them have a law like ours. The United States doesn't have it. England doesn't have it. I think we need to really recorrect the separation of powers and empower the legislature a little more. And one thing to do that will be to eliminate the anti-defection law entirely, so legislatures can act on their own in all matters. In the United States, we know that even the appointment of Supreme Court justices is at the behest of the Congress. The budget is framed by the Congress. The new laws are framed by the Congress, and the president is just given a de facto budget or de facto legislation to work on. I mean, we may not be able to go to that extent today, but I think I'll strongly urge you to consider whether, in today's scenario, legislatures have any role as was conceived when American Constitution was being drafted. The principle of separation of powers between the three wings of the government, I think is not working in India today. The executive has become all too powerful. I mean, even the judiciary has a limited role, but because the appointments ultimately have to be vetted. But particularly how the legislature gets back the power, its teeth, so that what was conceived in the Constitution when it was framed, the three arms of the government should balance each other. There should be checks and balances. It is not happening today. The executive has become all too powerful, whether in states or at the central level. I think these two themes, which are partly interrelated, would be my priority. Of course, how do you make sure that the legislators are given enough secretarial assistance, how they can really work on research. There are issues about constituency development. I mean, the organizers have conceived many verticals where you can discuss and enrich yourself. Of course, the most important thing today will be you'll be meeting across your colleagues and friends from all over the country. Many of you probably have not been to Mumbai. Enjoy Mumbai. I'm sorry I'm not there personally to welcome you, but I think one of my earnest requests before I conclude is that this should become an annual event. Maybe some other state would take up the sponsorship of the event next year, with, of course, the secretarial assistance provided by the MIT group. But let us make this into an annual event, and let us carry fond memories of your visit, your conference, and let's get something tangible out of this. Thank you. I wish the deliberations all the best. Thank you again. थैंक यू सो मच. बहुत बहुत धन्यवाद आपका पृथ्वीराज चौहान जी. आपने तमाम व्यस्तताओं के बावजूद समय निकाला और ऑनलाइन जुड़े. हम जानते हैं कि आप हम यहाँ पे आना चाहते थे लेकिन आप नहीं आ पाए. बहुत धन्यवाद आप तमाम लोगों का. और इस पूरे सत्र की सबसे बड़ी सुंदरता ये है कि हमारे तमाम ऐसे वरिष्ठ नेता जिन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ अचीव किया है, उनके जीवन से हम कुछ सीखें, समझें, उनके तजुर्बे, उनके अनुभव को यहाँ वो साझा कर रहे हैं. और अब मैं आगे बुलाना चाहूँगी एक ऐसे नेता को जिसको हम सब बहुत सुनना चाहते हैं. हमारे स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर लोपसांग सांगे, फॉर्मर प्रेसिडेंट सेंट्रल टिबेटन एडमिनिस्ट्रेशन, फर्स्ट सेक्योंग ऑफ द सेंट्रल टिबेटन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि प्रधानमंत्री रहे हैं. और लोपसांग सांगे के बारे में मैं आपको बता दूं कि वो बहुत ही एक प्रोमिनेंट शख्सियत रहे हैं टिबेटन कम्युनिटी में. लोपसांग सांगे हैज़ बीन अ वेरी प्रोमिनेंट फिगर इन द टिबेटन कम्युनिटी. ही इज़ एन accomplished scholar, is an activist and politician. And as the president of the Central Tibetan Administration, he has played a pivotal role in advocating for the rights and freedom of the Tibetans. With a remarkable background and dedication to the cause, Sange's journey is one that inspires and captivates, making him an influential voice in the global arena. Dr. Lobsang Sange, हम सुनना चाहेंगे आपके अनुभव, आपके तजुर्बे और आपका पूरा राजनीतिक सफर. स्वागत है आपका. Thank you.
Honorable Venkata Naidu ji, Sumitra Mahajan ji, Honorable Meera Kumar ji, Shivraj Patil ji, Honorable Speakers, Honorable MLAs and MLCs from all over India. Yesterday I was a chief guest in a panel, and many of the MLAs and MLCs were complaining that we must have a session of at least 45 days or 60 days so that MLAs and MLCs could participate and make executive accountable. By today's morning presence, yesterday was Friday night, today is Saturday morning, your presence, your attendance shows that even if you're given 90 days or 120 days session a year, you will have full attendance. I hope the speakers will notice, and local assembly will have 60 to 90 day sessions a year. I am a Tibetan. Presently, I'm a senior fellow and lecturer at Harvard Law School. But as introduced, I'm a Tibetan. And I have worked with His Holiness the Dalai Lama for 10 years as the Prime Minister of Government Exile. As you know, His Holiness Dalai Lama says he is a son of India because he spent most of his life in India. But as a Tibetan, we also say I'm from a land of Shiv Bhagwan and Mansarovar too. So we are refugee here, but I think Shiv Bhagwan and Mansarovar is in Tibet. So on behalf of all the Tibetans, I want to extend my greeting, and also would like to congratulate Rahul Karat and Vishwanath Karat ji for hosting this event, an unprecedented, historic event, where when we met a year ago, I never thought that such a gathering would be possible. But this is a very, very successful event, and I want to congratulate MIT, all the staff members and volunteers for making this event a grand success. Also, Vishwanath ji as a teacher, he is, I think, always testing me. This morning I found out that my name is among the speakers. Thoda heran ho gaya. So I hope I'll pass the test this morning. The agenda or the issues yesterday Honorable Meera Kumar ji mentioned, which is also listed in the programs, are casteism, criminalization, communalism, corruption, colonial mindset, and climate change. 6 C's ko kaise challenge kare? How do we confront this? To challenge this or confront these 6 C's, I would propose 3 K's: karma, karuna, and karam. If you think this is your karma to be MLA and MLCs, if you have karuna in your heart, आपका कर्म, आपका कर्तव्य, आपका काम क्या होगा? जनता का सेवा. Because the priorities are wrong. Why we have all these problems? Number one, people elect you, but once elected, people started thinking about individual, my own interests, or my faction's interests, group interests, party's interests. Nation interests come later, and people's interests come last. If you think, if you have karuna in your heart, if you have compassion in your heart, first you will think of people who elected you. Then you will think of nation. Then only think of your party. Then think of your group. Then your individual interests. So, to be a leader, you all must think it's your good karma. I was in the session yesterday, some MLAs and MLCs were complaining, हम तो छोटा MLA है, हम minister नहीं है, हम कुछ कर नहीं सकते, हम तो opposition में है. I have been to 30 so countries. I have met member of parliament from Australia, Sweden, Norway, America, Canada. सब वही कहते हैं. I'm just a member of parliament. हम मंत्री नहीं है. When you go to, and then you go to, you say, I'm not in the ruling party, I'm in the opposition. But when you go to the ruling party MP, he will say, no, I'm not in the foreign relations committee. When you meet the MP of the foreign relations committee, he will say, I'm not an MP, I'm not a chairman of the committee. When you go to meet the chairman, I say, I'm not the foreign minister. When you go to meet the foreign minister, they will say, I'm not the prime minister or president. Everybody thinks I'm lower than you are. Actually, आप लोग MLA, MLC है, आप लोग तो लाखों में से एक है. लाखों people elect you. आपका कर्मा है. This is very fortunate.
आप तो भारत में हम लोग कहते हैं वी हैव 3 करोड़ भगवान, एमएलए एमएलसी तो सिर्फ 4000 है, आप तो भगवान से भी कीमती है। तो हमें सोच बदलना चाहिए, क्योंकि गांधी जी ने कहा है आप जो सोचते हो कहेंगे, वो कहेंगे करेंगे, ये आपका हैबिट हो जाएंगे, कैरेक्टर हो जाएंगे, वो डेस्टिनी हो जाएंगे। जो वो सोचते हैं आप बन जाते हैं। आप सोचते हैं हम एमएलए कुछ भी नहीं है, आप कुछ भी नहीं होंगे। हम सोचते हैं कि एमएलए है, भगवान से भी मैं कम हूं, ये तो मेरा करिश्मा है, लाखों में से एक हूं। तो सोचने से आपका कहना भी होगा, करना भी हुई होता है। ये कॉलोनियल माइंडसेट हो गया। One thing is to get rid of colonial mindset. Why do we have to talk of colonialism now? Britain colonized India. The present Prime Minister of Britain is an Indian guy. है कि नहीं? सबसे ताकतवर देश, most powerful country in the world is America. Vice President of America is an Indian woman. Still we talk of colonial mindset. हमें कब्जा किया, ये किया, वो ताकतवर है। हमारे लोग फॉर्च्यून 500 कंपनीज का कितने सीईओस, कितने प्रेसिडेंट कौन है? इंडियंस है। यहां पे कहते हैं हम लोग कुछ नहीं है, कॉलोनियल माइंडसेट है। तो आप कर्मा है, करुणा होना चाहिए और आपका काम और कर्तव्य निकल जाएंगे। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल कास्टिज्म बहुत प्रॉब्लम है। कल विश्वनाथ कारक जी कहा साइंटिफिकली इज प्रूवन, हमारा ब्लड टेस्ट कर चुका है, ऑल आवर ब्लड बीइंग टेस्टेड, 99.9% ऑफ आवर ब्लड इज एग्जैक्टली सेम। अपर कास्ट हो, लोअर कास्ट हो, अमेरिकन हो, यूरोपियन हो, एशियन हो, जो भी हो, ब्लड 99.9% ऑफ ऑल आवर ब्लड इज सेम। हमारा ब्रेन सेम है, हमारा ऑर्गन सेम है। वेयर इज द डिफरेंस? और करप्शन क्यों आता है? बिकॉज यू थिंक ऑफ योर इंटरेस्ट फर्स्ट, योर फैमिलीज इंटरेस्ट फर्स्ट, देन योर ग्रुप्स इंटरेस्ट फर्स्ट, और पार्टी का इंटरेस्ट, क्योंकि इलेक्शन जीतना है उसमें पैसा चाहिए। दैट्स हाउ इट कम्स। पर आपके दिल में करुणा है, सोचते कि जनता के लिए सेवा करने के लिए इलेक्ट हुआ है, तो जनता विल बी फर्स्ट, कंट्री विल बी सेकंड। सो इफ यू चेंज योर माइंडसेट, you are very powerful people. You can change the nation. Now, colonial climate change, it's a problem for the whole world. By 2030, in 7 years' time, food, energy, and water will be less than what is being produced now, what is being available now. 2030 is the turning point. पानी कम, खाना कम, एनर्जी कम, सारे देश में। अभी next year, more people in the world, half the countries in the world will have lack of drinking fresh water. Half the countries in the world, अगले साल से कम होने वाला। अभी there are so many villages around the world where they don't have drinking water on a daily basis. So climate change is real. We are confronted with that. So unless we all come together, unite, and fight this climate change, we are not going to make changes in the whole world. I would like to conclude by saying, because the morale of the elected members are so low, ये सिर्फ इंडिया नहीं है. If you look at the polls in America, the poll of American Congress is around 30-some%. जनता का विश्वास नहीं है. यूरोप में भी विश्वास नहीं है. Almost all the countries, maybe bearing some exceptions, most of the parliaments have the trust and the confidence of the people for less than 50%. इसलिए in the whole world, since 2020, since the year 2000, more countries are becoming non-democratic. If you have studied the Freedom House Index, more countries are becoming non-democratic, more autocratic. तो सोचने लगता है democracy is not working. ये लोग बात ही करते, कुछ काम ही नहीं करते. So let's go for populism. Let's go for authoritarianism. इसलिए authoritarian leaders are increasing every year. तो सोचते एक स्ट्रॉन्ग मैन आ जाए तो सब प्रॉब्लम खत्म कर देंगे. नहीं. यूक्रेन का वॉर इसलिए हुआ, पहले अथॉरिटेरियन आया और इन्वेड कर दिया, ग्लोबल डिजास्टर हो गया. सो अथॉरिटेरियनिज्म is a threat to democracy.
So we all need to have a mindset and confidence that democracy is the best available system we have. We all must unite, work together for the poor, for sick, for old people, and for climate change, and beat authoritarian system. India's model is development with democracy. China's model is development without democracy. Unka model देखने बहुत है. There are many countries they're saying we will take development without democracy. But we must prove, हमारा भारत महान है तो we must prove development with democracy. जो हमारे पास है वो सफलता होंगे. And by 2047, that model should prevail around the world. Thank you very much. Jai Bharat, Jai Tibet, Jai Jagat. Thank you so much. That was so beautifully put. और आपके लिए एक मंत्र हम सब के लिए, कर्म, करुणा और काम, इसको हम याद रखेंगे. And like very rightly you said, development with democracy, that should be the focus. And this is why we are all here together to strengthen democracy. That's what this platform is trying to do. इसके आगे मैं invite करना चाहूँगी, आमंत्रित करना चाहूँगी हमारी अगली special guest of honor, श्रीमती बृंदा करात. श्रीमती बृंदा करात सामाजिक कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेता, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के वरिष्ठ नेता, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा, और पूरी राजनीतिक जीवन का इनका बहुत ही एक बड़ा अनुभव है. जब भी कोई अहम मुद्दा होता है, जब भी कोई ऐसा मुद्दा होता है जहां पर एक मजबूत आवाज़ चाहिए, तो बृंदा करात जी को हमने हमेशा हमेशा सुना है सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी आवाज़ उठाते हुए. एक बहुत ही जानी मानी सोशल एक्टिविस्ट बृंदा करात जी, आपके राजनीतिक अनुभव को जानना सुनना चाहेंगे, आपके विचारों को. यहाँ मौजूद सब लोग, स्वागत है आपका. थैंक यू वेरी मच इंडीड. मंच पर उपस्थित हमारे आदरणीय वेंकैया नायडू गारू जी, हमारी प्रिय ताई सुमित्रा महाजन जी, हमारी प्रिय बहन डॉक्टर मीरा कुमार जी, मंच पर उपस्थित तमाम नेतागण और इस ऐतिहासिक नेशनल लेजिस्लेटिव काउंसिल के देश के कोने कोने से उपस्थित चुने हुए हमारे नुमाइंदे, जनवादी प्रणाली के प्रतीक हैं आप सब. आप सबको मेरे तरफ से नमस्कार, प्रणाम और सलाम करती हूँ. मैं प्रथम ही विश्वनाथ कारत जी और राहुल कारत जी को बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई, इतना रिस्क लिया कि जिस समय हमारे पॉलिटिक्स में इतनी तीखापन आ गया है, लेकिन इन्होंने रिस्क लेकर ये तय किया, ऑल फॉर इंडिया, टुगेदर फॉर इंडिया, भारत के लिए हम सब एक हैं. ये थीम को लेकर हमारे देश के तमाम राजनीतिक दलों के चुने हुए प्रतिनिधियों को उन्होंने आमंत्रित करके मंच उपस्थित की कि हम अपने बात कह सकते हैं कि क्या जब हम 2047 के भारत का जब हम कल्पना करते हैं, तो क्या हमारे बीच में बांधने वाले कौन से वो मुद्दे हो सकते हैं जो हम कह सकते हैं कि हम एक होकर एक मजबूत और एक संवेदनशील भारत को हम बनाने में सफल होंगे. तो मैं आपको बधाई देती हूँ राहुल जी, आपका पूरा जो कंसेप्चुलाइजेशन है वो वाकई में बहुत ही है. इनफैक्ट आपकी इजाज़त से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप आइए मंच पर और लोगों को आपका स्वागत करने के लिए आप मौका दीजिए. आइए राहुल जी, ताकि सभी जो यहाँ है वो आपको बधाई दे सकते हैं. यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब एंड योर कॉन्सेप्ट एंड कंसेप्चुअलाइजेशन हैज़ बीन वेरी इंस्पायरिंग. मैंने देखा यहाँ कल भी और आज भी कि हमारे महिला MLAs आए हैं, MPs आए हैं. अभी भी हमारे देश में जब हम 2047 के बाद सोचते हैं, पार्लियामेंट का बहुत सुंदर बिल्डिंग बन गया है,
मैं उम्मीद करती हूँ कि आज जो हालात हैं हमारे महिलाओं की प्रतिनिधित्व के, एवरेज अगर हम हिंदुस्तान के लिए तो वी आर अराउंड 7% एवरेज हमारे पूरे देश में। और हमारे यहाँ जो महिलाएं आए हैं वो सब जानते हैं कि एक एक इंच के लिए उनको कितनी संघर्ष और कुर्बानी देनी पड़ती है हमारे इस पुरुष प्रधान समाज में। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबकी मदद से 2047 के भारत में कम से कम 50% हमारी महिलाएं प्रतिनिधित्व वहाँ होंगे उस पार्लियामेंट में। मैं ये ज़रूर आशा करती हूँ आप सबकी मदद से। हमारे देश का एक परंपरा है कि पुरुष महिलाएं एक होकर हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए लड़े हैं और एक होकर हमारे संविधान का तमाम इक्वालिटी की प्रावधान एक होकर किए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने असेंबलीज़ में और पार्लियामेंट में विमेंस रिजर्वेशन बिल को पारित करके आप मदद करेंगे कि 2047 में एक समृद्ध और श्रेष्ठ भारत में महिलाएं भी श्रेष्ठ जगह पाएंगे, ये मैं उम्मीद करती हूँ। आज जब हम बैठे हैं मैंने देखा नॉर्थ ईस्ट से हमारे बहुत सारे साथी आए हैं। आज उन सब के मन भारी है क्योंकि आज हमारे देश के कोना मणिपुर में एक बहुत संवेदनशील, मैं शब्द इस्तेमाल करूंगी, स्थिति बनी हुई है। जब हम 2047 के भारत का कल्पना करते, आपकी बहस में भी और कल जो जिस पैनल में मैं थी ये भी एक मुद्दा उठा था कि हमारे मजबूती भारत की यूनिटी इन डाइवर्सिटी है और नॉर्थ ईस्ट हमारे देश की एक ऐसा हिस्सा है जहाँ ये कॉन्सेप्ट जो दुनिया को हमने दिया यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वो कॉन्सेप्ट नॉर्थ ईस्ट में जिंदा है। हमारी पहचान, हमारी आइडेंटिटी, हर ट्राइबल ग्रुप की, हर कम्युनिटी की आइडेंटिटी का एक महत्व है। लेकिन आज किसी प्रकार की उस आइडेंटिटी को अगर हम लोग एक पॉलिटिकल मैनिपुलेशन का टूल बनाएं, वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को मैनिपुलेट किया जाता है कोई पॉलिटिकल गेन के लिए, और उस पहचान की जो अधिकार है वो बुलडोज किया जाए, तो ये एक सबक है हमारे लिए। 2047 के भारत में ये मानती हूँ आप सबकी ये राय होगी कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और नॉर्थ ईस्ट की भाइयों बहनों को मैं बधाई देती हूँ कि आप हिंदुस्तान की उस कोने में इस प्रिंसिपल की आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मणिपुर की जो आज स्थिति है वो बहुत जल्दी शांति की स्थिति वहाँ बनेगी, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल है हमारा, उसको हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। मेरे प्रिय साथियों, हमने ये सोचा और आप लोगों ने मंथन की 2 दिन कि वो कौन से तरीका होंगे जिसके आधार पर हम लोग कह सकते हैं वी आर ऑल टुगेदर फॉर भारत। व्हाट इज दैट? व्हाट इज दैट कड़ी? वो कड़ी कौन सी है? मेरी समझ में हमारे आज़ादी की संघर्ष हमें वो जवाब देता है। आज़ादी के संघर्ष के बाद उस आज़ादी के संघर्ष की वसूल सिद्धांत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने रेखांकित किया, और वो कॉन्स्टिट्यूशन आज अगर हम देखें बहुत कमियां हो सकती हैं उसमें। मैं मानती हूँ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की जो ऐसे बहुत धाराएं हैं जो डायरेक्टिव ही रह गए, अमल में नहीं आए। फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक इक्वालिटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, मैं उसमें नहीं जा रही हूँ आज, लेकिन मैं जो कहना चाहती हूँ कि अगर भारत टुगेदर, वी आर ऑल टुगेदर फॉर इंडिया, द वन document, the one spirit, the one binding factor for each and every Indian citizen is Dr. Baba Saheb Ambedkar's Constitution of India. और उस कॉन्स्टिट्यूशन के जो अलग खंबे हैं, आज में इतना समय नहीं है कि हम उसकी डिटेल में जाए, लेकिन मैं 4 बात कहूंगी। सेक्युलरिज्म,
सेक्युलरिज्म का मतलब इस शब्द में है, हम भारत के लोग, हमारे संविधान का प्रियम्बल कहता है हम भारत के लोग, हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, हम सब भारत के लोग हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है हम भारत के लोग, नॉट हम भारत के हिंदू, हम भारत के इस धर्म या उस धर्म। तो सेक्युलरिज्म का मतलब है अगर कोई निर्दोष को धर्म के नाम पर लिंचिंग होता है, मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, ये कोई कम्युनिटी का लिंचिंग नहीं है। अगर संविधान हमें बांधता है, मैं कहती हूँ वो हर लिंचिंग संविधान का सिंबॉलिक लिंचिंग है। ये भावना को लेकर अगर हम चलेंगे, 2047 का भारत एक ऐसे भारत होगा जो कभी किसी के सामने झुकेगा नहीं। दूसरी बात है जनवाद की। हमारे विभिन्न डिफरेंसेस है, मैं मानती हूँ, हो सकता है मैं कम्युनिस्ट हूँ, हो सकता है आप सब मेरी विचारधारा को बिल्कुल गलत मानते हैं। हमारी संविधान मुझे अधिकार देता है, लेकिन आज किसी प्रकार की अगर जनवादी प्रणाली में कानूनों को इस्तेमाल करके हम लोगों को बंद कर लेंगे जेल में, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं संविधान की बात कर रही हूँ। जनवाद और जनवादी प्रणाली हमारे देश की बुनियाद है। पृथ्वीराज चौहान जी ने बहुत सारे बताए हैं, आप लेजिस्लेटर्स हैं, आप जानते हैं आज क्या कॉर्पोरेट का पैसा कैसे हमारे चुनाव की मैदान को प्रदूषित कर रहा है। मैं ऐसी पार्टी में हूँ जहाँ मजदूर किसानों की पार्टी है। मैं आपको बता रही हूँ आज चुनाव लड़ना हमारे लिए कितना मुश्किल है, कितना करोड़ों रुपया खर्च करना आप जानते हैं। आप लड़ते हैं, आप संघर्ष करते हैं, तो ये हमें इलेक्टरल रिफॉर्म के रूप में देखना पड़ेगा। जनवाद पैसा के साथ नहीं जुड़ना चाहिए। ये सिर्फ मैं कहती हूँ आने वाले दिनों में 2047 का जनवाद जो भारत का होगा, लेट इट नॉट बी लिंक्ड टू मनी एंड मनी पावर, ये मैं ज़रूर कहूँगी। तीसरी बात सोशल जस्टिस, महिलाओं के बारे में मैंने कहा, मैं दलितों की बात करती हूँ। ये क्यों है आज भी हमारे देश में? संविधान बिल्कुल स्पष्ट है, क्यों है आज भी एक दलित घोड़ी पर नहीं चल सकता है, शादी के लिए उसको उतारा जाएगा क्योंकि वो दलित है। मैं जानती हूँ बहुत हम लोग आगे बढ़े हैं, मनुवाद के विचार में हमारे संविधान ने कोई स्थान नहीं दिया है, लेकिन मेरे प्रिय साथियों मैं कहती हूँ अ मदर ऑफ डेमोक्रेसी कैन नॉट कोइंसाइड विथ और कोएग्जिस्ट विथ अ कास्ट सिस्टम। तो मैं ये कहूँगी कि दलितों के जो संघर्ष है और दलितों की जो अधिकार है वो मैं कहूँगी वो ज़रूर उसमें रहना चाहिए। और आखिर मैं बात कहूँगी कि जो हमारे जो मुख्य सवाल है जस्टिस की, इकोनॉमिक जस्टिस की, हम एक ऐसे 2047 का देश चाहेंगे मेरे प्रिय साथियों, उस देश में बराबरी हो, मजदूर किसान जो धन तैयार करता है वो धन मजदूर किसानों के हाथों में हो। ये भी मैं अपील करूंगी कि एक साथ मिलकर हम लोग उस प्रकार की एक भारत बनाएं जो सबके लिए बराबर का अधिकार होगा। आप क्षमा कहेंगे कि अगर मेरे शब्दों ने किसी को डिस्टर्ब किया है, मैं संविधान की बात कह रही थी। मैं समझती हूँ हम लोग सब संविधान के प्रति खड़े होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी, फिर मैं आपको शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू। Thank you very much, madam. Thank you very much for your thoughts, and thank you very much for sharing your wisdom with everyone in the audience. My friends, the platform of National Legislators Conference has truly, or rather it's truly becoming international, and many tall personalities from all across the globe are willing to join the platform of National Legislators Conference. Right now, we have with us a video message of the Honourable Prime Minister of Ireland, Dr. Leo Varadkar. Dr. Leo Varadkar is an influential Irish politician with a medical background. He brought
a unique perspective to politics, spearheading healthcare reforms. Known for his progressive stance, Mr. Leo played a crucial role in addressing social issues and promoting economic growth. It is indeed our honor that he had shared his message with the National Legislators Conference. I request my technical team to kindly relay the video message. Namaskar. I'm Leo Varadkar, Prime Minister or Taoiseach of Ireland. Mr. Vice President, distinguished guests, colleagues and friends, it's an honour and a privilege to have the opportunity to speak to you today. As a legislator for many years, since 2007, in government and in opposition, I recognise the value of sharing best legislative practices, of considering always how to strengthen our parliaments and democracies, and to foster international collaboration. These themes of your conference are vital strands of the work to enhance the effectiveness of all democratic legislatures. While business and society contribute to the design and implementation of policy, we as legislators are charged by the people with shaping the statutory landscape. Good legislation can enable real changes for the betterment of our society, and bad legislation can do the reverse. I am pleased to join you today, as I know that the National Legislators Conference, Bharat, will facilitate valuable connections between state legislators, and that cooperation, transparency and participation will serve to underpin democratic values and economic and social progress. This year in Ireland, we mark the 50th anniversary of Ireland joining the European Union. And far from diminishing the sovereignty of the Irish people, our European Union membership has strengthened it. Few events in our history have been so advantageous. Close cooperation with our European partners, including the development of EU laws and regulation, has become a defining feature of Ireland's emergence as a modern, open society and economy, with generations enjoying prosperity and opportunities on a scale unimaginable just 50 years ago. I'm very hopeful of progress on the EU-India Free Trade Agreement, which will bring significant opportunities for India as well as for Europe, enabling a mutually beneficial trading relationship with India's third largest trading partner. The achievement of an ambitious, comprehensive agreement will require realism and compromise on both sides. I am confident that the will for success exists. An agreement will assist us in working on a successful green transition, a matter of vital importance to India, to Europe and the world. Many global partners have been impressed by India's work in developing renewable energy sources and your attention to environmental issues. We can achieve even more together. The digital transformation of government and economic life is necessary in all of our countries. Extensive work and research in this area is taking place in Ireland, and India's leadership in this field can bring so much to the rest of the world. Although we are geographically remote from each other and differ vastly in size, India and Ireland have much in common. We've experienced colonisation, and we've struggled for political independence and economic sovereignty. We inspired each other, both becoming republics around the same time. We fly flags with common colours, and today we face the challenges of the world as ancient nations, but young states. As a son of a man from Maharashtra, with so many of my family living and working in Mumbai, I'm proud of my Indian and Irish heritage, and proud to lead a modern, democratic, prosperous and inclusive nation that Ireland is today. Indians living in Ireland now represent more than 1% of our population of 5 million people. They make a significant contribution to Irish academic, economic and cultural life, working in areas like healthcare, tech and business. There are also very many Indian students in Ireland, and we're grateful for their presence and contribution. Of course, there are millions of people of Irish descent found in other countries. India too has seen many of your citizens leave to live and settle overseas. Our diaspora communities are a source of connection, influence, investment and inspiration, their achievements and accomplishments. Before I conclude, let me pay tribute to India on your very successful G20 presidency. India showed tremendous leadership in challenging circumstances, working flexibly to build consensus and strengthen ties among diverse partners. Thank you so much for inviting me to speak to you.
I wish you every success and look forward to hearing about the outcome of your conference. Dhanyavad. Dhanyavad. बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you so much. That was a video address by Dr. Leo Varadkar, Honorable Prime Minister of Ireland. And now I would like to request and call upon Shri M. Venkaiah Naidu, former Vice President of India, भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू, who served as the 13th Vice President of India from 2017 to 2022. He is the first Indian Vice President born in independent India. Very warm welcome to you, sir. बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन अब तमाम लोगों का. छात्र राजनीति से लेकर आज तक आप बहुत सक्रिय रहे और बहुत ही अच्छे वक्ता हैं. जोरदार स्वागत. धन्यवाद. सबको मेरा नमस्कार. पूर्व लोकसभा सभापति श्रीमती सुमित्रा महाजन जी, डॉक्टर मीरा कुमार जी और संसद में मेरा साथी थे कम्युनिस्ट पार्टी का मार्क्सिस्ट का नेता श्रीमती बुंदा करत जी और लोपसंग संगाई जी फ्रॉम टिबेट, श्री सीपी जोशी जी, श्री गुलजार सिंह संधवान जी, श्री गोयल जी, श्री अशोक गहलोत जी जिन्होंने वर्चुअली हम सब लोगों को संबोधित किया है, और श्री पृथ्वीराज चौहान जी, और देश भर से अलग अलग प्रदेशों से आए हुए प्रतिनिधि बंधु साथियों. I know that there are people who understand Hindi but who also understand English. So I try to mix to the extent possible. I feel honored to be admitted to you all on this momentous occasion. First of all, सबसे पहले मैं राहुल करात को ये ऐतिहासिक ऐसा एक सम्मेलन बुलाने के लिए मैं हमारा सबके ओर से उनको अभिनंदन करना चाहता हूँ. I would like to compliment Sri Rahul Karat for this courageous, innovative, constructive move to have this conference of legislators of India, bring them on one platform, discuss issues of larger concern of the people of the states and the country. It's a gigantic task, but I can tell you, he has done it with precision. And that was possible because he had a vision and the blessings of his father, Professor Viswanath Karaj. Friends, this is something unique. I can only say, describe it as unique, that this legislators conference being held. I hope that it will become either annual event in different parts of the country. I don't want to touch other issues. I am not in party. I am not in politics. I have retired from all. I have retired but not tired. Still I am going around and meeting people, greeting people, talking with people, walking with the people, spending time with the people, eating with the people and sleeping with the people. That is my favorite pastime, sleeping in the village, sleeping in Tahsil. That's how I could come to this stage. You are all, most of you are all youngsters. I have certain few points for you. Number one must have an aim and work hard. One must be disciplined. Discipline is the key for success. Be disciplined. Have time sense. 10 o'clock means 10 o'clock. Whether others come or not, you have to be there at 10 o'clock. You should be punctual. I remember when I entered assembly, my guru, late Tenet Viswanathan, told me, go to the session from the beginning to the end, sit there and hear others. You will gain knowledge. So I used to go at 8 o'clock and sit up to 1 o'clock in the house. That's how I gained the experience. Same is the case in Parliament also. I was member of Parliament. I was also Minister for Parliamentary Affairs and Minister for so many other departments before becoming Vice President. There also same thing. Going on time, hearing others, knowing things, that will make you
really successful. My dear friends, working hard has no other alternative, because we have been given a task and there are so many challenges and problems before all of us. So we have to understand the problems of the people and work for their solution. Our founding fathers, who were visionary leaders of our freedom movement, were conscious of the fact that they were writing a corrective future of the nation on behalf of the people at large while drafting the visionary document which is our Constitution. Therefore, adhere to the ideas laid down by our constitutional framers. It should be our collective responsibility. This is my another advice. And remember that we are the largest democracy and we are the most vibrant democracy. We should all work hard to see that this vibrancy is kept on. That is possible when all of us are committed to the ideals that have been enshrined in the Constitution. My dear sisters and brothers and youngsters, democracy provides the foundation of our society. Needless to add, it is the cornerstone of our democratic way of life. So democracy, democracy, democracy should be our collective endeavor. We have traveled a long way. We are going to complete 75 years and we are going to celebrate Azadi Ka Amrit Kal. We have so many achievements to our credit. Undoubtedly, India is now being recognized and respected worldwide. And India is now 5th largest economy. If we all work together, I am sure we will become 3rd largest economy in the world and outnumber the so-called developed countries also. But we also have some challenges. I want to underline, 20% of our people are living in below poverty line. 20%. That means 1/5. Second challenge is that nearly 18% of the people are illiterates. They don't know how to write and read. The third challenge is that we don't have gender equity in public life. Vrindaji was mentioning about representation in parliament and legislature, even in every sphere of activity. They constitute 50% of the population. We must give them respect, we must give them recognition, and we must give them representation. This should be kept in our mind. This is another challenge. We also have other challenge in the society of social discrimination here and there. Basing on the basis of the caste, people are being denied the equal opportunity, discriminated. So these discriminations should end. That should be our endeavor, all of us. For that, the democracy to succeed I have 4 lines. 1, you must select and elect leaders with character, caliber, capacity and conduct. Leaders with character, caliber, capacity and conduct. 4 C's. But some of our very intelligent politicians, they have replaced these 4 C's by another 4 C's. Instead of character, caliber, capacity and conduct, caste, community, criminality and cash are being replaced in certain places. But we should not allow them to succeed. We should go on the basis of the character, caliber, capacity and conduct. And then coming to legislature, we call it as the temple of democracy. And these legislatures must be vibrant. For that, you people who are all members in different legislative assemblies and members of parliament belonging to different political parties, they should all adhere to discipline in the house, dedication, devotion. If you have all these 3 Ds, then democracy will succeed. We go to parliament, we don't allow the parliament to function, then democracy will not succeed. So my suggestion is debate, discuss and decide, but not disrupt. Sometimes it happens. I do have experience, both opposition and government side and also as the chair of the session. Sometimes it happens, but it should not be a regular feature. And then, after disruption, once the House resumes
You must discuss, decide. What is the way? People ask, sir, do you mean to say then there should not be any opposition? I say there should be opposition. There should be a strong opposition. There should be a viable opposition. But oppose. I have a 3-line advice. Let the government propose, let the opposition oppose, let the House dispose. That is my solution to this problem. सरकार को अपना जो भी करना चाहिए उसको सदन के सामने लाना, विपक्ष को विरोध करना है तो विरोध करना, फिर अंत में जो सदन का फाइनल फैसला है तो सबको हम लोग को स्वीकार करना पड़ेगा. There is no other way. There is no shortcut. So discuss, debate and decide. Do not disrupt. Let the government propose, opposition oppose, and let the dispose. That is the way out, and every one of us should be committed to that. We have constitution, a wonderful constitution. The executive, the legislature, and the judiciary, they have the roles of all these have been defined. None of them should feel that they are the supreme and overstep their limits. This is happening at times. I don't want to name any particular organ. The legislature has its own importance. The executive has its own importance. And the judiciary has got its own importance. But at the same time, everybody's roles have been defined. They must adhere to that. Legislative power is solely given to the legislative bodies. Whether legislation is in accordance with the constitutional provision or not, let the courts go through it. But court cannot make a legislation. Judiciary cannot make a legislation. This has to be remembered in mind. The legislature decides and the executive implements. And finally, if anybody violates the provisions, one can go to court and judiciary must be dynamic and they must dispose of at the earliest. And then about anti-defection. Now people are saying if you defect singularly, then you are disqualified. If you defect in a group, this is not defection, it's only affection, and they are doing it with perfection. That is not the purpose of anti-defection law. Anti-defection law का ये उद्देश्य नहीं है. जो भी व्यक्ति who are elected on a ticket of a particular party, you want to leave that party, sometimes it becomes inevitable because of the leader's behavior, because of the deviation of the principles, or whatever it is. If you want to leave the party, you must resign and join the party of your choice. This way, the anti-defection law has to be revisited and discussed and then decide. But then the question arises, sir, if the leader becomes authoritarian, what is the way? The way is remove the leader. By majority, if you have majority in that. This provision originally thought of was a good provision, 1/3. But we must now revisit that also and think seriously what can be the alternative. This is another thing for your consideration. My dear friends, we must remember the accountability factor. The accountability is lacking in many areas. The accountability of a government, the account of the public representatives is one of the key facets of our democratic system. We go to the people once in 5 years and take their approval. But by that time, a lot of time is consumed. Keeping that in mind, we must keep in touch with the people. Always. Always one must be either in parliament, either he must be in this house, or he must be in our constituency. If you want to become a successful MLA, MP, the simple thing is be either in our constituency, be in legislative body. Nothing else, because you are elected. And then coming to the overall interest of democracy, what I am saying is that we must all commit ourselves to the proper functioning of the system. No one should cross their limits, and legislators
members of assembly and council and all parliamentarians, they must all adhere to the rules and regulations of the parliament. Otherwise, we will become a laughing stock. What is happening in certain parts of the country, देश के अलग अलग क्षेत्रों में जो हो रहा है, उसको देख के सुन के जनता निराश हो रही है. You must understand, people are getting disillusioned over the way some of the legislators are functioning, or legislatures are functioning. We must take note of the people's reaction and their disillusionment, and we must improve our functioning. For that, I suggest to political parties that political parties must evolve a code of conduct for their members. Going to the well, easily you can go to the well. Late Rajagopalachari said once, he said, if you are not well on the facts, go to the well of the house. If you are not well on the facts, then go to the well of the house. This is what he has said. An experienced person. What I am suggesting is, we must see to it that unruly scenes are avoided. Breaking the mics, tearing of the papers, tearing of other things in parliament or legislature, they are not good. Not only for the parliament and legislature, they are not good for the image of our party. And we call ourselves as a vibrant democracy. Vibrant democracy. Vibrancy in every sense. And what is the way of improving behavior of the parliament? Political parties also do have a responsibility, because we are in a party system. We are bound by the party whip. So political parties, it's high time they must sit together, discuss among themselves, and evolve a code of conduct for their representatives. This is an important thing. In this conference, I want to place before all of you, discuss it, and then see to it that this is done at the earliest. And we must also remember that we are not enemies. We are only rivals. We should understand we are only rivals, we are not enemies. This has to be kept in mind by every political party and every politician and every legislator. We must respect each other. We may disagree, we may oppose his views, but when we get an opportunity, we can counter him effectively, not physically, through our arguments, and democratically. This is another important thing. Otherwise, sometimes politics are going to such a level. In some states, politicians of this party do not talk to the other party. They don't even attend funerals also. They don't greet on birthday because of fear of the leader. That should not be there. After all, we are all elected by the people. We are all wedded to the welfare of the people. We are competing with each other with different ideologies. So keep that in mind and see to it that we treat our rivals with respect. And the language that is used in assembly and parliament must be dignified, because legislator is an ideal for the students, for the youngsters, for the people. If MLA behaves like that, MP behaves like that, or a minister even behaves like that, what is the message you are giving to the people? This has to be kept in mind, that you are a role model for others and you are setting bad examples. This is another thing I want to bring. My dear friends, as I told you that we are going to Amritkal period, what is our ultimate aim? We want to make India strong, stable, prosperous and progressive. सशक्त भारत बनाना चाहते हैं हम लोग, शक्तिशाली भारत बनाना चाहते हैं. We want to become a strong nation, stable nation, powerful nation. Powerful not to capture others. We don't believe in colonialism. We want to strengthen ourselves. Atma Nirbhara Bharat means self-respect and self-sufficient nation. For that we must all work hard. And we must see to it, ultimately the goal is not only to create wealth. Wealth must reach all people. It should penetrate below. And then everybody should be happy. Whether the government is good or not, you can have a happiness index.
Happiness, ultimate aim is happiness. This should be our ultimate aim, to make people happy. Not only comfortable, not only prosperous, but also happy thing. Happiness, for that adherence to law, adherence to rules, adherence to system, committing to the welfare of the downtrodden and poorer sections, taking everybody along with you, following democratic principles, respecting the Constitution, that is the ultimate happiness. Peaceful, that also is important. Peace is the prerequisite for progress. If you have tension, you cannot pay attention and have retention. You will be doing only pretension. Remember this. So peace is the prerequisite for progress. Tension should be avoided. Peace should be restored. And that is possible if everyone is wedded to democratic principles. At the end of the day, people's verdict, that is final. If the verdict goes against you, you have to work for 5 years and then wait for your chance. My dear friends, I can tell you, when I joined a particular party, now I don't belong to any party, people laughed at me and told me, why this will never come up in politics. ये तो उत्तर भारतीय पार्टी है, ये ब्राह्मण बनिया पार्टी है, ये शाकाहारी पार्टी है, ये शहरी लोगों का पार्टी है, ये कभी सत्ता में आएगा ऐसा बताया मुझे लोगों ने. फिर भी मैंने मेरे विश्वास के साथ मैंने उसी पार्टी को मैंने चुना और उसी पार्टी में काम करते रहा. बचपन से लेकर सुदूर दक्षिण प्रांत से आकर मैंने बचपन से लेकर जो आइडियालजी मैंने सोचा अच्छा है उसी आइडियालजी के लिए काम किया. कभी ना इधर ना उधर देखा नहीं, कोई पार्टी बदलने का सोच कभी भी आया नहीं. बचपन में दीवार के ऊपर लिखते थे हम लोग, दीवार के ऊपर, और माइक अनाउंसमेंट करते थे, श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारा शहर में आ रहे, शाम को आम सभा है, अब सब लोग पधारिए, इसको सफल बनाइए, ऐसा अनाउंस करते थे. मैं बचपन में ऐसा अनाउंस करने वाला लड़का अपना गांव में एक दिन उसी अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जी के बीच में बैठ के सत्तारूढ़ पार्टी का अध्यक्ष बने, ऐसे मैं कभी कल्पना भी किया नहीं. I never imagined, never expected it to happen, but work, determined, commit to an ideology, follow it. That is the success of my own story. MLA, 2 times MLA, 4 times MP, central minister, this department, that department, many departments, and then Vice President of India. All these things came because of the commitment, because of the hard work, because of discipline, because of the dedication, because of not looking this side and that side, moving straight forward. Neither left nor right, but straight. That should be our approach. So my dear friends, I don't want to take much of your time. Once again, I request all of you, follow the Constitution, remember the democratic principles, attend the House regularly, allow it to function, have your say, and pay respect to others and hear what others are saying. And at the end of the day, we must all set good examples to become exemplary leaders in public life. Then only you are called as a leader. A leader must have discipline, dedication, and also determination. Then only he will be recognized as a leader. Leave your personal comforts, things of the people, and work for the people. Ultimately, you will become a people's leader. I wish you all the success. God bless you. Thank you very much. Namaskar. Nandri, Vanakkam. Jai Hind. Let's give a big round of applause, my friends, to Shri M. Venkaiah Naidu ji for such a beautiful message. Thank you, sir. Thank you very much. I would like to share with you, sir, when you were sharing your thoughts, Shri M. Venkaiah Naidu ji, it was literally so heartening, and literally I was getting the goosebumps when you said that he used to attend party meetings and when he was a young boy, and rising from there up to the tallest position in the country. I mean, something that is possible in our country, Bharat. It's really amazing thing. And even it was said that you are precious than gods because you are
भगवान तो करोड़ों में है लेकिन आप 4000 हैं, तो यू आर डेफिनेटली मोर प्रेशियस देन गॉड्स एंड यू विल डेफिनेटली ऑल कम टुगेदर फॉर स्ट्रेंथनिंग द डेमोक्रेसी. और अब वी हैव विद अस Sumitra Thai for a very, very special thing. We have received the message on behalf of for the National Legislators Conference from none other than the Honorable Prime Minister of our country. It calls for a big round of applause. And I now request Sumitra Thai to kindly read or convey his message to this entire gathering. प्रधानमंत्री का संदेश. मुंबई में प्रथम राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन के आयोजन के विषय में जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई है. इस कार्यक्रम में देश भर से हिस्सा ले रहे विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं. सुशासन, सफल विधायी अभ्यास और अभिनव विकास मॉडल जैसे विषयों को केंद्र में रखकर विभिन्न राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधि जिस तरह लोकतांत्रिक परंपराओं को मजबूती प्रदान करने हेतु चिंतन और संवाद के लिए एकजुट हुए हैं, यह अद्भुत है. आज़ादी के इस अमृत कालखंड में हमारे सामूहिक प्रयास ही भारत जैसे विशाल लोकतंत्र को विकास की अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर ले जाएंगे. जमीनी स्तर पर सतत विकास एक भव्य एवं विकसित भारत की संकल्पना को मजबूती प्रदान करता है. जनता में सहज और निरंतर संवाद और स्थानीय मुद्दों को मुखरता से उठाकर विकास की इस यात्रा में जनप्रतिनिधि महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. यह विधायक सम्मेलन देश भर से आए जनप्रतिनिधियों को एक दूसरे को जानने और उनकी कार्यशैली को समझने का एक उपयुक्त मंच प्रदान करेगा. मुझे विश्वास है कि परस्पर एक दूसरे के कार्य प्रणाली को सीखकर जनप्रतिनिधि विकास के एक बेहतर मॉडल को लेकर आगे बढ़ सकेंगे. देश में पहली बार हो रहे इस तरह के सम्मेलन के मेजबानी के लिए महाराष्ट्र के लोगों को विशेष रूप से बधाई. प्रगतिशील विचारों की इस धरती ने विभिन्न कालखंडों में अपने नेतृत्व से देश को दिशा प्रदान की है. मैं आशा करता हूँ कि विधायिका को मजबूती प्रदान करने की यह नई पहल एक स्वस्थ परंपरा के रूप में निरंतर आगे बढ़ती रहेगी. यह देखना सुखद है कि इस सम्मेलन के माध्यम से वरिष्ठ नेताओं का आशीर्वाद और मार्गदर्शन युवा विधायकों को मिल रहा है. अपने ज्ञान एवं अनुभव से लोकतांत्रिक परंपरा को आगे ले जाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे ऐसे सभी लोगों का विशेष रूप से आभार. आशा करता हूँ कि यह सम्मेलन विधायकों को राष्ट्रहित में अपने प्रयासों को गति देने के लिए नई ऊर्जा प्रदान करेगा. इस विश्वास के साथ सम्मेलन के लिए अनंत शुभकामनाएं. आपका नरेंद्र मोदी. बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुमित्रा ताई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश आप सब तक पहुंचाया उन्होंने.
जैसा प्रधानमंत्री ने कहा कि एक ऐसा मंच है जहां पर आप सब लोगों को एक दूसरे को जानने का बेहतरीन मौका मिला है, जहां आप एक दूसरे के कार्य से सीख रहे हैं। एक नई ऊर्जा के साथ हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि आप यहां से आगे जाएंगे और एक मौका है भारत जैसे लोकतंत्र को और भव्य ऊंचाई तक ले जाने का, जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा। अब मैं आमंत्रित करूंगी हमारी मार्गदर्शक, हमारी पेट्रन मीरा कुमार जी को कि वो यहाँ पर आएँ एक बार फिर से मंच पे और आप सब लोगों को संबोधित करें। हमारा ये सेशन, आज का ये सत्र टेल ऑफ द टॉल, इसके समापन का समय आया है अभी इस सत्र का, और मीरा कुमार जी से आग्रह है कि वो अपने शब्द आपके सामने पेश करें। नमस्कार। आदरणीय श्री शिवराज पाटिल जी, आदरणीय श्रीमती सुमित्रा महाजन जी, परम आदरणीय श्री वेंकैया नायडू जी, श्रीमती वृंदा करात जी, यहाँ पर श्री सुशील कुमार शिंदे जी बैठे हैं, को अभिवादन। श्री डॉक्टर लवसांगा सांगे जी, श्री विश्वनाथ करार जी, श्री राहुल करार जी, यहाँ पर उपस्थित सभी आदरणीय विभिन्न प्रदेशों से आए हुए स्पीकर और विधान परिषद के अध्यक्षगण यहाँ पर उपस्थित, और जो इस पूरे सभा कक्ष की गरिमा और शोभा को बढ़ा रहे हैं, द्विगुणित कर रहे हैं, सभी प्रांतों से आए हुए विधायकगण, विधायिकाएँ भी यहाँ पर उपस्थित हैं। सबका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, अभिवादन करती हूँ। और ये जो सत्र है ये अत्यंत महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही हमारे बीच में वरिष्ठ नेता बैठे हैं वेंकैया नायडू जी के रूप में। उन्होंने मार्गदर्शन दिया है और आप देख रहे हैं यहाँ वृंदा करात जी बैठी हैं, वर्षों का इनका अनुभव है। तो ये अभी सुमित्रा महाजन जी ने पढ़ा है प्रधानमंत्री का संदेश, और उसका जो प्रमुख तत्व है वो यही है कि ये हमारा जो लोकतंत्र है, हमारे इस लोकतंत्र की परंपरा को हम सामूहिक प्रयास से हम सब मिल करके आगे बढ़ाएं और इसको स्वस्थ बनाएं, मजबूती दें। यही उनके जो उनका शुभ संदेश था, उसका यह सारांश है। वेंकैया नायडू जी ने अत्यंत शक्तिशाली, उनका भाषण बहुत ही प्रभावपादक था और बहुत स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा कि अनुशासन अत्यंत आवश्यक है और समय की कीमत को, उसके मूल्य को हम समझें। बहुत आवश्यक है कि हम जिस मतदाता ने हमें जिस विचारधारा के आधार पर चुना है, उस मतदाता का सम्मान रखें। और अगर हम अपनी पार्टी को बदल रहे हैं तो हमें त्यागपत्र दे देना चाहिए। वैसे तो एंटी डिफेक्शन लॉ है, लेकिन ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उस मतदाता का सम्मान करते हुए त्यागपत्र दे दें। और उन्होंने वही बात जो
वृंदा कराज जी ने कही, वही बात वेंकैया नायडू जी ने भी कही, वही बात अशोक गहलोत जी ने भी कही, वही बात पृथ्वीराज चौहान जी ने भी कही। सभी ने यही कहा कि जो अंतिम सिरे पर खड़े हैं, जो उनको कैसे आगे बढ़ाएं, जो सबसे नीचे दबे हुए हैं, आज से नहीं, वो सदियों से जो सबसे नीचे दबे हुए हैं, जिनका तिरस्कार होता रहता है, कभी सम्मान नहीं होता है। इस जनतंत्र का कोई अर्थ नहीं है जब तक कि हम उन्हें ऊपर न उठाएं। तो ये एक सारांश है सभी के भाषणों का। और डॉक्टर लव सांगे जी ने जो कहा, तो हम तो तिब्बत को बहुत प्यार करते हैं, तिब्बत का बहुत सम्मान करते हैं, और तिब्बत के निवासियों से आज से नहीं, ये तो हमारा ऐतिहासिक संबंध है, परंपरागत संबंध है, और हम हमेशा उसका सम्मान करते रहेंगे, ये आश्वासन है। ये एक खासियत थी इस सत्र की कि आयरलैंड के प्रधानमंत्री ने इसे संबोधित किया, और हमारे भारतवर्ष की ये एक पुरानी विशेषता रही है कि हमने सिर्फ अपना नहीं सोचा, हमने पूरे विश्व का हमेशा सोचा है। वसुधैव कुटुंबकम का भाव लेकर हम हमेशा चले हैं। पूरी वसुधा को हम अपना परिवार मानते हैं, और जब पूरी वसुधा को अपना परिवार मानते हैं, जैसा कि प्रधानमंत्री आयरलैंड के बोले, वर्ल्ड पीस पर उन्होंने बहुत जोर दिया, तो वो और हम और देश और भी अन्य देश मिलकर के विश्व शांति के लिए प्रयास करें, और विश्व में कहीं पर कोई युद्ध ना हो, कहीं पर भी ज़रूरत न पड़े कि हम हथियार उठाएं। ऐसी बात उन्होंने कही, और ख़ास करके पर्यावरण को लेकर के, क्लाइमेट चेंज को लेकर के हम दोनों देश साथ आएँ। इस पर भी जोर दिया कि हम गरीबी का उन्मूलन कैसे करें, और हम जो बेरोज़गार हैं, जिनके हाथों को काम नहीं है, उनको काम कैसे दें। तो ये सब बातें उन्होंने कही। और फिर से मैं एक दफ़ा कहूँगी कि श्री पृथ्वीराज चौहान ने विशेष रूप से संविधान में क्या है उस पर जोर दिया, और संविधान की महत्ता तो हम सभी समझते हैं। संविधान की महत्ता केवल अक्षरों तक सीमित न रह जाए, संविधान की महत्ता केवल हम नए कानून बना रहे हैं उस पर ही जाकर रुक ना जाए। संविधान की महत्ता इसमें है कि जो गांव में रह रहे हैं, गरीब बस्तियों में रह रहे हैं, जो सबसे नीचे पायदान पर रह रहे हैं, जिनके पास तो कुछ भी नहीं है, उनके लिए संविधान क्या कर रहा है, ये सब बहुत आवश्यक है। और विशेष रूप से जो जनप्रतिनिधि हैं, जो चुन कर आए हुए हैं, हमारे जो इतने विशाल लोकतंत्र के जो स्तंभ हैं, वो संविधान को कैसे धरातल पर ले जा रहे हैं, उसके अक्षरों को, उसकी आत्मा को कैसे वहाँ पर वो कार्य रूप और साकार कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी चुनौती है। अभी आप लोगों का सत्र होने जा रहा है, कल 40 सत्र हुए, विभिन्न विषयों पर सत्र हुए, आज फिर सत्र होंगे, विभिन्न विषयों पर सत्र होंगे। आप सब यहाँ पर, ये अद्भुत है। और राहुल कराड़ ने ये किया है, मैं उनका बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इतने सारे विधायक, स्पीकर यहाँ पर इकट्ठे होकर के और अपने
दलों के सीमा से ऊपर उठ करके और विचार विमर्श कर रहे हैं और देश को कैसे आगे ले जाना है उस पर वो ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। ये अद्भुत है, अपने आप में अद्भुत है। कल ये हुआ, 40 विभिन्न सत्र हुए एक साथ और आज होंगे 40 विभिन्न सत्र एक साथ जहां आप बैठेंगे और आप ये इसका निष्कर्ष निकलेगा और इसका डॉक्यूमेंटेशन होगा और जो बहुत यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं वो इससे लाभान्वित होंगे। इस देश के विद्वान, इस देश के इतिहासकार, इस देश के राजनीतिज्ञ ही नहीं इससे लाभ उठाएंगे, पूरी दुनिया के विद्वान इससे लाभ उठाएंगे। यह ऐसा अद्भुत एक समागम है और मैं आप सबको अपनी शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Thank you very much. Yes, sir. May I request to switch on the mic of the other podium, please? Please switch on the mic on the other podium. Yeah, just a quick, I just felt like sharing one important communication with all of you, my dear friends, all the respected honorable ministers and the MLAs and MLCs of our country, the honorable dais sitting here. But last 2 days, very beautifully, the conduct we all have observed, and I know today evening many of you wish to go back to your respective places. Tomorrow, some few people are leaving. Today also some people are leaving. But patrons, particularly Sumitra ji and Meera ji, Shivraj Patil ji, yesterday night we were having a small interaction. That the same conduct till the today evening, we all continue with the same eager, same zeal and enthusiasm. And with that spirit, once again, behalf of the patrons and all of us, all the speakers who are the advisory board members, I wish to appeal all the members that today evening the valedictory program will be starting by 3:30, 3:45. So during that time, one very important announcement will be there. I am very happy to share with you that we wrote to all the chief ministers in the country that the next edition, after 18 months, which are those states will come forward. So I'm glad that already the 2 states have come forward. And today our chief minister, our deputy chief minister will be handing over the baton of this very historic National Legislators Conference to one of the chief ministers. I do not want to reveal it right now. The next state chief minister will be also here. And I'm very happy to tell you that among the speakers, they all have taken the efforts convincing their leadership in their respective states. So there is even the 3rd edition also is very much locked by one of the state, and these two states, particularly the first state chief minister will be here, and the 3rd edition of this particular National Legislator Conference. So this legacy goes on. So what I want to communicate to all of you, that this valedictory program, the same number and the overall participation is important, and I was getting some communications from some of the MLAs that they need to leave. But I think afternoon sessions are very, very important. The engagement was very beautiful last 2 days. So that is one announcement I feel like just expressing right now. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. Thank you very much, sir. And now to share an important message with all of us, I would like to request the Honorable Speaker of Uttar Pradesh Vidhan Sabha, Shri Satish Mahana ji, to say a few words. मैं सभी अभी यहाँ पे group photograph होगी. We will be having a group photograph. I will request all the dignitaries on the stage that they'll come and sit forward. But all of the delegates, you are requested to be seated on your own seats. कभी कल जैसे ग्रुप फोटोग्राफ होनी थी तो सब लोगों ने सोचा था कि एक स्थान के ऊपर आ जाएंगे, तो उससे सबकी फ़ोटो नहीं आती. तो अभी जैसे आप उसके स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं तो सारे स्क्रीन्स के ऊपर ये डिस्प्लेड है. तो स्क्रीन के ऊपर हर व्यक्ति की फ़ोटो अपने अपनी सीट्स के आधार के ऊपर उसी के ऊपर आ जाएगी. तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि जिस सब एक ग्रुप फोटोग्राफ हो तो सब लोग अपनी सीट्स के ऊपर ही बैठें, जो जहाँ पर भी बैठे हुए हैं, ताकि सब लोगों का अच्छी तरीके से सब लोगों की फेस आइडेंटिफाई हो जाए और सब लोगों के फोटोग्राफ हो, सबको फोटोग्राफ्स भेज भी जाएगी. तो इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है ग्रुप फोटोग्राफ के समय, और उसमें अगर पॉसिबल हो तो जैसे यहाँ पर हम लोग हैं तो हम लोग अगर अपना हाथ ऐसे पकड़ लेंगे एक दूसरे का
तो उससे और एक मैसेज आएगा। जैसे अभी एग्जाम अपनी अपनी जगह पर एक दूसरे के साथ आई रिक्वेस्ट इस टाइप से आप सामने बैठे हैं, अपने अपने बाजू में जो बैठे हैं उनके हाथ पकड़, बैठे रहें वहीं बैठना और अपने बाजू में जो बैठे हैं उनके हाथ पकड़ के खड़े करें। और लोग वहीं पर बैठे रहेंगे तो उसमें हो जाएगी। अभी बैठे और एक रिक्वेस्ट है, अगर खड़े होकर अगर अपना हाथ एक दूसरे के साथ पकड़ लेंगे तो सबकी फोटोग्राफ आ जाएगी। ओके, जैसे खड़े हो जाइए, आपके हाथ ऐसे एक दूसरे के हाथ पकड़ के खड़े कीजिएगा। ड्रोन के माध्यम से एक बहुत सुंदर फोटोग्राफ ली जा रही है। आप ऊपर देख सकते हैं, स्क्रीन में आप सबकी फोटोग्राफ आएगी। विभिन्न प्रदेशों से आए हुए आप सभी अतिथिगण, from different ideologies, different political parties, but you all are standing united for betterment of India. Such a beautiful picture the drone is capturing. Beautiful, beautiful representation of our country. I request everyone to be there where you are. अभी सब लोग वहीं खड़े रहेंगे, तो हमारे जो रिस्पेक्टेड गेस्ट हैं, एक सेकंड, सब लोग अभी आएंगे आगे तो सबकी फोटोग्राफ होगी। Mana साहब आएंगे, सब लोग साहब, आएंगे आगे। Thank you. just to express the joy and satisfaction by all the patrons and everybody. Total number participated is 1780. 1780 MLAs and MLCs का पार्टिसिपेशन हुआ है। 2200 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। थैंक यू सर, प्लीज वहीं रहिए, प्लीज। सभी विधायकों से विनती है, प्लीज वे अपने स्थानों पर ही रहें, अपने स्थानों पर ही रहें। नेशनल एंथम होना है। आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज बी देयर वेयर दे आर। प्लीज डू नॉट लीव योर प्लेस। प्लीज डू नॉट लीव योर प्लेस। अभी नेशनल एंथम बाकी है। मैं सभी से विनती करूंगा कि वे अपने अपने स्थानों पर ही रहें, खड़े रहें अपने अपने ही स्थानों पर। प्लीज राइज इन योर सीट्स एट योर प्लेस बिकॉज वी आर नाउ गोइंग टू हैव national anthem. So please rise in your seats. Please be where you are. Please do not leave the place. अपना स्थान कृपया ना छोड़ें। फिर से एक बार मैं सभी से अनुरोध करूंगा, सभी पीछे आ जाए, सभी पीछे आ जाएं प्लीज। एक बहुत ही सुंदर चित्र यहां लिया जा रहा है। मैं सभी से एक बार, सच अ ब्यूटिफुल एंड हिस्टोरिक पिक्चर बीइंग टेकन। ऐसा चित्र स्वतंत्र भारत के इतिहास में आज तक कभी नहीं लिया गया है, जहां भारत के सभी राज्यों से आए हुए विधायक, जी हां, अब लोग फिर से आप एक बार अपना हाथ पकड़ के खड़ा कर सकते हैं। सभी से अनुरोध है कि अपना अपना हाथ पकड़ के अपने बाजू में जो खड़े हैं उनका हाथ पकड़ के खड़े कीजिएगा। एक सुंदर चित्र फिर से लिया जा रहा है। भारत के इतिहास में पहली बार देश के कोने कोने से आए हुए माननीय विधायकगण और अतिथिगणों के साथ संपूर्ण भारत का यह चित्र आज यहां लिया जा रहा है और इससे अच्छी छवि शायद किसी भी कैमरा ने इस स्वतंत्र भारत में ली होगी। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि वे अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। अब हम राष्ट्रीय नेशनल एंथम करेंगे, जिसके बाद अब सभी से विनती है कि आप इमीडिएटली पैरेलल सेशंस के लिए नीचे चले जाएं। पैरेलल सेशंस विल हैपन इमीडिएटली। Immediately the parallel sessions would happen on the ground floor where you all were yesterday, and at 3:15 p.m. we are going to start the valedictory session. I request my technical team to kindly relay the national anthem. Please stop the movement. Please stop the movement. National anthem, please. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात
शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Thank you very much. I request everyone to please join us in the parallel sessions starting immediately. You are requested to go on the ground floor for the parallel sessions the way you did yesterday. It's a sincere request. People in Delhi will relate more to Washington, Bombay, to New York, Bangalore, to Silicon Valley, right? When something happens in Indian remote place like Bihar or somewhere else, or Uttarakhand happens, for a few days you could do here and there. But when Sandy happens in the US, how many emails you send, anything that happens. So, you're culturally, it's a different nation that is getting formed in the world in some ways, even though it is not formally. So, new communities are getting built on Internet Highway. And therefore, we'll be seeing emergence, which is the third largest nation in the world, Facebook. Okay. So we just need to keep on the back of our mind that these are the new thought processes happening. There is a lot more conversation going on in the world today on supremacy of personal sovereignty over the state sovereignty. Okay, these are the questions maybe we can ponder as you go along. So that is how the evolution is happening. Now, as we all know, democracy, broadly at least known history, is that about 500 BC, Socrates came up, then followed by Plato, Aristotle, and we had direct democracy in Athens. Correct? So all city dwellers, came together in a square and decided and voted or whatever it is, right? So that was the early stage. Next stage, can you go to it's my hand. I'm sorry, I'm forgetting. Representative democracy. First democracy, representative democracy happened in Iceland in the circa 930 AD. Around the same time when Jersey Island is similar thing, So we started getting to representative democracy. So Iceland started, but all the countries. Now, how many years have gone? About 1200 years, right? We have to change the business model. So it was representative, I'm just writing MP, MLAs, senators, whatever you call it. But that is an agency. They are the agents of the people. Ultimately, representatives are the agents of the people. But if you look at, do they actually vote in accordance with democratic principles? Sometimes member of parliament or senator would go and do what he wants to do, or party whip is followed. Even though his constituency, 90% of the people may not agree with him, but he has what is called irrevocable power of attorney for some years, right? And we don't have it. So, and this happened because of the necessity, because when too many people are there, how can you, how can you go and vote and do all that kind of stuff? So when countries become bigger, nations become bigger, or otherwise people, So these are the intermediaries. Okay. So the next stage that we look at is netocracy. From citizenship, it will move to netizenship. Because now we are all involved in a net. Okay. And therefore, the future technologies will enable us to disintermediate, okay, members of parliament and MLAs or otherwise. I'm not scaring anybody. But I'm saying that the reality is the world is moving towards disintermediation. And therefore, there would be new technologies. For example, cell phone will enable you to vote in a secure environment, non-manipulatable, with blockchain, okay? And you can vote in a secured environment. It will also assess your mental condition. For example, I have got
one app called AQ. Okay, it will tell you exactly what is your mental stress level, because anybody voting must be in good health and good mental framework as well, right? So the technology will enable us to catch whether somebody is free. It will have a revolving camera, so one can find out whether somebody is putting gun on your head and you're voting, or like that. So then we have, so we'll be able to vote directly and directly on any issue that concerns you. So then it is real, I would say, democracy with, if you simplify that, to say that it's a rule of majority, okay? Just for the simplification. So then you know what people really want, and they can directly vote. But at times there are hundreds of issues going around, you may not have time, so you may have a representative when you want, like CEO, he might delegate something, but sometimes he says, no, on this particular issue, I want to handle it. Same way, the citizen can say, on this issue, I'm going to vote. It's very much concerning me, otherwise I'll tell you. But at any point of time, on any issue, I should be able to vote. That is what would come. Number two, that how would you draft legislation? I think most of the problems happen at the developing legislation, drafting, and then implementation, enforcement. All this can be done through technology. Let us take example. Today, if you have to look at any definition, which is the source you go to? You don't go to encyclopedia. How many of you have opened encyclopedia in last some years? You don't go to dictionary. You go to Wikipedia. Do you know who writes Wikipedia? Millions of people. It's crowdsourced. And then there are editors and there are other people, facilitators, administrators. But today, it's crowdsourced law. Also, I have definition, everything's done with definition. So that is where we see that even drafting would be happening through crowdsourcing. Even issues what are relevant to people. Welcome. So even drafting of a law, okay, would also happen through, let's say, ChatGPT. And I have given an example of that, I will show you. Number two, even issues can be identified, what is more important to people and less important. I'll give you one example. There are specialized advisors who advise Bill Gates and others, and I know them, on how to use philanthropy. You spend billions of dollars, people need this, but their need is something else, okay? So you're hitting a wrong target. So what happened in one case, when Bill Gates was to fund Haiti, which is very poor, and they thought sanitation is very important, people are feeling, sick, falling sick and all that. So that is where we should deploy maximum investment. When they did study with data analytics and all that, they found that more important thing was to spend on ambulances. People needed that more. Then, of course, both are important, but between the two, it is the ambulance that is more needed. So same thing happens when Member of Parliament or MLC or otherwise, MLA looks at this and public needs this, whereas public may be needing something else. I'm not being judgmental here. I'm not a part of political party. I'm not. But we are all here to facilitate the growth of democracy and thought leadership. So you can have, identification of issues through data analytics and through AI, through robotics. Number of technologies do exist today to tell you what are more important issues than the other ones. So once it is identified that these are the needs of the people, the next thing is drafting of a law. I just explained that you can draft a law through ChatGPT. In 1 minute, or not even 1 minute, 30 seconds, my colleague, said, okay, look at traffic law. There are other ones. I think we have got some example in front of you. If you see here, it says you are a legislator,
draft legal provision for controlling air pollution in state of Maharashtra. You look at this. It is done by ChatGPT. You know, so beautifully done. She pulled out that she said, write a policy on traffic violation. I think I don't have it, but somebody must be sitting there. You know. You'll see. So all this is being done, and it's done so well. It takes less than 3 seconds or 2 seconds. So you can draft laws through technology. You can enforce laws like traffic violation. Today what happened? You're driving at a particular speed beyond the prescribed one. Automatically cameras pick up, send you a ticket, and you get it. So evidences are all getting collected and presented and things happen. But this is a very low level. But as we move forward, a lot of technologies will enable us to enforce law as well. So less human intervention. Only thing that would happen is that today still we are not at the stage where cognitive capabilities, as far as robotics is concerned, in 10 years' time or 15 years' time, the cognitive capabilities of robots will exceed human. Okay. Today it is still under, and we still have to apply mind. ChatGPT is not a prescribed way of doing. Somebody in the US, I'm sure everybody read about it, right? That it drafted a petition, it cited all the case laws and everything, and just found out that this never existed. Okay? So we'll have to still apply our mind. We are still relevant to the world. So idea is that we will be able to do a lot of those things in the coming years. Sorry, I've gone too long. But I thought technology is going to be the new driver. We need to see how we want to shape the world. Okay? For example, when this goes into democracy is a majority, then we need to figure out how do you incorporate minority interests, minority concerns, minority, all those kind of things. It is up to us to decide together. But this will really help us if we, want to move forward. So this was one of the things that I thought I'll just present to you. And then there are all the questions. So idea today was not to have one-way traffic and talk, monologue. But I think it would be wonderful to hear your views, and we can go on that. I'm, first of all, very delighted that very senior people and my favorite professor, Dada, is also here. I was his student in the very first class, tutorial he took, before perhaps he became a lecturer. So in 1969, 70, I don't remember exactly. And it's so much of a delight to have you, Lalitji, and everyone, all of you have come, Roshan, all of you have been friends, and if we can shape the world, we can do something interesting. We are a thought leader. Always new thinking starts with small number of people. And therefore we thought we'd have a small beginning, which can be giant leap for mankind. Some this, and thank you so much. So if I may just read out some questions, maybe anyone would like to comment on that, maybe raise hand, and I think we can pick up. And it's all free-willing. And second thing we want to do is, at the end of the day, some notes will be made, and let us see how we can take forward this. That's the job of university, to give thought leadership, to give academic bent to the whole thing. Then you look at the practical. Because first is your philosophy. Law to me is nothing else but philosophy. Okay. Once it's philosophy, then when it is philosophy is codified, it becomes law in some ways. Okay. So same thing, religion is a philosophy. When you add rituals to religion, it becomes rituals to the philosophy, it becomes religion. So I would think that let us have conceptual thinking, brainstorming, any ideas, free-willing, and I would stop here at this point in time. We have a lot of time up to 2 o'clock. Yeah, questions are on the table, but if I may just for the sake of order, read out, okay. If anybody wants to comment on the first two questions I dealt with to some extent, in 2047, as I said, 2047 is not 25 years, it's 75 years. So that's long thinking.
And what changes do you anticipate in relationship between citizens and legal system? How can the legal system remain transparent, accountable, and trusted by public? And with the advent of technology, process of disintermediation has started. Should models of democracy be revisited in this context? So my first question is simple, that should we revisit the whole concept of democracy? And I think that thought leadership from India can come in the new age. Sorry for my with your permission, extended talk. I'm audible? Yeah. Lalit Bhasin, you see, if we have to save democracy, not only in India, but elsewhere, I think the emphasis has to shift from law to justice. It is justice which is more important and not law. Law is just one of the part of rendering justice. And we have in our constitution, the very preamble says, the people of India having solemnly resolved to constitute India into sovereign socialist republic and to secure to all its citizens justice. Yeah. That is the first thing. Justice, social, economic and political. But we don't talk about justice. We only talk about law. Therefore, emphasis has to shift from law to justice. If you wanted a definition of democracy, it should be rule for justice, not rule of law, rule for justice. Are the citizens of this country getting justice? The emphasis is no, because the emphasis is only on law. We have 5 crore cases which are pending in India all over. What is the reason? Firstly, we have too many laws, ill-drafted laws, overlapping laws, obsolete laws. Therefore, there has to be a rationalization. That is the responsibility by the legislators to provide justice to the people. Justice is not connected with judiciary only. Justice means justice by every, pillar of the state. So the legislature has a responsibility. Similarly, executive has the responsibility. And of course, eventually judiciary. But when we started in 1950, when our constitution came, there was hardly any pendency of cases. But now what is the situation? I don't know what will be the situation in 2047, because our Honorable Chief Justice has said that he is bringing digitization and facilitation and all that. Very laudable. But that will only facilitate filing of the cases. What about disposal of the matters? Disposal may possibly, there will be more arrears, Therefore, there has to be a shift from law to justice. These are my initial remarks arising. I would love to hear other views, but just one comment here. Some of the other, for a long time, I learned one lesson, especially in Silicon Valley, that technology is the greatest social leveler. So that will be one of the factors, not all, please don't get me wrong. But more use of technology will help us to get justice and speedier justice for the people. So how do we use technology for actually doing justice? Everything starts with framing of a law and articulating them, drafting them, and then eventually enforcement. And so I think let us make note of that point. What are the technologies that can help us get better justice for the people? Am I right? Yeah. So, yeah, Nitin, please tell your name so everybody. All this is getting... One of the issues which are not covered here in the subjects which are there is by 2047, if we look at the future, in India we are going to have a common civil code. When we are speaking of common civil code, you might be aware that it is existing in Goa at present. Goa is the only state in the entire country. Goa, Daman and Diu are the three places wherein common civil code is being practiced. Now, common civil code does not mean that the same law is applicable everywhere.
Common Civil Code, which also protects your customs and traditions. They are also a part of the Common Civil Code. Now, while doing that, there is another thing that is also important is now in all the laws which we are seeing today, personal laws, the ladies are not being protected. Now, in case of especially family disputes, except for the maintenance, except in Goa, I am referring to, they can only look at the maintenance in case of divorce and such matters. Now, in Goa, we have something called as, under the Common Civil Code itself, communion of assets. When the husband acquires a property, wife automatically becomes a partner in the property that is acquired by the husband. Now, that kind of law is required to be there. So what I'm trying to put the stress on is that slowly our personal laws will go away and a Common Civil Code will come. And the Common Civil Code will basically protect, or is required to protect every citizen, while protecting his basically customs and traditions. So in case of, now if we speak of a marriage, the traditional systems will be followed. But the rights which are accruing therefrom would be the common rights. This is one of the things, new things I wanted to put So we'll in. make note of that. Yes, and please. I think community property law is very common in many Communion of civil assets, legislation. communion of assets, protection of rights of women as far as property These are very concerned. specific Yes. ones which we can make note of that need attention. But Roshan. You see, as Mr. Bhasin has said, we need justice before law. Law plus X is justice. And if we want to demand justice, we've got to do justice. And when we say we have got to do justice, it is not only the judges who have to do justice. Each one of us has to do justice. And each one is equally responsible. Therefore, the first thing is the fiber of character. That is truly missing today in our country. Once we have integrity of character and discipline of work, things get settled. Our laws would be enforced. We have got many laws, and we have got many good laws, even if some of them are obsolete. It is the enforcement which is required for getting access to justice. And each one of the lawyers would be responsible for seeing that somebody else gets that justice. Because today in our legal system, it is that a very smart and brilliant lawyer sees to it how a very good citizen cannot quickly get justice. That is important, you know. And therefore, in your question, I would only take exception to one word, remain, in question number 1. How can the legal system remain transparent, accountable, and trusted? We must say, how will the legal system now be transparent? Because it should be, the justice as well as the legal system, and it applies to judges and lawyers both. Accountable, where all are accountable. And we take that accountability on merits, not on face value, but as they say, on merits. And then it will be trusted by the public, because I don't think our system today, justice system as well as the legal system, can be said to be trusted by the public. They are always apprehensive. And please understand, though we say access to justice for so many of the things, and we want people to come into the system, and then we say, now it is ADR, please go out of the system and have an alternative dispute resolution. If we have to give true advice to ourselves and to our own loved ones, we would be telling them, please don't go into the system. See how you can get your rights, etc., without going into it. And that is the test. So make correction to the question. Mr. Dada. Can Dr. Desai and my esteemed colleagues, I don't want to impose my views on you because I'm too small a man to make a pontificating statement. But the access to justice, unfortunately, in India is lacking for the majority of the people. Today, the best of lawyers are appearing for the Bada Lok.
and their matters are being considered. We are here in a 5-star comfort discussing what justice should be. But what about the 75% of the people who are afraid to come anywhere near the court because no lawyer is going to take their matter unless he is well compensated? So we are living in a fool's paradise if we believe that justice is available to everyone. It is not. Secondly, there is a great ignorance of people of their legal rights. People are being hammered, people are being thrashed, their houses are being demolished, they are being asked to go here, go there. The state, unfortunately, is not able to deal with the situation which it has. So how will you bring justice to the common man? Dr. Bhasin said that it's all very well talking of rule of law. What about justice? Justice is an intrinsic value. Otherwise, it is like King Canute controlling the waves. There is justice everywhere, but there are thousands of people who are deprived, who are unfortunate, who are illiterate, who require the maximum help. What are we doing about them? We are talking of 2047, we are talking of computers. Of course, it's all going to come. But will the common man, the average man in India get it? Because remember, this is the greatest democracy in the world. It is the best microcosm of different cultures, different values, and people are there from various sections of society. And we have the best of judges, but they are handicapped. There are just not enough judges to go around. There are too many matters. So even at the top of the pinnacle, we have a lot of problems. So there is a lot of time, and I'm very happy that Dr. Desai has taken up this initiative, and all of you have decided to spend your time on a Saturday morning, because Saturdays are very precious for all big lawyers. Unfortunately, that is the position. But remember, you have to go and give access to the common man. If people come and knock the doors of justice, they are closed. There are various people who come outside the High Court today because their matters are not being heard. The top matters are being heard of big societies, of big companies, but the others are not being heard. Only admission matters are being heard, final hearing matters are not being heard. Are we just closing our eyes to this? Is this going to be the situation in 2047? We have to reflect on this very carefully. We have to make efforts to improve this. We have to make efforts to make ourselves more credible. And it's not that law should only be for the top people and not for the common man. So one thing which I would say with great respect to Dr. Desai, of whom I am very proud because he was one of my earliest students, and of course Dr. Bhasin is here, was one of the earliest men who ever trusted me with a matter. So, however, remember that we have to serve the common man. I'm not saying it as a platitude, because you'll ask me, how many common men have you served? So, therefore, we require introspection. We require study. We require analysis. We require people who will go to the common man and explain to him. To the deprived sections of people who don't know what their rights are, to the people who are being arrested and harassed from time to time by the police administration, to explain to them what their rights are. And that is where the young, idealistic lawyers, some of whom may be sitting at the last row, are required to introspect, because they are the future. We have to make people aware of their rights. We have to make the rights accessible. The other thing which I would say with great respect, we have a very complex system where the judiciary is totally wedded to the administration. Even appointments don't come through because the administration doesn't like it. That should not happen. The police is wedded to the administration. The Supreme Court said they should not be, but unfortunately they are. So we have to insulate these associations. The bureaucrats hate the judiciary. The judiciary is skeptical of the bureaucrats. And yet the judiciary is dependent even for its appointment on the bureaucrats. How are we going to change it? Are you just going to look at it and say, yes, we'll pass this resolution or that resolution? You must get the people to understand this. As a people, as the greatest democracy in the world, we must work towards improving this, to insulate the judiciary from the bureaucracy, from the executive, to see that each wing operates with great respect for each other, and therefore to see that this country, which is the greatest democracy, becomes probably the greatest country in the world.
I'm not saying that as a nationalistic symbol, but I'm saying this with an open heart, that in 2047, maybe it will be at the top of the pyramid if we all work towards it. And great movements have small beginnings. I would like to believe that this is a small beginning. Thank you very much. Thank you very much. So if I may just interrupt for a moment and say that, what we are looking at is the outcome called justice. Outcome is a consequence of right process. So together we can frame a process. How do you initiate legislation? How do you draft legislation? How do you clarify and all those kind of things? And that is where technology comes up. Again, I'm going back to technology just because I want to just debate a little bit more, because philosophically we are all in agreement that we have to have justice, and justice, Mr. Pasin, you really pointed out that justice is the key word ultimately. And we have wedded to administration, as you said. Actually, we should be talking more about management of justice than administration, because it's so ritual and so fixated that human element is missing. There is no compassion when it comes to justice. So I think if we can have a right process, and the consequence would be to some extent right. This is not an only solution. I'm just mentioning that we should focus a little bit more on identification of issues, what are the problems, and how the processes should be, how the drafting should be. In fact, I had sent one piece to everybody on how to draft taxing legislation, because my subject being tax, but it was written 10 years ago. Okay, now we can do a lot more, and with your brains, we need to put some process in place. Half the time today I see that public consultation process has gone off. Even serious laws like Finance Act, which affect day-to-day life of everybody, it gets passed in Parliament without much discussion. So I think we need to everybody is conscious of that. And people want to change. It's not that people don't want to change, but people like us, when we talk about it, perhaps it will have some impact. So process is very important, and if right process is followed, right outcome will be there. So this is one small comment. Please introduce yourself. Aditya Sondi, I'm a practicing counsel. I'll try and respond to your point, Mr. Desai, on process. And I'm conscious that we're speaking as an offshoot of a legislators conference. So I'm going to shift the focus to the legislators, and I'm sure you'll find a way of communicating this to them. Justice Dalvi said, law plus X is justice. That X, in my opinion, is equity. Now, equity on the part of the courts is one thing. Let's look at equity in law itself. Are legislators and parliamentarians conscious of the citizen when legislation is made? Is law citizen-centric? I think that is a crucial discussion to be had. You may have the power to make a law on demonetization, and the Supreme Court has upheld it, so it's not my place to say whether that law is valid or not. You may have the power to impose a nationwide lockdown, but is the focus on your jurisdiction or your competence to make the law alone, or is it citizen-facing? And there, when you're talking of a citizen, are you talking about the little Indian who's going to be affected by that law, or are you being driven by political interest, right? And I hope that legislators are conscious that there is a presumption of constitutionality when a law is made. That's a very heavy status to give to an exercise. Then comes in the process. Is the process meeting that degree of presumption? Is there adequate debate, consideration? The Supreme Court has said in Kyoto Holohon that when legislators vote, they have a right to dissent. You are not in breach of Schedule 10 if you dissent from your party whip and vote against a legislation because your conscience or your constituency demands otherwise. So is this being thought of at all in this conversation about law and citizens? I think citizens get most of the time the rough end of the stick. And if I may also make one other point, we often focus on legislation, constitutional amendment, etc. But as far as the citizen is concerned, it is often the subordinate legislation, the executive orders that affect them.
And that is again something that people have to think about. I come from Bangalore originally. Now in my city, the Cubbon Park is equatable with Central Park in New York, except with we permit the traffic. Now, recently there was a government order issued in Bangalore saying that in Cubbon Park, lovers will not be allowed. Which means me and my partner maybe can be thrown out of Cubbon Park on moral policing. On the one hand, we're speaking of same-sex marriages and evolving in our thought processes, being thought leaders. On the other hand, we are bringing in petty moral policing in our everyday existence. That is where the citizen is affected. Somebody is going to look at someone and say, you don't look all right, you don't meet this government order, get out of the park. Not, well, so is that the new apartheid that we are introducing through law, and citizens suffer? And my last point, sir, is relatable to your technology issue. That law, be it parliamentary or executive, ultimately the proof of the pudding is in the execution. And I believe that's where technology does come in. And I hope legislators will think about it. I was reading an article just yesterday which said that with the introduction of AI, today a widow in Karnataka who has a certain entitlement, right? It could be an education entitlement for her child. It could be a ration entitlement. It could be a pension for a pensioner. Today, through AI, these citizens are able to get free advice. When I say free, I don't mean free in the sense of pro bono as lawyers understand it. Bribe free. These are all a category of citizens who otherwise have to pay bribes to officials just to get what is their due under existing law. Now, if we can't bridge that gap, we call it last mile, if you will, what is the point of conversation around, constitutional amendments and law, etc.? So that is where I think 2047 or now, that gap can be bridged. These are all part of those processes. And that is when perhaps the citizen can be at, the not the receiving end, but at the bright end of this entire process. Thank you. So, Nitin Podar from JSA. Thank you so much, Nishit Bhai, for inviting me. And I must first thank and congratulate MIT for hosting this kind of conference. I always believed that educational institutions, particularly law schools, should come forward in shaping up the laws, in shaping up the process of justice. I'm really glad that Lalit Bhasin and Senior Dada has laid down the emphasis on justice. And I guess we all have assimilated here for also talking about the processes. Now, I would like to read out one sentence from Mahatma Gandhi. He had said that the first step in achieving justice is to make injustice visible. Now, as rightly pointed by Dada and also with Aditya, we have almost, I guess, 40, 45, maybe a little more population of the country. Yeah, so thank you. I'm really, sir, honored if you're listening to me. When we look at the population of the country today, it's 140. By 2047, it will be 160 crore. And I guess almost 80% of the population will just not even know what the legal provisions are or what the legal aid is supposed to come to them. As Dada pointed out, is the judicial system today only catering to the senior corporates or senior citizens or the top end of the society? So yes, it seems like that. So what's the solution? I would love to talk on the process of the solution. The first solution which emanates from Mahatma Gandhi's statement is that unless we make injustice visible, nothing is going to work. So I would honestly, personally believe that the law schools should really take three things. One is legal awareness campaigns. Not just the law schools, but all the schools and colleges must adopt that, and MIT can take a lead in identifying what kind of awareness should be created. Number one. Number two is the legal literacy. We really need legal literacy. I'll give us a small example. Absolutely ordinary person on the road, absolutely illiterate ordinary person on the road, if he is not well, he goes to a medical shop and buys a crocin.
He knows what medicine should be taken. On the other hand, a highly qualified CEO, highly paid CEO, or owner of a large conglomerate, if he gets just a constable on his door saying that you have been called in the police station or a small summons, he will first run to get a lawyer. So the literacy gap, legal literacy gap is so huge in the country. Again, I would urge the law schools and the public institutions should come forward. We as JSA, we have cross offices, we will be very happy to pro bono partner with you. I'm sure Nishit also we will be very happy to join. So legal awareness, legal literacy, and most important thing is legal aid. There is legal aid society. There is also a society, NAFSA or something. I just read. NALSA. How many of us know about NALSA? How many branches, how many volunteers NALSA have deputed across India? Now, these are the things we could really initiate. One last point I would make, Nishit, on technology is, internet came in 1995. Today it is 30 years old. Yesterday also I made that point on phone. Today, the decision makers in this country who are 55 plus, they feel, and I am making a very responsible statement, the decision makers across India, whether it is art, culture, science, corporate, any sports, any field you take it, the decision makers think ability to send an email or ability to send a WhatsApp message is technology. That's the sad part of life. Whereas what would happen in 2027, in just 5-6 years, the students or the children who were born in 1995, they would be in 35 or 40s. Once they become decision makers, things will radically change. Trust me, things will radically change. Again, a short example I'll give you. I was sitting with a very top CEO. Every 6 months he changes the laptop and computers, but his secretary operates it. He doesn't operate. Now, if that's the state of technology which has seeped into the society, how do we expect the change? So my 2 points only. One is legal awareness, legal literacy, and the legal aid. If we can broaden the scope, if we can really use technology to reach out to people through this for the legal literacy and legal awareness, lot of things can be handled. During COVID, we started the habit of just washing our hands, thereby reducing waterborne diseases. So prevention, to my mind, is better than cure. Of course, we need to change the laws, change the system, processes, but that will really take its own time. And it's like making the elephant take a turn. But before that, these are the small steps, as Mahatma Gandhi mentioned, we could certainly take up. We have the wherewithal, and MIT has shown the path. How do we get there? We are committed. Thank you. So just to add to what you said, very good explanation. That legal literacy is very important, right? So I think in my scheme of things, that we disintermediate members of parliament, MLAs, as you promote, say scenario 2047, right? One question was asked to me, what will they do? I said, they will become educators. Their job is to go and educate public what is right, what is wrong according to them, and then let them vote. Rather than he becoming an agent and voting, whatever he thinks right. So I think if MLAs, MPs and others consider themselves as educators, it will make a lot of difference, because today, you go to Delhi, you go to other cities and vote, but important thing is you're not sufficiently educated in your own constituency. And I think that would be one of the roles that we can consider. I'm Somashekar. I'm a lawyer. I'm not a senior advocate. So just to clarify, so many of you, so much senior to me, have spoken. So I just want to connect the dots. There's a very simple solution to connect these dots. That law plus X means actually is another way of saying justice is a byproduct of law being applied. But when we say access to the law or access to justice is being impeded, I just want to lay 2 simple processes, and there's no rocket science to this.
any legislation that's preceded by pre-legislative consultations with society is legislation that's well understood. Take away the pre-legislative consultation, that legislation is not understood. And if it's not well understood, it's not well complied with. If it's not well complied with, the protectees of the law suffer despite there being a law. The second measure is post-legislation, there has to be a mandatory review of a legislative impact assessment. Other societies have legislated these two requirements into the law. So in other societies, the law requires that legislation should be preceded by pre-legislative consultation. And as Aditya said, so much of our law is subordinate law made by regulators. I mean, if you Google for one of the Economist cover stories saying the rise of the regulatory state, we all live in a regulatory state, ranging from the toothpaste you buy and the medicines you buy to the stocks you buy or the insurance products you buy. Everything is regulated. In fact, in the last 20 years, we've said, show me a market and I'll give you a regulator. You have a regulator per market. Now, each of these regulators is drafting law, is drafting subordinate law, which affects you. Now, in 2014 Feb, there was a letter from the law secretary to all the regulators saying pre-legislative consultation is a mandatory requirement as a matter of policy. We don't have it hard-coded in law made by Parliament as UK does or Australia does, but it was a request. Now that's substantially followed, but also in substance not followed. For example, when a new regulation is made, say for example, a new law to regulate insider trading or new law to regulate takeover regulations, there would be a committee, there'd be a lot of public consultation, and it comes out. But when there's a substantial amendment to some of those, the legislative consultation is missing. And then comes intuitive lawmaking to say, I think this will solve the problem, you write a problem. And that's where, just a note of caution on a ChatGPT law, it may give you a great draft. But a great law is not a great draft. A great law is a law that's preceded by defining a problem statement, proposing a draft solution to that problem. You have to say, this is the problem I seek to solve. This is the solution in my mind, which is draft law. Society, please react. People may be able to tell you that the medicine is more painful than the ailment. The draft law you proposed is a misfit to solve this problem. The problem is acknowledged. It needs an answer, but this draft answer is not a correct answer. And this is where in societies where pre-legislative consultation is mandatory by law, you have to write a cost-benefit analysis of the law, of the draft law. You have to say the cost that this problem inflicts on society is measured empirically in this manner, and this draft law inflicts certain costs, and the benefits from this law outweigh the costs. You need to be able to put pen to paper and write a cost-benefit analysis on the draft of the law. We need to get there. If not now, by 2047, I hope, but I think 2047 is too late. 100 years is perhaps still adolescence in the life of a republic, because republics have to withstand centuries and centuries. But I don't think we should be able to wait for 2047 to have these two basic requirements. Like in the United States, for example, laws which they do not want to bring in would have a mandatory sunset clause. Like if you have a gun control, for example, a law which says it should be made far more difficult to own guns, you would say this law will automatically expire on the 5th anniversary of the law. Now, I don't think that's the solution for India, but at least a mandatory requirement to review the legislative impact. This is what we tried to solve. This was our problem statement. This was the draft law which we made into law. 5 years down, we should review, have we achieved what we sought to achieve? You take, I can go on with legislation after legislation. Where did PMLA begin? Where is it today? It began with dealing with money laundering for certain specific offenses. Today, violating a takeover regulation, I'm sorry, I keep giving examples of securities law because it's a mulla ki daud masjid tak. But things like takeover code violation is in a scheduled offense of PMLA. Is that the objective for which money laundering law was made? So these are questions to ask. Have we lost our way? And it's very easy to lose our way
with law, because if you say, and frankly, ChatGPT is the way in which laws are made today. Have power, will use, I'm allowed to make law, here's my draft law. Let's apply it and then we'll see. We can always change it after experimenting what happens with the law. I would submit with respect that's a very wrong way to approach lawmaking. If we fix the approach to lawmaking, we will find societies far more aware of the law. Nitin's question about a CEO knowing what to do when he gets a summons, that problem may vanish if there was consultation on what should happen next when a summons is received. Society will know why we have the law we have, and society will know on review why we wrote the law and where we stand after the law. I want to stop here because these are two very fundamental points in the context of a legislators conference. I thought these are two issues I should table. Thank you. Please go ahead. Sorry, you were saying something? No, I was saying that ChatGPT and others will provide information and basic text, but ultimately you will have to apply human mind and human heart both to anything that you do, because still it will not be a technical solution, it is more justice-oriented approach. So you can't just detach one from the other. Only thing is technology will only help you to expedite the process, make it faster, and it will become even faster once quantum computing comes in. So, but please go ahead. Good afternoon, everyone. I am Aniket Nikam. I practice on the criminal side. First of all, thank you, MIT, for inviting all of us over here for this wonderful session. Well, as he rightly said, Mulla ki dod masjid tak. So I'll also speak mainly what concerns me as a criminal lawyer. So as we progress towards 2047, would we have more laws or less laws? Today, as we speak in 2023, if a director of a company commits an offense, he would be charged for offense of 420, 406 under the IPC. He may simultaneously be charged for offense of money laundering under PMLA. And at the same time, he would simultaneously be also charged for offense under SFIO, Serious Fraud Investigating Agency. And he would be tried by 3 different courts. 3 different courts may convict him also, but then all these sentences would run concurrently. So then what is the point of having 3 different sets of laws when the sentences are going to run concurrently? And why can't we have one law which covers all these aspects? Because suppose he gets bail in one particular law, he may not get bail under PMLA because of the clauses over there. So how do we deal with this position of law, and how do we, as we progress? I firmly believe that we should have less law than more law. And from retributive form of punishment, we travel towards reformative form of punishment, which is practiced mainly in countries like America or some of the Spanish countries. Apart from that, what I have also realized is that we still live under this colonial hangover. Our criminal justice system is quite antiquated in the sense that our laws that were framed by the Britishers. Even today, FIRs in Delhi are being drafted and written in old Urdu Persian language. I happened to read a complaint few days back for offense under 406. They had used a term amanat mein khayanat, which means criminal breach of trust. So it was very difficult. My client was not able to understand. He asked me, I was not able to answer. So I had to Google what exactly it means. So probably we'll have to simplify the language so that, as Dada rightly said, that justice is not something that is really happening between 2 corporate giants. Justice is what it reaches to every common person of this country. I have seen so many cases where people are languishing behind bars despite being granted bail because they have not been able to furnish surety. So how do we modify all this? Can we have kiosk in police stations? So somebody goes to a police station, can he enter something and get the information over there? And then can he get his complaint registered over there? So because we have seen cases where police have misused their authority by not lodging the complaint even if cognizable offenses are made out. So all this technology, how can we use it? How can we modify it so that we can also reduce the crime rate, and at the same time, every person who is being tried or every person who is being subjected to all this process gets an opportunity by way of this technology to present his case in court. Now, ChatGPT may not be a good medium to draft laws, but I have used ChatGPT to draft a bill and it did fine. So can criminals who are languishing behind bars, who do not have access to justice, who do not have access to lawyers, who have to depend on legal aid lawyers, and at times legal aid lawyers take adjournments in court. That is why their matter gets dragged on. So can they draft
can there be a system in jail where their bail applications get drafted electronically through these mediums, through these softwares, sent to the court and could be decided that way? So all this probably by 2047 technology, of course, will play a lot of role. But at the same time, I don't think crime rate would be reduced. Otherwise, criminal lawyers would be out of business. But You'll be educated. So yes, I believe that this will certainly make a big change, and 2047, while we march towards 2047, all these things will have to be taken into consideration. Thank you. Thank you so much. Wonderful. Hello. I am Advocate Dr. Srikant. Okay. I am commenting on the second part, that's the inclusion. How can legislators get feedback from the citizens during lawmaking process, and how can citizens participate more effectively in the lawmaking process? First question is, do legislators need the feedback within 5 years? Legislators think they do not require it. And legislators who think they know everything are a great annoyance to all of us who do. Second question is, how can legislators get feedback from the citizens during the lawmaking process? Basically, this has to be a two-way, a very responsive affair. Moment some suggestions are made, they have to be taken up within a stipulated time. Allow me to give you an example. Well, I did my doctorate in elements of natural justice in departmental inquiries in industries where standing orders are applicable. Now, the thesis and everything was over, and there were some suggestions. That the suggestions are 40% it's going to reduce court time, it's going to reduce half the money involvement which is for employers, half the money involvement which is for workers, unions. So it's going to affect the total economics of the matter. I took the thing to a few ministers, and holding their briefs, I used those offices. They asked me to go and meet the labor minister. So I went to the labor minister. Labor minister gave me a good hearing when he had some calls from them. He asked me to meet the labor secretary. I met the labor secretary after giving me a patient hearing. He told me, look, Mr. Malegaonkar, the thing is, in the last month, I was the irrigation secretary. This month, I am the labor secretary, and next month, I'm going to retire. So why don't we do one thing? Now it's lunchtime, so we both will have a sumptuous lunch. And then, what an apathy. What about the suggestions? They say, you do one thing, you give a letter. We are speaking on how can legislators get a feedback from the citizens in the lawmaking process. Can citizens participate more effectively? Yes, all citizens want to participate. ChatGPT, AI, even the present setup, we'll have so many suggestions. The brainstorming as far as suggestions, and some suggestions would be equally good. I just give you an example. So many of my friends, so many beautiful suggestions they have. What could be the possible solution? Under the same mechanics, whether there could be some body created, I don't know really, because looking at the apathy of the total situation, it makes me wonder whether in the present setup this would basically be possible. Second is the time frame. Time frame is, you tell a legislator something. There are so many laws. Teen Talaq is discussed so many years, so many of them. These are just examples. Maybe there could be other considerations for passing those laws. But then there are so many. We keep on discussing it for 25 years, and then something, one day it sees the light of the day, depending on whether there is a will from the government. Third is urgency. Without urgency, any idea is going to lose value. So it has to be very urgent also. Or after 20 years, something else will crop up. So whether the 5-year time limit to respond by the legislators, because we are ultimately speaking in a legislators conference, so this thought has to be conveyed to them that yes, it has to be very quick in time. Then only it's going to solve this element. And law and justice, well, yes,
too much is being said about law. What about the justice? So else it's going to be a mirage as put forth by so many of the judges and so many of the judgments. So this is something, whether and how legislators should get, the time element would be more important. Otherwise things would get withered away with time itself. Thank you so much. In fact, that's exactly what I was trying to say, that ChatGPT is not going to solve problem, but it will expedite the basic process, because time element is very critical, whether in administration of justice or whether in formulation of laws or otherwise. And as I mentioned, that this paper, right, environmental law, you can look at, it took less than 3 seconds. Now we have some basic thing to work on. We have to apply our mind. In information technology age, you know, hierarchy is somewhat as follows, that at bottom you got data. So you analyze data, and when you organize data, it becomes information. When you interpret information, it becomes knowledge. And when you add experience to knowledge, it becomes wisdom. So we have crossed information age. We are somewhere information and knowledge age at this point in time, because information is now democratized. At one point of time, one small circular will cost you thousands of rupees at times. You know, now everything is available. So information is democratized. Data is democratized. Now it's how do you interpret. That is where we are surfing at the moment. And when you add wisdom, as I said, when you add experience to the knowledge, is wisdom. But another interesting thing has happened. So from information age to knowledge age to wisdom age, which is ultimate, there is creative age that has come. Knowledge alone is not enough. You have to creatively use knowledge to solve problems. And that is what is something that can be done with human mind and heart, and at the same time using technology. So I think we should see what is the process through which we can have better justice outcome. And are we, because we want to, what is called in management term, process re-engineering. A lot of processes we put in place 100 years ago or 50 years ago, they soon become outdated. Now we need to just think, how do we make everything a little faster, speedier, qualitatively better, and ultimate objective, if I may put it, is access to justice. You know, at one point of time, it was, being talked that ownership is very important, but now ownership is no longer a conversation. Access is more important. So Airbnb, for example, came up. You don't need a house. A lot of young kids say, I don't want to buy a house. I don't want to buy a car. Okay, but it created a new space, and those are the kind of solutions we can find to provide access to justice. Okay, anyway, I'll stop here. Cyril? Yeah, hi, Cyril Desai. I think one of the biggest issues that we're facing is that right now we are facing a whole issue of political refugees. Political refugees are coming from the Middle East, from Burma, from all over the world. But soon, by 2047, we'll have climate refugees. And that's going to create a whole new environment. And centralized form of governance will not function in the future. It'll be all decentralized. Decentralization is taking speed tremendously. And if you look at technologies like the blockchain and cryptocurrencies have been given a bad word, but they are probably the most empowering tool that we have in our world today. The world has come together to develop it and evolve it. Right now it's in its early stages, but in the future it'll become the norm. It'll be as ubiquitous as your cell phone, It's like, and if you see crime, most of the crimes are, in my opinion, are of two types. One are crimes of passion and crimes of economics. And if you take care of economics, a majority of them fall in the crimes of economics. Crimes of passions are there, but those are a different kind. That's because of your whole mental status. And mental health will have to become a political issue, because no politician today takes acceptance that it's because of bad politics, it has a direct impact on the mental health of the citizens. So citizens, and it'll be a globalized world, and
in such a situation, you'll have technologies, technology transfers and all become such a tremendous beneficiary to situations. But I think we need to look at how decentralization and the role of anarchy, anarchy has been given a complete wrong misinterpretation, but existence is in anarchy. And how do we adopt to this emerging world where there'll be technological anarchy? That's what is my point. Mahatma Gandhi was an anarchist, if you start with that, because so these are very, very important subjects to deal with. And as I was mentioning, we can have two things. One, the process, broad process for legislation. We can revisit the whole process and lay down some norms. And then there are specific laws for which we need certain changes, and that could be another part of the game. So whether it is in community property law or in other ones that we talked about. So they'll be more specific, but the process will have to be applied to all the specific changes that we want to say. Firoz, welcome. I have just 3 ideas to put forward. I start with what Nikshit pointed out on the question of democracy. I think so the most important thing for us to preserve at this stage is to ensure that the country remains a democracy, a workable democracy, and that the fundamental rights enshrined in the Constitution continues and remains with the people. Therefore, as Mr. Palkhiwala had mentioned, 2 important things should prevail. The basic structure of the Constitution should continue in its spirit, whether there is technology or not. But the important point is that there should be preservation of fundamental rights and basic structure of the Constitution for all people should prevail. Very important point about the huge pendency of cases in various fields. There, I feel by 2047, an appropriate mechanism should be framed by virtue of artificial intelligence, automation, robotics, etc., where categorization of cases on each subject can be made, the artificial intelligence to be fed in with the data, the immediate solution to be got on the problem, and a judge or a human agency to properly execute it with a human touch. The computer's automation would give the entire point, but the human touch, the human value to be added would be through an agency or by human being, and you should formulate it. Each case would be given just 3 minutes. Categorization, 3 minutes, what the computer says, what the artificial intelligence says, what is directly applied, the litigation would be over. Also, very much important is the question of legislators, MLAs, MPs, etc. They have a right to represent you, but when an important bill is in the parliament, a mechanism should be made that if they can't address, let the common citizen also have a right to put his views directly in the parliament. It is a shame that this time's finance bill was passed without discussion or a single question being asked. If it were to be put open, I'm sure a number of citizens would have given their views that this issue is not correct, this point is not correct, that could have been considered. And the laws, like Uniform Civil Code being one, bring just one law, one criminal,
one civil. I'll give you one simple example of unnecessary income tax existing. You are now aware that you have got GST. They said one nation, one tax. You have GST almost on everything. Increase its scope. Abolish income tax. You are already collecting 18% state, 18% central, plus reverse mechanism, plus other points. Why do you need income tax then? You charge it in a proper way, abolish income tax and all kinds of taxes. Excise, etc. is a different thing, but GST would take care so that the entire laws are abolished. Once the laws are bare minimum, automatically justice and automatically the rule of law will continue to prevail. One last observation. Please remember, by 2047, 2050, we would be also having an extremely large population. We will be the highest populated country in the world. So we will have to be extremely careful, first on environment and environmental law. It will be our responsibility to preserve environment. Number two, I think very important with such a huge population, with automation, automatically try to educate all the levels of society. Education will play an important role. We are secular in our constitution. The secular would mean education by technology to all. If people are educated, then automatically they will understand their responsibility, and then only we will be able to preserve the democracy. And as you said, net citizenship, that is the right approach, that every person would be like an MLA. The real people who are elected are mere agents, and you have all the right to give all the points required in the point. So thank you so much. In fact, what you said, education, and all of us know that it's different from being literate. I remember when I was in college, and I learned the difference when one taxi fellow, I and my friend were crossing road, and he crossed when the red light was on, and he would have just met with accident. Taxi fellow stick out his neck and said, "Hey, educated." Normally he will give a bad abuse, but that was so touching that, "Hey, educated, you are crossing the road, when the red light is on." So I think we need to just see that we really educate people in that sense. And in fact, one paper we have written on justice is Justice at the Speed of Thought Without Injustice. So we'll be happy to circulate that with Nitish Raj's help. I've written that paper. And we'll circulate that. These are some esoteric ideas, but I think it would be, I think at this age and stage, I think it's important for us to be change agent. And if not now, when? Please, Pedalini. Thank you. Good afternoon, everybody. Thank you for inviting me. Yeah, good afternoon. Thank you. At the outset, thank you very much for inviting me, for being a part of this real brainstorming. And it's a very erudite crowd, and I have learned a lot. When I go back home, I'm going to get more enriched than when I entered this auditorium this afternoon. We've all talked about fundamental rights, we've talked about technology, we've talked about what are the issues that are likely to come up, what is the relationship between the drafting of the legislation and all. I think we also need to consider something which concerns you and me, and that is the families and the laws with regards to the same. Because unless there is a stable family, there cannot be a stable nation. And this is probably one of the reasons why there has to be given, a lot of attention to the laws which are concerning the family. And that is where I think there is a little bit, because we have too many laws, or probably too
too complicated laws to bring about any kind of a situation. Now, when we talk about a justice, the justice begins at home. As they say, charity begins at home. And so if there is justice which is prevalent in the laws that are formulated for the families in different contentions. For example, we were just talking about the community property. That is one part of it. The other thing that we were talking about is about the children that are born from the marriage and their custody and their related issues. And lastly, which are what really happens is about the basic concept and the status of marriage. Today, the Law Commission has come up with a number of suggestions, right from the time where Justice A.P. Shah was there and the others who were chairman. But very few of them have been implemented by the legislation in making them laws. And one of the things is irretrievable breakdown of marriage. Now, this has been battered by a lot of legislators, by thinkers, by even the Law Commission. But today, we still continue to be governed by the 1955 law when the codification was done as far as the Hindu law was concerned, and certain laws which are also pre-independence laws. And that is where I think there is a need to look at it, because unless you have a contended family, individuals who are not battling in their own homes, only then they will be able to go a little outside and think about these. To bring about technology in these kind of things, I think it's something that it's very innovative. But as Justice Dalvi rightly stated, that do we get justice within the system of law in family matters, or is there a justice which is an alternative dispute resolution, which is now being canvassed very popularly? And I personally believe that is a great way of going about it. So ultimately, so long as there's going to be a dilemma whether there is justice within the system or there is justice outside the system, a common person, a person who is battling with it, doesn't know, do I come to court for justice, is the first question that I get. Or when a client walks in and says, ma'am, I want justice, can you please do it and help me? So I then have to take up a role of somebody who would be able to say that I'm sorry, I may not be able to get to the justice that you're looking at within the system. We must try alternative dispute resolution, because that is probably a place where we can all sit, debate, and try and bring about it. So these are the kind of dilemmas that we are facing as lawyers and facing as legislators also, to have some kind of uniformity. And as it was just suggested, that yes, uniform civil law would be something that is much needed. And this is not a political statement. This is only a lawyer's statement who deals with these kinds of laws and sees the anomalies and sees what the discrepancies are. So today, as one criminal law, one civil law is the need of the hour. And anything that needs to be done to forward that kind of an issue, I think is something that will really help to cut down a lot of inconsistencies that are happening, and maybe a better tomorrow for all of us. Thank you so much. Wonderful, thank you. So, yeah, please. Non-lawyers can ask questions. Yeah, you can tell your name. We have about 5 minutes officially left. We may provide another 5 minutes because we started half an hour late. Sometimes it's a little impolite to be punctual in India. Lighter rain, don't get me wrong. But I know if we can. Sure. So my name is Sanjay Kamtekar. I'm a Chief Academic Officer for MIT WPU, and I have, few questions, from common citizens' point of view, right? This IPC system, you are the people who can analyze it, rightfully so, but I think you are giving the syntax, not the semantics. Somebody mentioned that end goal should be the justice, right? My question is, why the same IPC in some other country like Singapore works there but not here? Why so many pending cases? So one of you mentioned that it's not only to have a good fundamental rights or the legal frame, but implementation of the law or the application, as you said. That's really important. So what can we do about it, or basically your community of lawyers? How can we expedite of getting those so many pending cases? I think that discussion should happen. So anybody has those answers, or what way to go? Yeah.
times when people have said that you require more judges. There are times when they've said that you require less litigation. The thing is that when you have got whatever you have got, how efficiently, quickly, expeditiously can you dispose it of? One answer is case management. Another answer is absence of the 3 A's. The 3 A's are adjournment, admissions, and appeals. Appeals is what Justice Krishna Iyer has said should be washed in legislative acid. That is his own way of saying, and we understand that. So when we have got values of case management, the real principles of case management set into our justice system, it would work better. If we just get more judges, you may appoint 150 more judges, but if they are going to do the same thing, you are going to get the same thing. As Mark Twain has said, you do whatever you do 20 years from today, you do the same thing, you are going to get the same thing. It's like that. So principles of case management, which is a lecture in itself, which I don't propose to give you now, and what we don't require. Not only what we require, but we don't require. The 2 things would, I think, solve the problem better. If I may, please. You see, access to justice at the present moment is denied to the citizens of this country, primarily because of the fact that litigation is not the answer. As I said, there are more than 5 crore cases. And as Justice Dalvi has rightly pointed out, you see that if you have more judges, that will not solve the problem. The alternate dispute resolution mechanism has been put in place. Efforts have been made. But people are looking for alternative to arbitration now, because it has failed to take off. And what is required is a change in the mindset of the people, which can be brought about from the law schools. That is where institutions like MIT can do, to create, you see, that sort of a mindset in people to settle the disputes. Go back to our ancient times of consensual form of justice, you see, justice, consensual, not adversarial. We are stuck with adversarial because now it is embedded in our constitution. But if we have mediation, settlement, samjhauta, because I firmly believe and tell my clients also that a bad settlement is better than successful litigation. That is the answer, you see, people, if the citizens of this country have to be given access to just mediation, samjhauta, settlements. Yeah, please. I am Principal Secretary of the UP Legislative Assembly. Since the legislators and the legislation process was being discussed, so I thought I'll just give you an empirical view briefly. See, not only it is in the Legislative Assembly or in the Parliament, the process begins much before. And somehow there are many deviations presently. I'm originally from judicial service. So when secretary is told that a particular piece of law is to be made on a subject, he puts up a note, goes to the minister. The minister ultimately consents or assents to it and goes to the cabinet. Now, it was expected that in the cabinet there will be discussion about that. I'm sorry, I'm saying the... Then in cabinet, normally it is passed without any discussion or any suggestions are taken. It goes to the law department, the legislative department. There it is vetted. The drafting of the law, which is the major sort of area before the law is made, is one of the most, at least in the North India I know, is definitely far from being, desirable. There, a comma or a stop or even a word, it is put even by some retired officials who are there, who are called from their houses because they are experienced in it. And on that drafting, the best of legal brains in the High Courts, the Supreme Court, the judges or the lawyers, they discuss about it. So the drafting part is absolutely dismal. Then it comes to the House. Now in the House, the present scenario is after 70s, the debate on legislation has completely diminished, dwindled. Because till 70s or 80s, till the House was mosaic,
was not very mosaic, I mean, when the people. Now we have MLA from the last nook of the society. He does not understand the nuances or intricacies of law. So basically, he's not interested in the debate on legislative piece. In the assembly of 403 MLAs of UP, only 3 or 4 MLAs are able to discuss about the provisions of law. So that's not possible. So as was suggested, some other mechanism has to be developed. There should be some standing committees. Secondly, the practical problem is that the bill is sent to the House just maybe a day before. It cannot be circulated even properly among the legislators. So that part of process needs to be corrected. Otherwise, the law can never be discussed, or people will not even talk about the SOP, the statement of purpose of law and things like that. So the process is marred there. And this is the practical aspect which one has been seeing for a long time. Secondly, after the law is made, it goes to the governor, and the governor naturally will sign. It's very rarely in certain provisions of the Constitution, Article 200, that they sends it to the center or holds it or whatever. So that is the basic problem. So legislators are actually pressured because of the constituency. They are more concerned about the roads, the transformers, the electricity, the water problems and things like that. They have to return to the House. So they are more, and they will use that portion of the rules of procedure where there are notices, those instruments which are basically directly connected to the public interest or the immediate public interest. So that is the problem. This is one thing about these things have to be taken care of, otherwise the law will remain the way they are, especially in the northern part of India, which I know what's happening. Maybe things are better in the southern part because the quality of legislators is better this side. Secondly, the adjournment, because I was in the judicial service for some time. State is the biggest litigant. Adjournments are sought by the state councils more often than the private councils. The laws of procedure need a great change. The appeals should not go in every aspect, as has been said about. So thank you very much for giving me time. And justice we impart according to law, not the justice is done by Almighty, but whatever be the negligence has to be done. Thank you so much. Thank you. We'll just close in 5 minutes. Let me make a few comments. You talked about Singapore. Let me give my perspective on the global legislative thing. What I found was that when the English came, we got better legal system than England. Because it is like if you have a house somewhere and you're building a new house, you want to do better than what you're doing. So when they came, for them, India was not something different, right? It was a colony, it was part of the whole. So they refined their legal system and gave it to us more codified. English law was all unwritten and precedent-driven, whatever it is. So we got better legal system, and the same system was exported to Burma, to Singapore, to Aden, to many other countries. So even Section 420 in Singapore is still Section 420. As you said, in Penal Code, Income Tax Act, a lot of things were same as in India. In fact, they are implementing them better. What I have found today is that in England, thought leadership has gone down substantially. I find research work done in the US is far better than in England. Okay. By and large, I'm not being judgmental here, I'm not trying to. But when I look at the papers written in the US are very different. Also futuristic things. European Union is still doing good job, okay. But at the same time, I think thought leadership has actually gone to the US. And that really is influencing all the laws. Today, if you see our laws relating to new technologies, new development, we all look at what is the law in the US, right? Now, India has an opportunity to be a thought leader, and we can do a lot. One thing which we found was that to do research in India is a lot less expensive than in the US. I would welcome you to our research campus sometime if you are interested, just half an hour from Taj Mahal Hotel. But idea is to look to the future and see what are our problems, what are our philosophies, our ethos and stuff like that, and develop new ideas, theories, but that is the job of universities. So I think we should have in the university thought leadership section where you start looking to the future. First question, do we need to redefine democracy? Because everybody has his own interpretation of, even though everybody may not agree, somewhere we will agree to disagree or whatever, but we have some elements so you can objectively look at, of course everything is objective. But broad principles, as I mentioned, democracy, rule of majority is a common answer.
but where does minority stand? Okay, where does other, special situations remain? How do you combine democracy with speed? Because that is the biggest challenge. Democracy is considered like delay, right? So a university, I think it is very important. Second point is that every law school or every university must have one course on legislative drafting. We do not have, I believe, I don't know, do you have section on legislative drafting? No. Correct? So that is a very important part because all of these people go and work somewhere. And our drafting has gone from bad to worse. So well-intended legislation gets drained off in the bad, and therefore bad implementation, bad other things, whatever you want to call. So whole ecosystem gets a little skewed, and that would be my, suggestion. As far as today's event is concerned, thank you so much for making it. But if we can just take 3 or 4 things, can we start some articulation on what is democracy, either defined or described, whichever way you can say it means or it includes, I do not know. What are our thoughts? Because if we do that, in the next phase, democracy, phase of evolution, when netocracy comes, presumably, okay, because technology is not going to wait for government changes, okay. It is going to drive governments, So if changes happen the way in which perhaps we envisage, you don't know the future, it may be. So, at least there is some direction to thinking, what is it, what are the ails? 930 was the year when first representative parliament happened in Iceland, right? 1100, 1200 years have gone. Can we refine models? Okay. Or we have to go back to basics like Athenian democracy, but at the same time, curtail the ills of the representative. What is the role of MPs and MLAs? Can we have some conversation on that? I think those are the questions which we can perhaps take 3, 4, 5 questions. We can work around and re-articulate our position on that. That would be hopefully helpful. Is that okay? So we come up with small 2-pager because everybody is so busy. No, 1 page very easily read. 1 extra mile people will walk, but not more than 2 pages. But let us articulate some question that what is democracy? What is citizenship in the coming years? Okay. What is the future of state sovereignty? Because everything links, and as Suril mentioned, today how many of us think about rights of refugees? The plight is very bad, and all countries have become so territorial that we forget the basic human element. So we have to include them in the citizenship charter. We cannot say they are not citizens, therefore don't care for it. Of course, some movement has happened. Also things like human rights. I believe today we are talking a lot about climate and ESG and other things. They are new value creators for businesses. Next 7 to 15 years, I believe human rights integration into business, modern day slavery, all those things will also impact the ecosystem. And that is where we'll need new, I don't want to call regulations or otherwise, but some ecosystem so that we integrate and have better, environment for the future. I think I'll stop here for a moment, but you all have been very generous in spending Saturday morning. Thank you so much. Really appreciate. Big round of applause to you all. Thank you. Thank you very much. Thank you, Nishit sir, for the moderation and all the esteemed speakers for their inputs. I would also like to welcome the Executive President, the visionary leader, and the convener of the National Legislative Conference, Bharat, Shri Rahul Karat sir. He's here with us right now. Can we please have a huge round of applause for sir? I just want to know, final word is yours, sir. So all the respected senior lawyers and from the judiciary, Nishit bhai, a few days before I said to him that this is one very important idea which we have been working last 20 years, the first school of the country to develop the future politicians, MIT School of Government.
we established, Mr. T.N. Session. That time I requested him. And I said, can we have one school for political leadership? And can you be the chairman for the school because you have a name and fame? And that journey started. एकच मिनिट कॅमेरे वाले 2 मिनिट मला बाहेरचं आहे दिस. And with that journey further, to take that idea for good governance, democracy, leadership development, we started the youth parliament movement called as Bharati Chhatra Sansad. Now various states, government of India, the youth parliament last 10 years, this institution has promoted sensitizing the youngsters, our demographic dividend, to get into public life. And we have been telling all the time that let educated people must come in public life. We all shy away from public life, particularly politics. We have a lot of, we are averse कि नहीं ये सब चोर और उचक के नालायक लोग हैं, ये हम white collar लोगों की. तो how do we really change this perception? And that is a mission which I started in the year 2005, and further the Students' Parliament, National Women's Parliament, empowering the women for participatory democracy, and so many other initiatives. And 3 years before I shared this idea with Prithviraj Chavan ji and Venkaiah Naidu ji, I said, country has 4,500 lawmakers. There is no such convention has happened. Let us convene all these people at one place. 2,200 people registered, 1,800 people reported. Last 2 days, some 35 parallel sessions are going on, and some plenary sessions, and and many other important. Some 30 Vidhan Sabha speakers are here. And this initiative, I remember Venkaiah Naidu ji said, Rahul, अभी तक 75 सालों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बोले, because we have 100 parties. US has only 2 parties, 1 language. So they have various such forum. And if you go to Washington DC, I know you all are very elite, test of the elite of Mumbai and the country, and Lalit Bhasin Saab was also here, and lawmakers and law executor. तो मैं बोला इनका भी एक सेशन होना चाहिए. तो मैंने निशित भाई को रिक्वेस्ट किया कि आप कुछ चुनिंदा लॉयर्स को जो इन सब चीज़ों में beyond their profession, naturally we all have very precious time constraints, and with that spirit, I think this particular session is very, very important, and it is coming on the record. And I was not sure that how and what way, how many number of MLAs are going to come, but huge participation and very engaging. Some of the halls and the other facilities what we have created, we requested national integration message also we wanted to give. आपका जल लाइए, मिट्टी लाइए, पानी लाइए. तो बहुत कुछ चीज़ें तो लोगों ने मिट्टी लाई, उनकी मिठाइयाँ भी लाई है. तो बियॉन्ड पार्टी लाइन की पार्टी से उठकर दिस MLAs they need to come and they need to speak here. So that was appeal with the patron Sumitra Mahajan ji, Meera Kumar ji, Shivraj Patil ji, the former 4 speakers, and of course Manoj Joshi ji, health is not well, here is in Mumbai. So what a good fortune, these 4 patrons, and they lend their names, and further 25 Vidhan Sabha speakers, we said come on this board, and they all accepted graciously the request. And what Venkaiah ji said exactly, बोले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से राहुल शायद वहाँ कांग्रेस कर रहा है तो बोलेंगे ये कांग्रेस का कुछ एजेंडा है, बीजेपी. तो आप न्यूट्रल है, यू आर नो एफिलिएशन टू पार्टी, एंड दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस स्टोरी, बिकॉज आई रिक्वेस्टेड निशित भाई दैट कि पोस्ट इवेंट, बिकॉज it is all the time, it is complementary. When anything of such sort is building up, sometime ideas, पर्सन व्यक्ति छोटा हो जाता है, आइडियाज़ बड़े हो जाते. तो वैसे मुझे वो सब MLAs में जा रहा हूँ जहाँ पे आपने बहुत अच्छा किया, तो मुझे जितना वो बोल रहे हैं उतना मुझे ज़्यादा प्रेशर आ रहा है. तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये इस पर्टिकुलर ग्रुप को कि आप अगर इस विषय में थोड़ा गंभीरता से, इलेक्शनरिंग के बारे में, गवर्नमेंट फंडेड इलेक्शन होने चाहिए क्या, कितनी सारी समस्या है. एंड वी नो दैट देयर इज़ डेफिनेटली in every field there are corrupt, good and bad people are there, but और इसका पूरा मतलब जो सिस्टम और स्ट्रक्चर एंड सोसाइटल पूरा ट्रांसफॉर्मेशन का लॉ, एक ये बहुत बड़ा लॉ में फिलोसफी. उस दिन मुझे निशित भाई ने मैं सोचता रहा, बोले द फिलोसफी एंड लॉ इज सेम राहुल. सो देयर इज अ फिलोसफी का और लॉ का क्या रिश्ता है. तो आई हैव लास्ट 1 or 2 years before I had little chat, 4 years before I met him, and there are many such great minds beyond their profession who take interest in academic, and I appeal and request all of you कि आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट लेके आने वाले समय में, ये 3000 पन्नों की इसकी वेबसाइट है nlcbharat.org, एंड हमारा पॉलिटिक्स का कल्चर भारत का जो बदलने की भूमिका से ये ऑर्गेनाइजेशन आने वाले समय में, मुझे लगता है जो आज पिछले 2 दिन से जो एंगेजमेंट यहाँ पे रही है, ऊपर भी जो जिस तरीके का ये रहा, तो सुमित्रा ताई महाजन, शिवराज पाटिल जी, मीरा कुमार जी, उनके अध्यक्षता में इतनी सारी कॉन्फ्रेंसेस उन्होंने भी लोकसभा के अंतर्गत की है. अपनी विधानसभाओं के सेल, लाइब्रेरीज, मतलब ये मतलब मुझे दुख है कि वो इतने जो वाइब्रेंसी होनी चाहिए, और वहाँ पे तो बहुत कुछ अच्छा हुआ है, लेकिन बहुत कुछ अच्छा हो सकता है. 75 साल
अभी अमृतकाल का भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने मैंने बोला CPA, Commonwealth Parliamentary Association. Today also we are beating the drums. Yes, good. That system has definitely promoted beautifully so far. It has helped us. But after 75 years, can we have our own CPA or Interparliamentary Union for that matter? I'm sure many of you know this 150-year-old body in Geneva started by 2 members of parliaments. And आगे चलते पूरे वर्ल्ड के पार्लियामेंटेरियंस का ये बॉडी बना, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन. ऐसे बहुत सारे बॉडीज़ वर्ल्ड वाइड इस तरीके से काम करते हैं. आप ये सब चीज़ों को जानते हैं और मैं समझता हूँ कि NLC आने वाले समय में अपने भारत का स्वदेशी एक तरीके का ऐसा एक इंस्टीट्यूशन, और वो इंस्टीट्यूशन बनाना है तो आप सब लोगों को मैं अपील करता हूँ कि मतलब ये किसी एक व्यक्ति या इंस्टीट्यूशन, तो इसीलिए मैं मेरे सभी लोगों को इसको एक डेमोक्रेटाइज करके इसको कैसे इवॉल्व, इसका एवोल्यूशन हो, इसके लिए मैंने आपको सबको विनंती की निशित भाई के द्वारा. मैं बोला सर मेरे पास बैंडविड्थ नहीं, अगर आप इसमें बहुत प्रेशर था ये बाकी के लोग कैसे ये करें. बट निशित भाई मैं धन्यवाद करता हूँ आपका कि आप इस विषय में गंभीरता से आपने इसके बारे में ये किया. आवर फैमिली फ्रेंड मिस्टर निकम, अनिकेत, आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू हियर. And some of the faces I can see here, but सगळ्यांना नमस्कार मनापासून. Thank you so much. Thank you. एखादा फोटो घ्यायचा का? Can we request for a group photograph? We have documented 1 hour story of 800 MLAs in the last 2 days. 100 statues we have created, like various political leaders. We have kept various 100 cameras. And इनके जो ट्रेड्स और इनकी जो मतलब आप भारत के 150 करोड़ आबादी
चलन बनारस अंक से है। ये अंक जयपुर अंक। मैं यहाँ पर संविधान की अच्छाइयाँ गिनाने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे। और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे होंगे। इसलिए जनता और उसके राजनीतिक दलों की भूमिका को संदर्भ में लाए बिना संविधान पर कोई भी निर्णय देना या कोई भी टिप्पणी करना मेरे विचार में व्यर्थ होगा। धन्यवाद। Service of India means the service of the millions who suffer. It means the ending of poverty and ignorance and disease and inequality of opportunity. ये दो नारे मैं समझता हूँ कि आज हमारे देश के लिए जरूरी है। एक जय जवान और एक जय किसान, और फिर उसी से सारे देश का एक जय हिंद का नारा लगता है। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। लोगों की आज़ादी न हो, प्रेस की आज़ादी न हो, इसको सिविल लिबर्टीज कहते हैं, शहरी आज़ादियाँ वो लोगों की न हो, तो चाहे बेसिक डेमोक्रेसी कह लीजिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कह लीजिए, सोशल डेमोक्रेसी कह लीजिए, पीपुल्स डेमोक्रेसी, वो सब नाम है। Democracy itself is different in every single country, even of the West. So each country has to find what is most suitable. Now we want a democracy which makes the people's voice heard, but we have to ensure that it's not just a section of the people. And that is why after much argument and so on, we did opt for full adult franchise, and we are now taking democracy down to the village level with our elected village councils. बजे सरगम हर तरफ से गूंजे बनकर देश राग, देश राग।
A new chapter of history is about to be written. India, one of the world's largest democracies, is set to create a historic moment at the first ever National Legislators Conference Bharat in Mumbai. Under the patronage of former honorable speakers of the Lok Sabha, Shrimati Sumitra Mahajan ji, Dr. Meera Kumar ji, Shri Manohar Joshi ji, and Shri Shivraj Patil ji. This aspirational ecosystem will witness the coming together of 2,500 plus MLAs and MLCs from all the states and union territories at the Bandra Kurla Complex, Mumbai from 15th to 17th June 2023. The NLC Bharat will be a one-of-a-kind opportunity for different political parties to achieve solutions to chronic problems and make Bharat stronger. For seamless event experience, there will be a dedicated liaisoning officer managing end-to-end hospitality and the NLC Bharat app for easy access to information. The platform will house numerous academic experiences with 4+ plenary sessions, 80+ parallel sessions, Dr. APJ Abdul Kalam Innovation Expo, showcasing 75 best practices, promoting grassroots innovation startups, taking inspiration from Dr. Raghunath Anant Mashelkar and Dr. Anil Kumar Gupta, along with unique engagements like Garden of Democracy, Temple of Democracy, an experiential moment with Songs of the States, and a historic documentation of success stories through the lens of participating MLAs and MLCs, making it nation's biggest ever recorded journey of individual legislators. The conference will also serve an unforgettable experience and magnificent display of diversity through the grand cultural evening and ramp of democracy. Come, join us for the first ever Mahasangam of all the elected legislative members at the National Legislators Conference Bharat from 15th to 17th June 2023 at the Geo World Convention Center, Mumbai. Together towards New Bharat. Jai Hind!
आजादी की पहली लड़ाई 1857 की क्रांति को भले ही माना जाता हो, लेकिन आजादी के लिए वनवासियों ने 1855 में ही झारखंड में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का झंडा बुलंद कर दिया था। 30 जून 1855 को सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में मौजूदा साहेबगंज जिले में भगनाडीही गांव में विद्रोह शुरू हुआ। इस मौके पर सिद्धू ने नारा दिया, करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। मौजूदा संथाल परगना का इलाका बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन पहाड़ियों और जंगलों से घिरा था। इस इलाके में रहने वाले पहाड़िया संथाल और अन्य निवासी खेतीबाड़ी करके अपनी जिंदगी बसर करते थे और जमीन का किसी को राजस्व नहीं देते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजस्व बढ़ाने के मकसद से जमींदारों की एक फौज तैयार की, जिसने पहाड़िया, संथाल और बाकी निवासियों से जबरन लगान वसूल करने का काम शुरू कर दिया। नतीजा, लोगों में असंतोष की भावना मजबूत होती गई। सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव और उनकी दोनों बहनों फूलों और झानों ने लोगों के असंतोष को आंदोलन में बदल दिया। 30 जून 1855 400 गांवों के करीब 50,000 आदिवासी भगनाडीही गांव पहुंचे। सभा में घोषणा कर दी गई कि अब वो मालगुजारी नहीं देंगे। इसके बाद अंग्रेजों ने सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव इन चारों भाइयों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। जिस दारोगा को गिरफ्तारी के लिए भेजा गया, संथालियों ने उसकी गर्दन काट ली। इस दौरान सरकारी अधिकारियों में इस आंदोलन को लेकर दहशत बढ़ गई। आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेजों ने इस इलाके में सेना भेज दी और जमकर वनवासियों की गिरफ्तारियां की गईं। क्रांतिकारियों पर गोलियां बरसने लगीं। आंदोलनकारियों को नियंत्रित करने के लिए मार्शल लॉ लगा दिया गया। बहराइच में अंग्रेजों और आंदोलनकारियों में लड़ाई में चांद और भैरव शहीद हो गए। प्रसिद्ध इतिहासकार हंटर ने अपनी किताब एनल्स ऑफ रूरल बंगाल में लिखा है, संथालों को आत्मसमर्पण की जानकारी नहीं थी, जिस वजह से डुगडुगी जब तक बजती रही, लोग लड़ते रहे। जब तक एक भी क्रांतिकारी जिंदा रहा, वो लड़ता रहा। इस युद्ध में करीब 20,000 वनवासियों ने अपनी जान गंवा दी। 26 जुलाई को शेष बचे दोनों भाइयों को भी भोगनाडीही गांव में खुलेआम एक पेड़ पर टांग कर फांसी की सजा दे दी। इस तरह सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव और बहन फूलों और झानों का नाम सदा के लिए भारतीय इतिहास में अमिट हो गया।
रागिनियों से सजा भारत अनोखा राग है, अनोखा राग है। भारत के इस एक तारे पे गूंजे है जो जो रागिनी, सब मिल गई एक धुन बनी। ताल में सुर अनगिनत गीत एक है, ये देश सबका देश है। क्या बोल है क्या राग है, सबका ऐसा राग है, सोहागिनियों से सजा भारत की स्वतंत्रता के लिए अनगिनत क्रांतिकारियों ने अपने जीवन को बलिदान कर दिया था। इनमें बहुत से क्रांतिकारियों की जीवन गाथा हमारे बीच बहुत कम आ पाई। उनमें से ही एक हैं अल्लूरी सीताराम राजू। इनका जन्म 4 जुलाई 1897 को विशाखापट्टनम के पौंड्रिक गांव में हुआ। माता का नाम सूर्य नारायणम्मा और पिता का नाम वेंकटराम राजू था। पिता ने उन्हें बचपन में ही क्रांतिकारी बनने का संस्कार दिया था और कहा था कि विदेशी हमें गुलाम बनाकर लूट रहे हैं। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के बाद सीताराम राजू जंगलों में लकड़ियां काटकर जीवन चला रहे थे।
उन्होंने अपनी शिक्षा के साथ साथ ज्योतिष तथा चिकित्सा का भी अध्ययन किया। 18 वर्ष की आयु में वे सन्यासी बन गए। पहली तीर्थ यात्रा के समय सीताराम राजू हिमालय की ओर गए। सीताराम राजू मां काली के उपासक थे। अपनी तीर्थ यात्रा से वापस आने के बाद सीताराम राजू कृष्ण देवी पेट में आश्रम बनाकर ध्यान व साधना आदि में लग गए। अंग्रेजों ने 1882 में मद्रास वन अधिनियम लाकर वनवासियों के वन आवासों में मुक्त आवाजाही तथा उनके पोड़ू यानी स्थानांतरित खेती यानी झूम की खेती को प्रतिबंधित कर दिया। इसे लेकर सीताराम राजू ने अंग्रेजों के खिलाफ वनवासियों का साथ दिया। 1922 में रंपा विद्रोह अर्थात मनियम विद्रोह हुआ, जिसमें अल्लूरी सीताराम राजू ने एक नेतृत्वकर्ता के रूप में भूमिका निभाई। रंपा विद्रोह महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के साथ हुआ। उन्होंने लोगों को खादी पहनने और शराब छोड़ने के लिए सहमत किया, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत केवल बल के प्रयोग से ही आजाद हो सकता है, अहिंसा से नहीं। उनके वीरतापूर्ण कार्यों के लिए ग्रामीण सीताराम राजू को मन्यम वीरुडू कहते थे, जिसका अर्थ है जंगल का महानायक। चिंगारी अब शोलों में बदल चुकी थी। संगठन लगातार मजबूत हो रहा था। जंगल में ही एक और क्रांतिकारी बीरैया दौरा ने भी अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा था। अंग्रेज बीरैया दौरा को फांसी पर लटका देते, लेकिन तब तक सीताराम राजू का संगठन बहुत शक्तिशाली हो चुका था। वो ब्रिटिश सत्ता को खुलेआम चुनौती दे रहे थे। एक दिन पुलिस जब बीरैया को हथकड़ी बेड़ी से कसे अदालत ले जा रही थी, तभी सीताराम राजू ने साथियों के साथ पुलिस की टुकड़ी पर धावा बोल दिया। गोलियों की बौछार के बीच राजू दिन दहाड़े बीरैया दौरा को छुड़ा ले गए। पुलिस को हर बार उनकी संगठित सेना के सामने पराजित होकर भागना पड़ा। उनके हथियार क्रांतिकारी उठा ले जाते थे। हालत ऐसी आ गई कि सरकार ने थानों में हथियार रखना ही बंद कर दिया। मालाबार से पुलिस बुलाई गई और वो भी राजू के दलों के सामने नहीं टिक सकी। इसके बाद अंग्रेज सरकार ने अपनी आर्मी को राजू के पीछे लगा दिया। जंगलों और पहाड़ियों के बीच अंग्रेज सैनिकों के साथ क्रांतिकारियों ने कई युद्ध किए। ब्रिटिश आर्मी को कुछ हासिल नहीं हुआ। 6 दिसंबर को आमने सामने की लड़ाई हुई। बड़ी संख्या में अंग्रेज सैनिक ढेर हुए। कई क्रांतिकारी भी शहीद हो गए। अंग्रेजों ने क्रांतिकारियों के शवों की प्रदर्शनी लगाकर क्रांतिकारियों को धमकी दी। इस बीच राजू ने पुलिस थाने से अपने कई साथियों को छुड़ा भी लिया। वहीं ब्रिटिश आर्मी ने गरीब वनवासियों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया था। झोपड़ियां तोड़ी गई और घरों को ध्वस्त कर दिया गया, पर लोग थे कि झुके नहीं। 6 मई को फिर से भयंकर युद्ध हुआ। अंग्रेजी सेना ने राजू के प्रमुख सहयोगियों को पकड़ लिया। अंत में 7 मई 1924 को अल्लूरी सीताराम राजू भी उनकी पकड़ में आ गए। अंग्रेजों ने उन्हें पेड़ से बांध दिया और सार्वजनिक रूप से गोलियों से भून दिया। शूरवीर राजू को निशस्त्र मारा गया। 3 दिनों तक राजू का शव पेड़ से बंधा रहा। अल्लूरी सीताराम राजू की मां सूर्य नारायण अम्मा ने संस्मरणों में इस अमर बलिदानी पुत्र की कहानी लिखी। इस तरह लगभग 2 सालों तक ब्रिटिश सत्ता की नींद हराम करने वाला ये वीर मातृभूमि की गोद में चिर निद्रा में सो गया।
मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। सुर की नदियां हर दिशा से बह के सागर में मिले, बादलों का रूप लेकर बरसे हल्के हल्के। நம் இருவரின் சுரமும் நமதாகும். திசை வேறானாலும் ஆழிசை ஆறுகள் முகிலாய் மழையாய் பொழிவது போல் இசை நம் இசை. సరితలు కులుకుతూ సొంపుగా కడలిలోకే చేరగా మబ్బులై పైకి తేలి కురిసే చల చల్లగా. నీ స్వరము నా స్వరము మన స్వరమై మ్రోగెనులే. నీ స్వరము నా స్వరము మన స్వరమై మ్రోగెనులే. तेरा सुर मिले मेरे सुर देना, मिलके बने एक नवा सुरताल. सुरदा वगदा दरिया सागर बिच मिले, बदला दा रूप लेके बरसे हाले हाले. সুরের নদী নিরবধি এসে মেশে সাগরে, বর্ষার রূপে অপরূপে ঝিরি 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 পরশে. তোমার সুর মোদের সুর সৃষ্টি করুক সুর, মিল হয় হুর হবারে, সৃষ্টি ওই কথা. তোমার আমার স্বরর মিলন সৃষ্টি করি চালো আই কতন. মিলে সুর মেরা তোমারা তো সুর বনে हमारा. मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, तो सुर बने हमारा. స్వర సిరిది నప్పనిమ్మదు, ఆ స్వరవాగలి నప్పెల్లరదు. ಸ್ವರದ ಸರಿತ ದೆಸೆಯಿಂದ ಸರಿತೆ ಹರಿದು ಸಾಗರವ ಮೇಘವಾಗಿ ಸುರದಿದೆ ಹನಿ ಹನಿಯಾಗಿ. ನನ್ನ ಧ್ವನಿಗೆ ನಿನ್ನ ಧ್ವನಿಯ ಸೇರಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯ. സ്വരഗംഗ എല്ലാ ദിശയിൽ നിന്നും ഒഴുകി സാഗരത്തിൽ ലയിച്ചു. മേഘമായി
A very good afternoon and welcome to all the dignitaries for this very, very special and valedictory session of the first National Legislators Conference, Bharat. I'm sure we all are equally excited to experience the pinnacle moment of this gathering, which is first National Legislators Conference. And I'm really happy to share with you that in just few moments from now, we will have the presence of Honorable Governor of the state of Maharashtra, Shri Ramesh Baisji, Honorable Chief Minister of the state of Maharashtra, Shri Eknath Shindeji, Honorable Deputy Chairman of Rajya Sabha, Shri Harivanshji, Honorable Deputy Chief Minister and former Chief Minister of the state of Maharashtra, Shri Devendra Fadnavisji, Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawantji, Honorable Speaker of Maharashtra Legislative Assembly, Advocate Rahul Narvekarji, our patrons, Shri Shivraj Patilji, Madam Sumitra Mahajanji, and Dr. Meera Kumarji. It is going to be indeed a very, very beautiful moment that we are going to experience in few moments from now. नमस्कार, आप सबको एक बार फिर से और बहुत स्वागत है। ये वो सत्र है जो पिछले 2 दिन के बाद एक तरह से अब विदा का सत्र, जिसे कहते हैं वैलेडिक्टरी सेशन इंग्लिश में, जिसको आप कहते हैं, वो विदाई का समय आया है। और हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने पिछले 3 दिनों में अब तक बहुत सारी बातें एक दूसरे से की होंगी, बहुत सारे विचारों का आदान प्रदान हुआ होगा और अलग अलग राज्यों से आए हुए हमारे तमाम विधायक जो हैं वो एक दूसरे से मिले होंगे अपनी अपनी राजनीतिक विचारधारा के ऊपर जाकर। और हमें उम्मीद यही है कि अब यहाँ से बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे मित्र बनाकर जाएंगे। आप सबका एक बार बहुत स्वागत है हमारे इस आखिरी सत्र में आज के दिन का। तो राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन जो पहला ऐसा अनोखा विधायक सम्मेलन हुआ है, ऐतिहासिक सम्मेलन है, जहाँ पर पूरे भारत के अलग अलग राज्यों से विधायक यहाँ पर आए हैं, स्पीकर्स आए हैं और तमाम विशिष्ट अतिथि हैं। तो आप सबका बहुत सम्मान और बहुत स्वागत है एक बार फिर से। And that reminds me a very, very important thing, Nagmaji, that I should share with all these dignitaries. I'm sure you would have made new friends. I hope you have had discussions with honorable MLAs and MLCs from other states, other parties, other ideologies, and I'm sure you would have made new friends. To formally put structure to this friendship, we are happy to announce that we have made an arrangement for signing of MOU, Memorandum of Understanding, between 2 MLAs as part of NLC Bharat. The venue for this signing ceremony is on the Pavilion 2, that is on ground floor, Pavilion 2, and this particular moment would be called as Vikas Milan. So this process of MOU signing, which will have multiple benefits to both the MLAs, honorable MLAs or MLCs, that they will be able to share best development practices, they will be able to exchange ideas, developmental, I would say, innovations that they have had in their own constituencies. So in simple words, 2 friends could be from same party, different party, or same constituency, different constituency. You are getting into an academic exchange of ideas through the formal Memorandum of Understanding. So we would like to request, motivate all of you, all the honorable MLAs and MLCs, those who are here, to please get into such kind of MOU with another friend who you have created in this National Legislators Conference. Please, after this session is over, before we leave this venue, you all are invited to please go to ground floor in Pavilion number 2, and there you will find a board of Vikas Milan. Please go there, sign a MOU with your friend who could be from other state, other constituency, who could be speaking another language. So get into an MOU, so it will be a permanent bond of friendship, a formal bond of friendship between 2 honorable MLAs or MLCs, where you'll be able to exchange ideas, you'll be able to exchange innovative, I would say,
innovative concepts to solve people's problems. बिल्कुल अनोखा MOU होगा ये। आपने बहुत सारे MOU साइन किए होंगे, दस्तखत किए होंगे, लेकिन ऐसा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पहले नहीं हुआ होगा। सही मायने में अंडरस्टैंडिंग यानी एक दूसरे को समझकर जो आप MOU साइन करेंगे। और जैसा गौतम जी ने अभी कहा कि आप अलग अलग भाषा बोलते हैं, अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं, तो आपने अगर दोस्त बनाए हैं जिनको जो अलग हिस्से से हैं, जो अलग भाषा बोलते हैं, उनके साथ जुड़िए, मिलिए और आप दोनों मिलकर एक MOU साइन कर सकते हैं। आपको डिटेल्स बताई हैं गौतम जी ने। इस जगह पे आप इस कार्यक्रम के बाद जाएंगे, आखिर में जाएंगे, लेकिन आप एक जगह से हो सकते हैं, अलग अलग जगहों से हो सकते हैं। गौतम जी ने सारी बातें को अंग्रेज़ी में बताई, पर जैसा हमने कहा कि तमाम जगह से लोग आए हैं, तो वो लोग जो हिंदी बेहतर समझते हैं उनके लिए इस बात को मैं दोहरा रही हूँ कि आप कोई भी दो विधायक जो हैं एक MOU साइन कर सकते हैं, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आप जैसे मैडम वहाँ बैठी हैं, आपने कोई दोस्त बनाया होगा, तो आप जाएं उनके साथ बैठ के और एक फॉर्मली औपचारिक तरीके पर एक MOU साइन करते हैं, तो वो एक आप जो विचारों का आदान प्रदान हुआ है उस पर एक समझौता होगा जो शायद पहली बार होगा। बहुत ही अनोखा है ये पूरा कॉन्सेप्ट, तो ज़रूर इसका हिस्सा बनिए। इस कार्यक्रम के बाद में जाकर आप ये काम कर सकते हैं कि एक MOU पे दस्तखत कर सकते हैं और इसका एक नाम है विकास मिलन। विकास मिलन, बहुत सुंदर नाम है विकास मिलन। तो आप तमाम लोग इसके बाद जाकर इस ज़्यादा संख्या में जाइए और इसका हिस्सा बनिए। बिल्कुल। And I'm sure many of you would be excited, or I'm sure they would be willing to become part of Vikas Milan. So we all would be waiting for you after this session is over in the pavilion number 2, which is in Expo Zone ground floor. In few moments from now, we will start with the proceedings of the valedictory session. Thank you very much. And thank you for your patience. बहुत जल्दी ही ये सत्र शुरू होने वाला है। भारत की स्वतंत्रता के लिए अनगिनत क्रांतिकारियों ने अपने जीवन को बलिदान कर दिया था। इनमें बहुत से क्रांतिकारियों की जीवन गाथा हमारे बीच बहुत कम आ पाई। उनमें से ही एक हैं अल्लूरी सीताराम राजू। इनका जन्म 4 जुलाई 1897 को विशाखापट्टनम के पौंड्रिक गांव में हुआ। माता का नाम सूर्य नारायणम्मा और पिता का नाम वेंकटराम राजू था। पिता ने उन्हें बचपन में ही क्रांतिकारी बनने का संस्कार दिया था और कहा था कि विदेशी हमें गुलाम बनाकर लूट रहे हैं। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के बाद सीताराम राजू जंगलों में लकड़ियां काटकर जीवन चला रहे थे। उन्होंने अपनी शिक्षा के साथ साथ ज्योतिष तथा चिकित्सा का भी अध्ययन किया। 18 वर्ष की आयु में वे सन्यासी बन गए। पहली तीर्थ यात्रा के समय सीताराम राजू हिमालय की ओर गए। सीताराम राजू मां काली के उपासक थे। अपनी तीर्थ यात्रा से वापस आने के बाद सीताराम राजू कृष्ण देवी पेट में आश्रम बनाकर ध्यान व साधना आदि में लग गए। अंग्रेजों ने 1882 में मद्रास वन अधिनियम लाकर वनवासियों के वन आवासों में मुक्त आवाजाही तथा उनके पोड़ू यानी स्थानांतरित खेती यानी झूम की खेती को प्रतिबंधित कर दिया। इसे लेकर सीताराम राजू ने अंग्रेजों के खिलाफ वनवासियों का साथ दिया।
1922 में रंपा विद्रोह अर्थात मनियम विद्रोह हुआ, जिसमें अल्लूरी सीताराम राजू ने एक नेतृत्वकर्ता के रूप में भूमिका निभाई। रंपा विद्रोह महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के साथ हुआ। उन्होंने लोगों को खादी पहनने और शराब छोड़ने के लिए सहमत किया, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत केवल बल के प्रयोग से ही आजाद हो सकता है, अहिंसा से नहीं। उनके वीरतापूर्ण कार्यों के लिए ग्रामीण सीताराम राजू को मन्यम वीरुडु कहते थे, जिसका अर्थ है जंगल का महानायक। चिंगारी अब शोलों में बदल चुकी थी। संगठन लगातार मजबूत हो रहा था। जंगल में ही एक और क्रांतिकारी बीरैया दौरा ने भी अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा था। अंग्रेज बीरैया दौरा को फांसी पर लटका देते, लेकिन तब तक सीताराम राजू का संगठन बहुत शक्तिशाली हो चुका था। वो ब्रिटिश सत्ता को खुलेआम चुनौती दे रहे थे। एक दिन पुलिस जब बीरैया को हथकड़ी बेड़ी से कसे अदालत ले जा रही थी, तभी सीताराम राजू ने साथियों के साथ पुलिस की टुकड़ी पर धावा बोल दिया। गोलियों की बौछार के बीच राजू दिन दहाड़े बीरैया दौरा को छुड़ा ले गए। पुलिस को हर बार उनकी संगठित सेना के सामने पराजित होकर भागना पड़ा। उनके हथियार क्रांतिकारी उठा ले जाते थे। हालत ऐसी आ गई कि सरकार ने थानों में हथियार रखना ही बंद कर दिया। मालाबार से पुलिस बुलाई गई और वो भी राजू के दलों के सामने नहीं टिक सकी। इसके बाद अंग्रेज सरकार ने अपनी आर्मी को राजू के पीछे लगा दिया। जंगलों और पहाड़ियों के बीच अंग्रेज सैनिकों के साथ क्रांतिकारियों ने कई युद्ध किए। ब्रिटिश आर्मी को कुछ हासिल नहीं हुआ। 6 दिसंबर को आमने सामने की लड़ाई हुई। बड़ी संख्या में अंग्रेज सैनिक ढेर हुए। कई क्रांतिकारी भी शहीद हो गए। अंग्रेजों ने क्रांतिकारियों के शवों की प्रदर्शनी लगाकर क्रांतिकारियों को धमकी दी। इस बीच राजू ने पुलिस थाने से अपने कई साथियों को छुड़ा भी लिया। वहीं ब्रिटिश आर्मी ने गरीब वनवासियों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया था। झोपड़ियां तोड़ी गई और घरों को ध्वस्त कर दिया गया, पर लोग थे कि झुके नहीं। 6 मई को फिर से भयंकर युद्ध हुआ। अंग्रेजी सेना ने राजू के प्रमुख सहयोगियों को पकड़ लिया। अंत में 7 मई 1924 को अल्लूरी सीताराम राजू भी उनकी पकड़ में आ गए। अंग्रेजों ने उन्हें पेड़ से बांध दिया और सार्वजनिक रूप से गोलियों से भून दिया। शूरवीर राजू को निशस्त्र मारा गया। 3 दिनों तक राजू का शव पेड़ से बंधा रहा। अल्लूरी सीताराम राजू की मां सूर्य नारायण अम्मा ने संस्मरणों में इस अमर बलिदानी पुत्र की कहानी लिखी। इस तरह लगभग 2 सालों तक ब्रिटिश सत्ता की नींद हराम करने वाला ये वीर मातृभूमि की गोद में चिर निद्रा में सो गया। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। सुर की नदियां हर दिशा से बह के सागर में मिले, बादलों का रूप लेकर बरसे हल्के हल्के। हल्के
இசைந்தால் நம் இருவரின் சுரமும் நமதாகும். திசை வேறானாலும் ஆழிசை ஆறுகள் முகிலாய் மழையாய் பொழிவது போல் இசை நம் இசை. స్వరసరితలు కులుకుతూ సొంపుగా కడలిలోకే చేరగా మబ్బులై పైకి తేలి కురిసే చల్లగా. నీ స్వరము నా స్వరము మన స్వరమై మ్రోగెనులే. నీ స్వరము నా స్వరము మన స్వరమై మ్రోగెనులే. तेरा सुर मिले मेरे सुर देना, मिलके बने एक नवा सुरताल. सुरदा वगदा दरिया सागर विच मिले, बदला दा रूप लेके बरसे हाले हाले. সুরের নদী নীরবধি এসে মেশে সাগরে, বর্ষার রূপে অপরূপে ঝিরি 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 বরষে. তোমার সুর মোদের সুর সৃষ্টি করুক সুর, মিল হয় হুর হবারে, সৃষ্টি ওই কথা. তোমার মোর স্বরর মিলন সৃষ্টি করি চালু আই কতন, মিলে সুর মেরা তোমারা তো সুর বনে हमारा. मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, तो सुर बने हमारा. तो सुर bane hamara. Such a beautiful creation, and I'm sure that each one of you sitting here today will have some or the other memories associated with this video, with this song. Few people create ambitions, they have some goals, they have some objectives, and for their entire lifetime, they keep chasing that dream and they keep working towards that dream. Here is one person about whom I would like to say a few words. The founder of MIT Group of Institutions, revered Professor Dr. Vishwanath D. Karad sir. The person who saw one dream, who lived that dream. A person who saw and who thought that there should be something permanent, there should be something that talks about world peace, and that gives a message of world peace to the entire world. He kept on working on this idea for the lifetime. Believe it or not, but he worked on this idea for 2 long decades. 20 साल उन्होंने इस concept पे काम किया, and the outcome of this relentless work is near the city of Pune. There is a wonderful marvel that he created, which is known to the world by the name of St. Ganeshwara World Peace Dome. A dome which is the largest dome in the world, and it stands as a monument to the world peace, giving a strong message to entire humanity. We have the presence of revered Professor Dr. Vishwanath Karad sir here among us today. I request everyone to give a round of applause to the great personality who stands for the world peace. Thank you, sir. Thank you very much for your presence, your blessings to all of us. Thank you. My friends, in few moments from now, we are going to begin with the valedictory session of first National Legislators Conference. Thank you very much.
मैं भारत का लोकतंत्र बोल रहा हूं। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। जब दुनिया सो रही थी हम तब जागे थे और नियति से मुलाकात की थी। Long years ago, we made a tryst with destiny. आजादी के तुरंत बाद हमने अपने संविधान को सर्वोपरि मानकर लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था को अपनाया, यानी आम जनता के जरिए चुने गए जनप्रतिनिधियों द्वारा संचालित शासन चुना। परिणाम स्वरूप आज भारत न केवल विश्व का सबसे बड़ा बल्कि सबसे प्रभावी लोकतंत्र है, क्योंकि लोकतंत्र भारत का स्वभाव रहा है। यह वह देश है जहां हजारों साल पुराने मंदिरों की दीवारों पर राइट टू रिकॉल जैसा आधुनिक राजनीतिक विचार अंकित है। यह वह देश है जहां सामाजिक न्याय पर आधारित विश्व की पहली संसद यानी अनुभव मंटपम सक्रिय थी, जबकि विश्व पटल पर इस समय तक अनेक देश जन्मे भी नहीं थे। आज भारत दुनिया में सबसे ज्यादा निर्वाचित जनप्रतिनिधियों वाला देश है। देश की संसद से लेकर पंचायतों तक कुल मिलाकर लगभग 35 लाख जनप्रतिनिधि भारत के लोकतंत्र को ताकत दे रहे हैं, जिन्हें देश के लगभग 100 करोड़ मतदाता चुनते हैं, जो अनेक देशों की कुल आबादी से भी कहीं ज्यादा है। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? सारे जहां से अच्छा। पिछले 8 दशकों में हमारे लोकतंत्र में अनेक उतार चढ़ाव आए। ऐसे में यह उचित ही है कि हम पीछे मुड़कर देखें और क्या खोया क्या पाया इस पर विचार करें। भारतीय समाज की विविधता भरी प्रकृति और इसके सामने आने वाली समस्याओं ने राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय स्तर पर कई पार्टियों को जन्म दिया। भारतीय राजनीति ने यह तो स्वीकार किया कि क्षेत्रीयता लोकतांत्रिक राजनीति का अभिन्न अंग है, मगर क्षेत्रीय आकांक्षाओं को अलगाववाद की राह पर चलने का मौका नहीं दिया। आजादी के बाद देश आज जहां पहुंचा है उसमें इस देश के सभी प्रधानमंत्रियों का योगदान है। इस प्रकार वैचारिक मतभेद होने के बावजूद भी अधिकांश राजनीतिक दलों ने अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय व लोकहित के विषयों पर मुखर रहते हुए भारतीय लोकतंत्र में अपनी सशक्त भागीदारी दर्ज की तथा भारतीय राजनीति को नए आयाम दिए। आज जब हमारी वर्तमान आबादी 142 करोड़ हो गई है, लोकतंत्र एक विडंबना के दौर से गुजर रहा है। भारत समेत विश्व का मध्यम और युवा वर्ग वर्तमान राजनीति और राजनेताओं को गंभीरता से नहीं लेता, जो चिंताजनक है। जबकि धरातल पर बदलाव लाने के लिए राजनीति सबसे सशक्त माध्यम है। यहाँ पर संविधान की अच्छाइयाँ गिनाने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे, और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे हों। इस चुनौती को ध्यान में रखकर ही वर्ष 2005 में MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट की स्थापना की गई, जो युवाओं को राजनीतिक प्रशिक्षण देने वाला भारत का पहला संस्थान बना। मगर MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट के संस्थापक श्री राहुल कराट के लिए यह एक पड़ाव मात्र था, मंजिल नहीं। उनकी सोच का अगला चरण बना वर्ष 2011 में प्रारंभ भारतीय युवाओं का सबसे बड़ा समागम यानी भारतीय छात्र संसद, तत्पश्चात राष्ट्रीय महिला संसद और वर्ष 2018 में आयोजित राष्ट्रीय सरपंच संसद। इस चिंतन यात्रा का चरमोत्कर्ष बना राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन भारत 2023, जो महाराष्ट्र राज्य के नेतृत्व के सहयोग से मुंबई में आयोजित हो रहा है। यानी देश के सभी राज्यों की निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का सबसे बड़ा महाकुंभ, जिसे देश के भूतपूर्व लोकसभा अध्यक्षों और सभी राज्य विधानसभाओं का मार्गदर्शन मिला। राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन योजना को यथार्थ से, नीति को निर्माण से और अशांति को विश्व शांति से जोड़ने वाली अहम कड़ी साबित होगा। सूचना, अनुभव, ज्ञान के आदान प्रदान के माध्यम से यह एक
गैर राजनीतिक संस्था का रूप धारण करके सहयोग, पारदर्शिता और भागीदारी को बढ़ावा देते हुए देश के सभी विधानमंडलों और नागरिक समाज के बीच परस्पर जुड़ाव में सुधार करेगा। यह एक ऐसे सेफ्टी वॉल्व के रूप में काम करेगा जो देश के लोकतंत्र को संवादहीनता और नकारात्मक राजनीति से बचाएगा। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। हमें यकीन है कि यह मंच भारतीय राजनीति में समन्वय की एक नई इबारत लिखेगा और सुशासन और भारतीय लोकतंत्र को और अधिक शक्तिशाली बनाने के अपने दीर्घकालिक लक्ष्य में सफल होगा। जय हिंद, जय भारत। भारत की स्वतंत्रता के लिए अनगिनत क्रांतिकारियों ने अपने जीवन को बलिदान कर दिया था। इनमें बहुत से क्रांतिकारियों की जीवन गाथा हमारे बीच बहुत कम आ पाई। उनमें से ही एक हैं अल्लूरी सीताराम राजू। इनका जन्म 4 जुलाई 1897 को विशाखापट्टनम के पौंड्रिक गांव में हुआ। माता का नाम सूर्य नारायणम्मा और पिता का नाम वेंकटराम राजू था। पिता ने उन्हें बचपन में ही क्रांतिकारी बनने का संस्कार दिया था और कहा था कि विदेशी हमें गुलाम बनाकर लूट रहे हैं। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के बाद सीताराम राजू जंगलों में लकड़ियां काटकर जीवन चला रहे थे। उन्होंने अपनी शिक्षा के साथ साथ ज्योतिष तथा चिकित्सा का भी अध्ययन किया। 18 वर्ष की आयु में वे सन्यासी बन गए। पहली तीर्थ यात्रा के समय सीताराम राजू हिमालय की ओर गए। सीताराम राजू मां काली के उपासक थे। अपनी तीर्थ यात्रा से वापस आने के बाद सीताराम राजू कृष्ण देवी पेट में आश्रम बनाकर ध्यान व साधना आदि में लग गए। अंग्रेजों ने 1882 में मद्रास वन अधिनियम लाकर वनवासियों के वन आवासों में मुक्त आवाजाही तथा उनके पोड़ू यानी स्थानांतरित खेती यानी झूम की खेती को प्रतिबंधित कर दिया। इसे लेकर सीताराम राजू ने अंग्रेजों के खिलाफ वनवासियों का साथ दिया। 1922 में रंपा विद्रोह अर्थात मनियम विद्रोह हुआ, जिसमें अल्लूरी सीताराम राजू ने एक नेतृत्वकर्ता के रूप में। We are back here to share about an important activity that will happen towards the end of this session, and that beautiful activity is called as Ekata Sutra. May I have your attention please? I'll quickly explain what is the concept of Ekata Sutra. All the volunteers, can I have 2 Ekata Sutras please? Excuse me, my volunteer friend, can I have 2 to show how exactly it's going to happen? Come here, just give me 2 please. Okay, so this is again a very, very beautiful activity which will happen. These sutra threads, just give me 2. So these threads are now given to you. Please keep them with you. Do not tie this or do anything with these threads. Okay, this thread is called as Ekata Sutra, and they are in 3 colors, of course, the color of our national flag, tricolor. So they would be given to you now. ये आप देख रहे हैं आपके पास ये एकता सूत्र अभी लेके आएंगे वॉलंटियर्स। आपको जानकारी देना ये ज़रूरी है, एक बहुत ही सुंदर गतिविधि है ये जो हम करेंगे कुछ देर के बाद, लेकिन पहले आपको इसके बारे में जानकारी दे दें कि आप सबको जब ये मिल जाए तो इसको बहुत संभाल कर हिफाजत से रखिए, इसको कहीं गुम मत कर दीजिए, इसके साथ कुछ गांठ मत बांधिए, ऐसे रहने दीजिए। आगे बताएंगे आपको कि इसका क्या करना है। जी, exactly. And whenever we ask you or when we request you to get into the bond of solidarity, so what we are actually expecting you to do
is the person who's sitting on your left and right hand side, you are going to tie the knot with him. For example, when we ask you to do it, so Nagma ji is next to me, so I'm going to tie the bond of solidarity with her. And this is how you will get into the bond of unity, the bond of solidarity with her. So everyone who's sitting your left hand, now nobody's on my right hand side, otherwise I would have tied it with the person on my right hand side. If nobody is on your right hand side, tie with the person who's sitting behind you. But ultimately the idea is entire hall should be connected through one single network of thread. तो आप समझ रहे हैं कि ये सारा जब आप बांध लेंगे एक दूसरे के साथ में, तो हम सब लोग एक धागे में बंधे होंगे। और यही ये विचार है कि हम तमाम लोग एकता के एक सूत्र के साथ जुड़े। तो जैसे यहाँ पर ये सूत्र जुड़ा है, अब आपके बाएं तरफ जब कोई होगा उसके साथ ये सूत्र बांधेंगे, जो दाहिनी तरफ है उसके साथ बांधेंगे, और इस तरह से करके एक पूरे हॉल में जितने लोग भी बैठे हैं उनके साथ एक एक करके ये सूत्र जुड़ता जाएगा। और आखिर में ये हम सभी लोग जो हैं एक सूत्र में बंधे होंगे। तो ये है इसका मूल विचार जो है। तो जैसा आपको बताया गया है, आप सबके पास ये पहुंच रहा है, अपने पास संभाल कर रखिएगा। अलग अलग रंगों के तिरंगे के रंगों में है ये एकता सूत्र। तो फिलहाल के लिए अपने पास रखिएगा। अभी किसी से डोंट गेट इनटू द बॉन्ड ऑफ सॉलिडारिटी एज येट। वी विल लेट यू नो व्हेन यू डोंट सर वेट सर, डोंट टाई इट नाउ, अभी मत करिएगा, नॉट नाउ। एक और जरूरी बात आपको बता दे, जरूरी सूचना है, ध्यान से सुने प्लीज। कैन आई हैव एवरीबॉडीज अटेंशन हियर ऑन स्टेज? बस आपको ये जानकारी देना है कि जो धागा आपको दिया जा रहा है, जो सूत्र दिया जा रहा है, डू नॉट स्टार्ट टाइंग इट राइट नाउ. We will let you know when to do that, because it's going to be a very beautiful moment and it will be captured also in pictures, you know. So don't tie it now. Just keep it. अपने साथ रखिए. आपको बताएंगे कि ये गतिविधि कब करनी है. After the session starts and ends, towards the end we will let you know. Absolutely. Thank you very much, everyone. And once it happens, it's a very, very beautiful moment, and you will see it and you will experience it, the bond of solidarity. Now, I would like to explain and request my technical team to relay a small film made on the concept of World Peace Dome, and what exactly the creation of World Peace Dome is would be shared to you through this AV. I request my technical team to kindly relay. मैं चिरंतन विश्वात्मक ज्ञान तत्व हूं। मैं अनादि हूं। मैं अनंत हूं। काल गणना से पहले भी मैं था और आगे भी रहूंगा। विश्व का निर्माण कैसे हुआ? विश्व निर्मित की प्रक्रिया क्या थी? इस प्रचंड ब्रह्मांड का रूप कैसा है? क्यों इसमें एक ही ऐसा ग्रह है जिस पर जीव सृष्टि निर्माण हुई? इन सभी प्रश्नों का उत्तर मेरी साधना करने पर ही मिलते हैं। गत हजारों वर्षों से बुद्धिमत्ता का वरदान प्राप्त जीवों ने मेरी साधना, मेरी आराधना की है। मेरी खोज करके ही खुले हैं इस विश्व के अनेक रहस्यों के भेद। मैं एक ऐसा अक्षय तत्व हूं जो कहीं भी किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। पृथ्वी पर मनुष्य के आगमन से ही उसने ज्ञान की साधना आरंभ की। पिछले सहस्राब्दियों से पृथ्वी पर अनेक महान मानवों ने मेरे माध्यम से नए आविष्कारों को जन्म दिया, नई खोज की। इस पृथ्वी पर अनेक देश हैं, जिनमें से एक है भारत, जहां पर पिछले कई वर्षों से मेरी पूजा एवं अंतिम सत्य की खोज की गई। इस भारत देश में कितने महान ऋषि मुनियों ने, संत महात्माओं ने जन्म लिया। ज्ञान की तपस्या के माध्यम से विश्व के रहस्यात्मक तत्वों का प्रकटीकरण किया। इनमें से एक है
महाराष्ट्र में जन्मे संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज, जिनका जन्म आज से 745 वर्ष पूर्व हुआ और जिन्होंने अपने 21 वर्ष के छोटे से जीवन काल में मेरे सत्य रूप को लोगों के सामने रखा। जिस श्रीमद् भगवत गीता को ज्ञान का भंडार माना जाता है, उस भगवत गीता के अंतरंग को संत ज्ञानेश्वर जी ने केवल 16 वर्ष की आयु में भावार्थ दीपिका अर्थात श्री ज्ञानेश्वरी के रूप में मराठी भाषा में लोगों के सामने प्रकट किया। संत ज्ञानेश्वर केवल एक संत ही नहीं थे, बल्कि विश्व के अनेक रहस्यमयी सिद्धांतों, विश्वात्मक तत्वों को समस्त मानव जाति को समझाने वाले एक अत्यंत महान दार्शनिक तत्ववेत्ता भी थे। 1400 वर्षों की कठोर तपस्या से प्राप्त ज्ञान की घमंड में हिंसक शेर पर आरूढ़ श्री चांगदेव महाराज से मिलने के लिए संत ज्ञानेश्वर महाराज ने एक अचेतन दीवार को विवेक की शक्ति से चलाकर उनका गर्भहरण कर दिया था। ज्ञान तत्व की शक्ति का शायद ये एकमात्र उदाहरण है। भक्ति पंथ के उद्गाता, महान वारकरी संप्रदाय के अन्वेषक, सही अर्थ में ज्ञान के ईश्वर, जिन्हें लोग आज भी माउली अर्थात मां के नाम से संबोधित करते हैं, ऐसे संत ज्ञानेश्वर ने अपने आयु के केवल 21वें वर्ष में ये कहकर संजीवन समाधि में प्रवेश किया कि उनका जीवन कार्य अब समाप्त हुआ है। इस महान दार्शनिक संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज के नाम पर अवतरित हुआ है विश्व का सबसे बड़ा और भव्यतम गुंबद। तत्वज्ञ संत श्री ज्ञानेश्वर विश्व शांति प्रार्थना दार्शनिक संत एवं विश्व शांति ग्रंथालय एक ऐसी वास्तु जो मेरा अर्थात ज्ञान तत्व का मानो प्रतिरूप है। इस भव्य वास्तु में स्थापित हैं कुछ ऐसे महान मानवों की प्रतिमाएं जिन्होंने मेरी खोज में अपना जीवन व्यतीत किया और वास्तविक रूप को लोगों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास भी किया। 160 फुट व्यास तथा 263 फुट ऊंचे इस विश्व शांति गुंबद में स्थापित है महात्मा तथागत गौतम बुद्ध, जिन्होंने ज्ञान प्राप्ति के लिए अखंड तपश्चर्या की। यहाँ पर स्थापित हैं प्रभु ईसा मसीह, जिन्होंने प्रेम और करुणा का संदेश देकर लोगों को ज्ञान प्रदान करने का प्रयत्न किया। यहाँ पर स्थापित हैं श्री गुरु नानक देव जी, जिन्होंने कहा कि ज्ञान बातों से नहीं ढूंढा जा सकता, केवल ईश्वर कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। यहाँ पर स्थापित हैं महात्मा कबीर, बाबा बुल्ले शाह, तत्वज्ञ संत श्री तुकाराम महाराज आदि शंकराचार्य, ऐसे महान ज्ञानी सत्पुरुष डॉक्टर अल्बर्ट आइंस्टाइन, सर आइजैक न्यूटन, सर माइकल फैराडे, डॉक्टर सीवी रमन, आर्यभट्ट, ऐसे महान ज्ञानी वैज्ञानिक तथा अरिस्टोटल, सोक्रेटिस, प्लेटो, कांट जैसे महान ज्ञानी दार्शनिक इसी गुंबद में बसे हैं। एक वचनी मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम तथा धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, ये वचन देने वाले भगवान श्री कृष्ण। ये सारे ज्ञानी संत सज्जन वैज्ञानिक दार्शनिक मानव जाति को यही सीख देते हैं कि ज्ञान की पूजा ही इंसान को सुख, समाधान और शांति का मार्ग दिखलाती है। आज के युग में ज्ञान की भाषा बदल गई है। आज के विज्ञान युग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अर्थात सूचना तंत्रज्ञान, फेसबुक, गूगल, इन भाषाओं के माध्यम से सूचना का प्रसार होता है। परंतु क्लेश इस बात का होता है कि संत ज्ञानेश्वर की समाधि के 730 वर्ष पश्चात भी सही रूप से ज्ञान तत्व, निसर्ग तत्व का संदेश लोगों तक नहीं पहुंच पाया है।
सृष्टि का हर जीव दो तत्वों से बना है, वैज्ञानिक तत्व जो शरीर और मस्तिष्क से बनता है, और आध्यात्मिक तत्व जिसमें मन और आत्मा सम्मिलित है। इन दोनों तत्वों को जोड़कर जीव सृष्टि का विश्वात्मक तत्व बनता है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज का तंत्र ज्ञान केवल भौतिक सुख का मार्ग दिखलाता है, किंतु मानव को शांति तथा सुख दिलाने के बजाय रासायनिक अस्त्र, परमाणु अस्त्र, जैविक अस्त्र जैसे विनाशकारी अस्त्रों का निर्माण करने में जुटा है, जिसके कारण आज यह आशंका पैदा हुई है कि क्या मानव 21वीं शताब्दी का अंत भी देख पाएगा। मित्रों, विश्व शांति के लिए बना यह सबसे बड़ा गुंबद विज्ञान, तत्वज्ञान तथा अध्यात्म का समन्वय कराने वाली एक अद्भुत प्रयोगशाला ही है। इसका संदेश है वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात सारा विश्व एक परिवार है, और इसका बोध है एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, अर्थात अंतिम सत्य या ईश्वर केवल एक ही है, किंतु लोग जो ज्ञान प्राप्ति में लगे हैं उसे विभिन्न नामों से पहचानते हैं, जैसे कि राम, रहीम, ईसा मसीह, भगवान बुद्ध, महावीर, ज़रतुष्ट्र, गुरु नानक आदि। 12 वर्षों के अथक प्रयासों के बाद अवतरित हुआ यह संत ज्ञानेश्वर विश्व शांति गुंबद महान दूरदर्शी शिक्षाविद प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ की संकल्पना, संरचना और नियोजन के फलस्वरूप प्रकट हुआ है। महान दार्शनिक संत श्री ज्ञानेश्वर और श्री तुकाराम महाराज पर श्रद्धा रखने वाले तथा भारत माता के महान सपूत स्वामी विवेकानंद के वचनों पर अटूट विश्वास रखने वाले प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी की संकल्पना से आनंद स्थित सुंदर घाट, विश्वरूप दर्शन मंच तथा गरुड़ स्तंभ, रामेश्वर स्थित 2 धर्मों की विचारधाराओं को जोड़ने वाला विश्वधर्मी श्री राम रहीम मानवता से अति सुंदर तथागत गौतम बुद्ध विहार, भारतीय शास्त्रीय संगीत की शिक्षा देने वाली विश्व शांति संगीत कला अकादमी, विश्व शांति का संदेश देने वाला एकमेवा द्वितीय श्री विश्व दर्शन देवता मंदिर, ऐसे अनेक अद्भुत वास्तुओं का निर्माण हुआ है। गत 4 दशकों से डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ ने स्वामी विवेकानंद के वचन, विज्ञान तथा अध्यात्म विश्व दर्शन देवता मंदिर शांति निर्माण होगी, इस पर कार्य करते हुए अपनी शिक्षा संस्थाओं में मूल्याधारित वैश्विक शिक्षण पद्धति का अनुसरण किया है। विश्व के सबसे बड़े शांति गुंबद को बनाकर उन्होंने संत ज्ञानेश्वर से डॉक्टर अल्बर्ट आइंस्टाइन अर्थात अध्यात्म से विज्ञान की यात्रा को एक नया आयाम दिया है। इस आश्चर्यकारी गुंबद को देखने के बाद देश के कुछ महान हस्तियों ने अपनी भावनाएं कुछ इस तरह से प्रकट की। Look at this magnificent dome. To me, this is not just the biggest dome in the world. To me, this is the biggest idea, the biggest message to the world, which it badly needs today. We have only 2 options. Either we live together or we perish together. It is in this context, this monument will stand. Remind us that these are the people who build. 54 people, they say, are representative people. Scientists, religious leaders, social reformers. So we take inspiration from them, and they have carried the world so far. We have a long way to go. And this monument will remind us, inspire us that we have a long way to go for the humanity and to bring peace on this beautiful
planet that has been given to us. Reinforcing the old idea of Sarve Jana Sukhino Bhavantu. Will remain. Kutumbakam. The entire world is one. That is the philosophy behind this dome. And then why dome? To prevent the doom. I have been to certain parts of the world. We have seen some wonders of the world also. We read about them also. But this will be another wonder of the world, situated in Pune, Maharashtra, in India, that is Bharat. What a joy it is to be in this magnificent structure. I must congratulate Vishwanath ji. He has created a Taj Mahal of education. This is a Taj Mahal of education, the magnificent dome, all the symbolism that has gone into the four Jnana Stambhas and inside. It's quite remarkable. सन 1897 में स्वामी विवेकानंद ने यह भविष्य कथन किया था कि 21वीं शताब्दी में भारत देश विश्व में ज्ञान का दालन बन के उभर आएगा तथा विश्व गुरु बनकर मानव जाति को सुख, शांति और समाधान का मार्ग दिखलाएगा. It will emerge as a knowledge code of the whole world and will show the pathway of harmony and peace to mankind. It will become a Vishnu in the 21st century. उसका छोटा सा उदाहरण, छोटा सा सिंबल यहाँ बन गया है, ऐसा मेरा मानना है. स्वामी जी की यही भविष्यवाणी आज सत्य में साकार करने के लिए इस ज्ञान रूपी तत्वज्ञ संत श्री ज्ञानेश्वर विश्व शांति प्रार्थना सभागृह का निर्माण हुआ है, ऐसी मेरी भावना है. मित्रों, आज हम कोरोना नामक इस भयानक वैश्विक महामारी का सामना कर रहे हैं. मानव निर्मित ये विषाणु जिसके कारण संसार भर में एक भीषण सन्नाटा छाया हुआ है. मुझे आशा है कि सभी लोग इस घटनाक्रम से जागरूक होकर जीवन में अध्यात्म शास्त्र के मार्ग का अनुसरण करेंगे. यही इस विश्व शांति गुंबद का संदेश है. मित्रों, इस गुंबद के शिखर पर स्थापित देवी सरस्वती की मूर्ति यही संदेश देती है कि ज्ञान की साधना ही विश्व शांति का मार्ग बन सकती है. मित्रों, मैं आज इस विश्व रूपी गुंबद के माध्यम से संसार के सभी विद्वान, वैज्ञानिक, संत, सज्जन, शिक्षा. Well, my friends, I'm sure that you would have understood the concept and the creation of World Peace Dome. I think it calls for a big round of applause for the person who created this entire concept. And the world's biggest dome is now in India, and which is the most important moment of pride for all of us. Thank you, sir. Thank you very much for such a creation, such a marvel, which stands for the betterment of humanity. And for the said work, revered Professor Dr. Vishwanath Karat sir, has been given, bestowed upon very, very special Puraskar, which is called Vishwa Shanti Vidya Ratna Puraskar, then Samarpit Jeevan Gaurav Puraskar, Sanskrit Shri Puraskar, and there are many, many more. I'm sure we have a small, quick clip which will give us the information about this. So I request my technical team to kindly relay the film. भारत विश्व गुरु बनेगा, ये स्वामी विवेकानंद जी का संकल्प साकार होने के लिए अविरत प्रयास करने वाले तत्वज्ञ संत श्री ज्ञानेश्वर माउली के आलंदी में तीर्थ क्षेत्र से ज्ञान तीर्थ तक का यह अनोखा उपक्रम साकार करने वाले, आध्यात्मिक शास्त्र की वैज्ञानिक प्रयोगशाला के रूप में उभरने वाले विश्व के सबसे बड़े विश्व शांति गुंबद से होकर देवभूमि बद्रीनाथ के पास श्री सरस्वती मंदिर का निर्माण करते हुए माननीय पंत प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी की संकल्पना से निर्मित प्राचीन विद्वत नगरी काशी स्थित श्री काशी विश्वनाथ ज्ञान कॉरिडोर में संपन्न हुए 9वें विज्ञान, धर्म, अध्यात्म और तत्व ज्ञान के विश्व सम्मेलन के संकल्पक एवं संयोजक विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड ने दुनिया के जाने माने संत, शास्त्रज्ञ
तत्वज्ञों की उपस्थिति में संकल्प सिद्धि का उद्घोष समूचे जग में प्रसारित हुआ। इस ऐतिहासिक सम्मेलन के संयोजक विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड़ को इस 9वें विश्व सम्मेलन में काशी विद्वत परिषद की ओर से विश्व शांति विद्या रत्न, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की ओर से विश्व शांति उद्गाता, समर्पित जीवन गौरव पुरस्कार, साथ ही संस्कृत श्री ऐसे यथार्थ ऐतिहासिक पुरस्कारों से सम्मानित हो जाने पर उन्हें हार्दिक बधाई। तत्वज्ञ संत श्री ज्ञानेश्वर माउली का विश्व कल्याण का संदेश देने वाला पसायदार और तथागत गौतम बुद्ध का पंचशील का संदेश दूर दूर तक पहुंचाने वाले ईश्वरीय वरदान प्राप्त डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड़ का हमें सार्थ अभिमान है। My friends, and the work doesn't conclude here. When we see that this kind of work has been done by a person and the person has a completely different vision of doing things for humanity, I'm really happy to share with you that revered Professor Dr. Vishwanath Karad sir has been instrumental in creating one more such marvel, and it's a completely a creation which is beyond words. I would say it's very difficult to explain that creation. I'm sure we have a small AV to explain the Saraswati Dham also with all of us. I request my technical team to kindly relay. श्री सरस्वती ज्ञान विज्ञान धाम, परम पवित्र श्री बद्रीनाथ धाम के निकट केशव प्रयाग के पवित्र स्थान पर भूमाता के गर्भ से निकलकर एक प्रपात के रूप में उछलती, कूदती और बल खाती सरस्वती नदी अपने उद्गम स्थान से कुछ ही दूर चलकर लुप्त हो जाती हैं। इसी मनोहारी स्थान पर महर्षि वेद व्यास ने जय नामक इतिहास अर्थात महाभारत तथा अन्य 16 पुराणों का निर्माण किया। महाभारत भारत के समृद्ध और संपन्न ज्ञान परंपरा का प्रतीक है। इसी में हमें मिला है श्रीमद् भगवत गीता जैसा ज्ञान का स्रोत, जिसे वेद व्यास जी ने भगवान श्री कृष्ण के मुख से हम तक पहुंचाया है। आश्चर्य की बात तो यह है कि सरस्वती नदी के इस पवित्र उद्गम स्थल पर ज्ञान की देवी श्री सरस्वती को समर्पित कोई मंदिर नहीं था। यही नहीं बल्कि पूरे भारत देश में भी माता सरस्वती को समर्पित बहुत कम मंदिर है। परंतु सन 2021 के अगस्त महीने में स्थिति जब सामान्य होने लगी, तब मंदिर निर्माण के लिए MIT का एक दल माणागांव पहुंचा और प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी की संकल्पना और संरचना के आधार पर श्री सरस्वती मंदिर को मूर्त स्वरूप देने के कार्य का आरंभ हुआ। परिस्थितियां बहुत कठिन थी। प्रत्यक्ष निर्माण कार्य एक अत्यंत दुर्गम भौगोलिक स्थान पर होने जा रहा था। ऊंचे पहाड़, फिसलती चट्टानें, तेज बारिश, कड़ाके की ठंड, असमतल जमीन, ऐसी स्थिति में लगातार काम करते हुए केवल 63 दिनों के अवकाश में इस सुंदर श्री सरस्वती ज्ञान विज्ञान मंदिर का कार्य पूरा हो गया। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा आद्यां जगद् व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणीं अभयदा जाड्यान्धकारापहा हस्ते स्फाटिका
पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदा। दिनांक 21 अक्टूबर 2021 को महाराष्ट्र राज्य के महामहिम राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी जी, जो उत्तराखंड के मूल निवासी हैं, उनके कर कमलों द्वारा इस मंदिर का उद्घाटन तथा लोकार्पण संपन्न हो। यहाँ उपस्थित हमारे आदमी अभी का नाम करार तो नहीं बोला, वो इनके जैसे संकल्प। थैंक यू, थैंक यू, ऐसे मेरे अधिकारी का थैंक यू। We have received the dignitaries for this valedictory session. I request everyone to welcome with a big round of applause, my friends, the Honorable Chief Minister of the State of Maharashtra, Shri Eknath Shinde ji, Honorable Deputy Chairman of Rajya Sabha, Shri Harivansh ji, Honorable Deputy Chief Minister and the former Chief Minister of Maharashtra, Shri Devendra Fadnavis ji, Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant ji, Honorable Speaker of Maharashtra Legislative Assembly, Advocate Rahul Narvekar ji, the Governor of the State of Maharashtra, Shri Ramesh Baij ji, everyone is making their way towards ringing the bell of democracy. I request all the dignitaries to join hands for ringing the bell of democracy. एक साथ तमाम विशिष्ट अतिथि आ रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं लोकतंत्र का घंटनाद। महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे, ऑनरेबल डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा श्री हरिवंश जी, हमारे साथ नीलम गोरे जी मौजूद हैं और तमाम विशिष्ट अतिथि हमारे साथ मीरा कुमार जी हैं। सभी एक साथ यहाँ पर इकट्ठा हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य ये देख रहे हैं आप, लोकतंत्र का घंटनाद, जब सारे लोग एक साथ यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ हैं एडवोकेट राहुल नार्वेकर, ऑनरेबल स्पीकर महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली। एक बहुत ही सुंदर तस्वीर है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है सबसे पहले लोकतंत्र के घंटनाद से। आप सबसे आग्रह है अपनी अपनी जगहों पर रहें। Such a beautiful moment where we all can experience the ringing the bell of democracy. I request all the dignitaries to kindly proceed and ring the bell, giving a loud and clear message of strengthening the democratic fabric of our nation. Let's give a big round of applause and let us participate in ringing the bell of democracy. जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे हम तमाम विशिष्ट अतिथियों का। ये था लोकतंत्र का घंटनाद। I request all the dignitaries to kindly come up stage for lighting the traditional lamp. दीप प्रज्वलित करके हम इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। नीलम गोरे जी, एकनाथ शिंदे जी, नमस्कार। तमाम लोग हमारे विशिष्ट अतिथि, मीरा कुमार जी, राहुल नार्वेकर जी, मारामारी कर रहे हैं। I know it's a very important occasion. I request the chief guest and all the dignitaries to join hands. Dr. Meera Kumarji, Neelam Goretai. I request everyone. Dr. Sawant sir, Advocate Narvekar ji, everybody is joining hands for lighting the traditional lamp. हमारी बहुत ही सुंदर परंपरा, किसी भी कार्यक्रम के शुभारंभ का दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ होता है। और यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर तस्वीर आप देख रहे हैं। सभी विशिष्ट अतिथि यहाँ स्टेज पे मौजूद हैं। श्री एकनाथ शिंदे जी, रमेश बैस जी, हरिवंश जी, मीरा कुमार जी, नीलम गोरे जी, शिवराज पाटिल जी, सभी एक साथ दीप प्रज्वलित करके। And it has been such a beautiful conference, I would say, for last 3 days. Honorable MLAs and MLCs from across the nation, I would say vast length and breadth of our country is represented in this particular auditorium of the first National Legislators Conference.
for the first time in the history of independent India, we have witnessed such a gathering of MLAs and MLCs from across party lines, states, languages, and this particular moment our first National Legislators Conference has reached its zenith in this valedictory session. राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन, ये पहला राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन जिसमें आप सब लोग शरीक हुए। एक बार फिर से आप सबका स्वागत, अभिनंदन है इस राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन में। ये पहली बार है इतिहास में जब एक इस तरह का सम्मेलन आयोजित किया गया है और इसका मूल ये रहा कि सारे लोग एक साथ आएं, एकता और लोकतंत्र को और मजबूती दें और देश के अलग अलग राज्यों से, हिस्सों से जो हमारे विधायक आए हैं वो सारे एक साथ मिलकर संवाद करें और सबसे बड़ा लक्ष्य यही कि संवादहीनता कहीं न रहे, विचारों का आदान प्रदान हो, लोकतंत्र को मजबूती मिले, जिसके लिए हमारे साथ आज तमाम विशिष्ट अतिथि यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ हमारे तमाम मार्गदर्शक लगातार जुड़े हुए हैं। मीरा कुमार जी, सुमित्रा महाजन जी, शिवराज पाटिल जी लगातार जुड़े हुए हैं और हमारे साथ स्टेज पे सभी विशिष्ट अतिथि हैं। महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी शामिल हुए हैं, नीलम गोरे जी में मौजूद हैं, राहुल नार्वेकर जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है और ये हमारा आज का वैलेडिक्टरी सेशन है। ये विदाई सत्र, बहुत जल्दी ये समय बीत गया है 3 दिनों का और अब वो लम्हा आया है जब ये आखिरी सत्र है इस राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन का। Indeed, and it's now the moment where we formally begin with the valedictory session of First National Legislators Conference, for which I would like to request everyone on the dais, off the dais, to rise in their seats for national anthem. I humbly request everyone on the dais, off the dais, to rise in their seats for national anthem, and I request my technical team to kindly relay national anthem, please. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम लोगों का, बहुत स्वागत। एक बार फिर से आप सब अपनी अपनी जगह ले लें। हमारे तमाम विशिष्ट अतिथि यहाँ पर स्टेज पे मौजूद हैं और आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द मीडिया पीपल, ऑल द कैमरा पर्सन्स ऑल्सो टू प्लीज काइंडली टेक देयर पोजीशंस। वी शुड हैव लीस्ट मूवमेंट एंड लीस्ट डिस्टर्बेंस इन द हॉल। वी आर जस्ट अबाउट टू बिगिन द प्रोग्राम फॉर्मली। और मैं स्वागत करना चाहूँगी डॉक्टर नीलम गोरे का, माननीय डेप्यूटी चेयरमैन महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव काउंसिल। डॉक्टर नीलम गोरे जी, आपका अब वेलकम एड्रेस इस पूरी गैदरिंग के लिए आपको आमंत्रित करना चाहूँगी मैं। डॉक्टर नीलम गोरे, ऑनरेबल डेप्यूटी चेयरमैन महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव काउंसिल महाराष्ट्र, जो इस पूरे कार्यक्रम का, राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन का इस बार मेज़बान राज्य है। डॉक्टर नीलम गोरे, माननीय डेप्यूटी चेयरमैन महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव काउंसिल। सबको नमस्कार, गुड इव्हनिंग, जय महाराष्ट्र। व्यासपीठ उपस्थित सन्माननीय डॉक्टर मीरा कुमार जी, सन्माननीय शिवराज पाटिल जी, सन्माननीय हरिवंश जी, सन्माननीय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री महोदय एकनाथ जी शिंदे, सन्माननीय सुमित्रा जी महाजन, सर्व अलग अलग भिन्न भिन्न राज्यों से आए हुए अध्यक्ष सभापति जी, हमारे सहकारी विधानसभा के अध्यक्ष राहुल जी नार्वेकर, इस कार्यक्रम के संयोजक राहुल जी कराड़, विश्वनाथ जी कराड़,
सभी मेरे सामने बैठे हुए विधायक भाइयों और बहनों, 2-3 दिन में बहुत कुछ हो गया है। मुझे तो जैसे लगता है एक पूरे हिंदुस्तान का जो भी चित्र है वो सामने आने के लिए ये नेशनल लेजिस्लेटर कॉन्फ्रेंस बहुत ही यशस्वी हो चुकी है। और इसके लिए मैं इसके संयोजक सभी राहुल जी कराड़, उनकी टीम और MIT स्कूल ऑफ गवर्नेंस, इनको सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और आप सबको बधाई देती हूँ कि आपने बिल्कुल विधिमंडल के जैसा सभा त्याग न करते हुए आखिरी सत्र तक आपकी 100% उपस्थिति दिखाई है, जिससे आपको कितनी दिलचस्पी है वो पता होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्टेज पर है, इसके लिए जो भी मुद्दे आए उसमें मैं सारांश में बोलूँगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, इथे एक मोठी चर्चा सातत्याने होती आहे की अशा व्यासपीठाची गरज होती की जिथे भारतातल्या सर्व राज्यांमधले आमदार स्वतःचे कामाचा भाग, बेस्ट प्रॅक्टिसेस, त्याचबरोबर विधिमंडळाचं कामकाज अधिक कसं चांगलं होऊ शकेल याच्यासाठी राष्ट्रीय व्यासपीठाची गरज होती। कॉमनवेल्थ असोसिएशन, युनायटेड नेशन्स, IPU अशा ठिकाणी चर्चा होते, पण आपण व्यासपीठावर आहात। हम आपसे ये ज़रूर कहेंगे कि ये मुंबई में हो रहा है और महाराष्ट्र और मुंबई और हम सभी लोग अगर कुछ निर्णय करते हैं कि ये जो कदम MIT ने उठाया है इसको और सक्षम करने के लिए आपसे हमें वचन चाहिए, आपसे हमें अपेक्षा है की मुंबई में इनको आप बार बार बुलाएंगे। परत परत त्यांना बोलवण्याच्यासाठी आमची तुमच्याकडून अपेक्षा आहे। आणि म्हणून मला असं वाटतं तुम्ही शेवटच्या दिवशी आलात ते योग्य वेळेवर आला आहात। आप आखिरी सेशन में आए, लेकिन मैं ज़रूर कहूँगी सभी लोगों को एक अलग अलग जो मुद्दे आए हैं इसके बारे में काम करने के लिए आप शक्ति दें। और एक अपने इसमें कहते हैं कि वापस नहीं जाते हैं, पुनरागमन करते हैं, तब फिर मुंबई मिलेंगे, दूसरी जगह भी मिलेंगे। बहुत बहुत मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। और विधान परिषद की उपसभापति को होने हैसियत के कारण मुंबई में ये जो कार्यक्रम किया है उससे मुंबई के इतिहास में, वर्तमान में और भविष्य में काफ़ी कुछ अच्छे प्रगति के लिए फ़ायदा होगा। और आखिर में ये कहूँगी कि मुंबई सेफ है और सेफ बन सकती है और इसमें सभी का योगदान भारतवासियों का जरूरी है। धन्यवाद। जय महाराष्ट्र, जय भारत। Thank you, madam. Thank you very much for taking a quick recap of all the 3 days. And I would particularly thank you for underlining the importance that you mentioned of such a platform of National Legislators Conference. Thank you. Thank you very much, madam. And as an outcome of this entire gathering of 3 days of first National Legislators Conference, we would like to propose an important declaration here. And to share the same with us, I would like to request and invite the Honorable Speaker of Maharashtra Legislative Assembly, Honorable Advocate Rahul Narvekarji, who's now going to share with us the very, very important Mumbai Declaration. नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्फ्रेंस, कॉन्क्लेव बहुत ही यशस्वी रहा है और इस कॉन्क्लेव के माध्यम से जो आप सभी विधायकों की अपेक्षा थी, एक व्यूज़ शेयर करना, डाइवर्स व्यूज़ को सुनना और उन्हें जाकर अपने अपने स्टेट्स में इम्प्लीमेंट करना, मैं समझता हूँ ये राहुल कराड़ जी के इनिशिएटिव से निश्चित रूप से पूरी हुई है। और आज एक संकल्प करके हमें यहाँ से आगे बढ़ना है। आई प्रपोज द डेक्लेरेशन which all of us shall take today to ensure for a long-lasting, ever-living parliamentary democracy that shall be sustained and maintained in this great country. We shall also implement
the best parliamentary practices, legislative practices in our respective states, in our respective assemblies, in our respective councils. Mumbai Declaration, Preamble. We, the members of the state legislatures and delegates of the National Legislators Conference Bharat 2023, affirm that the Constitution of Swatantra Bharat, sculpted by Bharat Ratna Dr. Babasaheb Ambedkar, is one of the most complete and inclusive constitutions of the world, which truly reflects the spirit and cultural ethos of Bharat. We, as Bharatiyas, experience immense pride, that too of the greatest messengers of peace, Mahatma Gandhi and Lord Gautam Buddha, took birth in Bharat and carried its message of truth and non-violence all across the world. We, the members of state legislatures of and delegates of the National Legislators Conference Bharat 2023, gathered here, do solemnly resolve to strengthen democracy and foster a progressive and inclusive, peace-loving global society by adhering to the time-tested Bharatiya ethos of Vasudeva Kutumbakam and committing ourselves to the following principles and actions. Declaration. We declare our commitment to combat corruption by promoting transparency, ensuring complete accountability, responsibility, and encouraging citizens' participation in the making of laws and policies as well as in their strict implementation. Together, we commit to bring in transparency in generations and management of election campaign funds, which is crucial to curb the corruption in the system. We pledge to combat the criminalization of politics. We stand united against any form of physical violence, unlawful activity, and commit to upholding the values of integrity, trustworthiness, and ethical conduct. We strive to restore public trust and ensure that politics remains a noble pursuit for the advancement of society. We will appeal to the central government to enact necessary legislation to prevent individuals with criminal background from participating in the electoral process. We solemnly declare our unwavering commitment to fight casteism, communalism, and all forms of discrimination. We strive to encourage a society where Bharatva, Indianness, is the only identity and every individual is treated with respect and dignity. We strive to uphold our integrity and fairness towards responsible governance for the betterment of all. We firmly declare our resolve to break free from the shackles of the colonial traditions and nurture our national values. We embrace our rich cultural heritage, wisdom, and diversity, fostering inclusivity, mutual respect, and harmony. Together, we build a progressive society rooted in our indigenous ethos for the brighter future for everyone in the world. We recognize the urgent need to reserve climate change and promote sustainable lifestyle, to implement robust environmental policies, invest in renewable energy, conserve natural resources, and mitigate greenhouse gas emissions. We commit to raising awareness, embracing innovation, and engaging in international cooperation. Together, we stand against the greed of consumption and luxury to create a sustainable future, safeguarding the planet for generations to come and ensuring the well-being of all living beings. We are committed to creating a stress-free, happy, and healthy society based on trust
and understanding and a sense of camaraderie amongst our constituents. We will work unitedly and diligently to bring to reality the dream of the great noble son of India, Swami Vivekananda, and make Bharat Mata the knowledge corridor of the world, which will show the pathway of happiness, containment, and peace as Vishwaguru in the 21st century. In upholding these principles, we reiterate our commitment to be together for Bharat and invite all stakeholders to join us in this collective effort for the betterment of our nation and its citizens. Jai Hind. Thank you. Thank you, Advocate Rahul Narvekar ji. Thank you. Ladies and gentlemen, that was the Bombay Declaration for you. इसका एक ध्येय ये है जातिवाद को ख़त्म करना, responsible government को खड़ा करना और इसके साथ साथ to break free from the colonial shackles and very important to develop mutual respect. Absolutely. And all these are very, very important motives that we all have taken up through this Mumbai Declaration. And now, by the special request of Honorable Chief Minister of the State of Maharashtra, who's the chief guest of this session, Shri Eknath Shinde-ji, I would like to invite on stage Shri Rahul Karat sir, who's the convener of First National Legislators Conference. Please put your hands together and welcome with a round of applause Shri Rahul Karat. And now we would like to start the felicitations of the dignitaries on the dais और इसके लिए मैं सबसे पहले हमारे पेट्रन मार्गदर्शक डॉक्टर मीरा कुमार जी से आग्रह करूंगी कि श्री रमेश बैस जी ऑनरेबल गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र को सम्मानित करें। मीरा कुमार जी श्री रमेश बैस जी को सम्मानित करेंगी। श्री रमेश बैस जी ऑनरेबल गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र। आग्रह है हमारी पेट्रन मीरा कुमार जी से। Let's give a big round of applause, my friends, to Honorable Governor of the State of Maharashtra, Shri Ramesh Bash ji. Thank you, sir. Thank you very much for your presence here today. और अब आग्रह करेंगे हम शिवराज पाटिल जी से, हमारे पेट्रन शिवराज पाटिल जी के सम्मानित करें महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी को। श्री शिवराज पाटिल जी आपसे आग्रह है, सम्मानित करेंगे माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी को। Let's put our hands together for the Honorable Chief Minister of the State of Maharashtra, Shri Eknath Shinde ji. Thank you very much. I would now like to request Shri Eknath Shinde ji to kindly felicitate and welcome Shri Harivansh ji. It is indeed our honor and privilege to have the Honorable Deputy Chairman of Rajya Sabha, Shri Harivansh ji, on stage, and Honorable Chief Minister sir is felicitating and welcoming him. और अब बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आग्रह करूंगी डॉक्टर सीपी जोशी जी से कि वो श्री शिवराज पाटिल जी और डॉक्टर मीरा कुमार जी को सम्मानित करें। हमारे बीच हमारे दो पेट्रन, दो मार्गदर्शक मौजूद हैं, श्री शिवराज पाटिल जी और डॉक्टर मीरा कुमार जी। आग्रह है डॉक्टर सीपी जोशी से इन दोनों को सम्मानित करें। और श्री सतीश महाना जी और श्री डॉक्टर सीपी जोशी जी सम्मानित कर रहे हैं श्री शिवराज पाटिल और डॉक्टर मीरा कुमार को। Such a beautiful moment. Galaxy of leaders, galaxy of stalwarts is decorating the stage of First National Legislators Conference valedictory session. Indeed, it is our honor and privilege to see all these tall stalwarts here on stage. Shivraj Patil ji, one of the important patrons of this platform, is being felicitated
at the hands of Dr. C.P. Joshi ji and Shri Satish Mahana ji. और ये पूरा राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन जो है, इसकी कल्पना की गई थी, इसका सपना देखा गया था, ये एक विचार था किस तरह से ये पूरा एक तरह से ये इस रूप में आ पाया है, कितनी तैयारियां, कितने लोगों की मेहनत इसमें लगी है, महीनों सालों की तैयारियां आप तमाम लोगों को यहाँ इकट्ठा करने के लिए और एक ऐतिहासिक दिन बनाने के लिए, एक ऐतिहासिक मंच बनाने के लिए एक छोटी सी फिल्म के ज़रिए हम देखेंगे कि क्या है और किस तरह से आज का दिन जो है वो पूरा सपना साकार हो पाया है। तो एक झलक इस फिल्म के ज़रिए मेकिंग एंड प्रोसीडिंग्स ऑफ द फर्स्ट नेशनल लेजिस्लेटर्स कॉन्फ्रेंस। Absolutely. I request my technical team to kindly relay the making and proceeding film of first NLC. Because honorable dignitaries are not able to see the film, there is some issue with the monitors in the front. So let's wait for a couple of seconds and I'm sure the film we would be able to relay in few moments. Meanwhile, I would like to request a very, very special personality who is present here us today. We have received the blessings, the messages and best wishes from many, many stalwarts across the nation. And we have also received one such message from former Member of Parliament, Lok Sabha, and former President of Indian National Congress, Shri Rahul Gandhi ji. And we have today here with us Shri Bhai Jagtap, Honorable MLC, who is going to read and share the message of Shri Rahul Gandhi ji with us. I would like to request Shri Bhai Jagtap ji to kindly come up on stage and share the message of Shri Rahul Gandhi ji with us. Please put your hands together and welcome on stage Shri Bhai Jagtap ji. Good evening, everyone. First of all, let me appreciate and let me be very honest. And I'm lucky enough to get an opportunity to be a part of this beautiful and historic event. And my leader, Mr. Rahul Gandhi, has sent his message, which I would like to read out in front of you. I would like to congratulate my brothers and sisters from across the country who have convened here for the first National Legislature Conference. This is a great initiative to bring together legislators across party in the country. Indian democracy is a remarkable example of society where our rich history of negotiating differences have allowed people of various faiths, ethos, and region to coexist. Our shared values of inclusion and harmony have been shaped by the vision of towering individuals from Mahatma Gandhi to Dr. B.R. Ambedkar, great social
great social reformers, including Basavanna, Narayana Guru, and Guru Nanak, believed in the idea of just a human society, and they effected changes through bringing diverse people together. They understood the power of listening and the wisdom of the common person. Their ability to reflect, refine, and engage even with dissenting voices were instrumental in few endeavor as a leaders. In my time in public life, especially over the last 10 months, I have come to appreciate the profound wisdom of active listening. During the course of the Bharat Jodo Yatra, after the first 2 weeks, we grew silent. It was in those brief encounters with thousands of people that I learned some of the most meaningful insight. In those stories of resilience, I not only saw hope, but their tremendous capacity for empathy for people different from them. At a juncture where leaders with moral responsibility to unite people are wearing the citizen of the country against each other. It serves us well to reflect on the power of compassion and empathy. For that has guided visionary leaders. India's future will be shaped by the values her leader those to uphold. Each one of you here holds the power to shape our public values and share the course of our policy. I hope that our legislators continue to fight for the inclusive idea of India. Thank you so much. Jai Hind. Thank you for reading out that message from Shri Rahul Gandhi. Thank you very much for sharing the message, and it is indeed very, very important that we understand, and it's a beauty of our democracy that we are receiving blessings, messages, best wishes across party lines, and every leader is standing strong with First National Legislators Conference. My friends, we have seen the journey of First National Legislators Conference. We have seen the way it has reached here so far. But today, we are standing in the valedictory session of National Legislators Conference. And now it's time that we move on and look forward in the future where this journey will take us. And to understand and to take this journey forward, to take this responsibility forward, I would like to request few special leaders to kindly come in the front. I would like to request the Honorable Chief Minister of our state to kindly come forward. Shri Rahul Karat sir to kindly come forward. I request the Chief Minister of the state of Goa, Dr. Pramod Sawant ji, to kindly come forward. Neelam Gore ji, Rahul Narvekar ji. UT Khadir Farid ji, I request them to kindly come forward. And I now request Shri Rahul Karat sir to kindly come here for लेके जाओ
It's such a beautiful notion and beautiful moment of National Legislators Conference. I request Shri Rahul Karat sir to say a few words. We have the microphone. Please give a big round of applause, my friends. It is now clear that the next National Legislators Conference in year 2024 will be happening in the state of Goa. बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है। आपने देखा कि ये पूरी जिम्मेदारी मेज़बानी की अब अगले राज्य को चली गई है। ये जो पहला राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन हुआ, अब अगला राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन जो है वो गोवा में होगा। उस माइक को ऑन कर दें। I request HH2. मुझे बड़ी प्रसन्नता है ये बताते हुए सीएम साहब की सभी मुख्यमंत्रियों को चिट्ठियाँ लिखी। गोवा सीएम साहब आगे आए, उन्होंने इस विषय को आगे बढ़ाने की ये की, लेकिन मुझे ये सम्मेलन का आयोजन का किसी को भी अंदाज़ नहीं था कि इसका इवोल्यूशन किस तरीके से होगा। लेकिन मुझे पर्टिकुलरली पेट्रन्स का जो सहयोग रहा और पर्टिकुलरली जितने भी एडवाइजर्स यहाँ पे हमारे बीच में जितने भी स्पीकर्स हैं विधानसभाओं के, तो उन्होंने बहुत इसमें एफर्ट लिया है और अपने अपने मुख्यमंत्रियों को उन्होंने इसके बारे में कि इसकी महत्ता पिछले 2-3 दिनों में जो बताई गई। कर्नाटका में अभी रिसेंटली इलेक्शन हुआ तो खादिर साहब यहाँ पे स्पीकर महोदय और उनके चेयरमैन साहब भी, तो उन्होंने बोला कि ये उन्होंने कल 3 दिन में उनके मुख्यमंत्री महोदय के साथ वहाँ पे बात होके उन्होंने ये तय किया कि इसके बाद का भी एडिशन जो है, मतलब सेकंड एडिशन विल हैपन इन गोवा. So the committee and all the advisors here, the speakers, they said the baton will go to the Karnataka in the future. So गोवा के बाद कर्नाटका, तो मतलब इसकी एक जो शक्ति है, तो मतलब ये जब कल्पना जब बन रही थी दोस्तों, तो मन में all the time the idea was what way, because this has to continue. It can't be just a one day Diwali sort of. It has to. I mean, Diwali is always every year we celebrate, but we have to continue this legacy, and very beautifully all the governments have responded to this. I had a wonderful interaction with Shri Naveen Patnaik ji also about this, and he was also quite excited, and some other chief ministers also during my last 1 year, this journey of building up National Legislators Conference. I am extremely happy, Pramod Savanji, that you very graciously, he said that Goa will host, so इस बार करीबन 1900 के लगभग MLAs पूरे भारत से आए हैं, और पूरे 4500 MLAs में से तो मुझे लगता है कि अगला जो सम्मेलन गोवा में होगा, गोवा की ब्यूटी, गोवा का ब्रांड और गोवा का जो एक पोजीशनिंग है वर्ल्ड के मैप के ऊपर, वो अपने आप में अद्भुत है, और हमें सबको उसका अट्रैक्शन है, और एक अद्भुत, इससे भी 10 गुना बेहतर एक अच्छा एक इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशंस और जितने भी इंटरनेशनल एजेंसीज है वर्ल्ड वाइड, और आप CPA, IPU, ये सभी बॉडीज़ के बारे में सब लोग आप जानते हैं कि किस तरीके से उनका ये है, लेकिन NLC का ये इंस्टीट्यूशन खड़ा करने में मुझे लगता है सभी विधानसभाएं और सभी मुख्यमंत्रियों का बहुत बड़ा रोल आगे आने वाले समय में होगा. और मुझे सबसे प्रसन्नता कि इसकी ओनरशिप, मैं मेरे पहले भाषण में भी मैंने वो बात बोली कि इसकी ओनरशिप कैसे ली जा सकती है, तो वो बात सुमित्रा ताई महाजन, मीरा कुमार जी, सुमित्रा जी की तबीयत थोड़ी सी नरम थी तो वो चले गए, आज हमारे बीच में नहीं है वो, बट मैं बताऊं उन्होंने इतने एफर्ट किए हैं पूरे पिछले साल भर में. मीरा जी ने कांग्रेस के सभी लोगों को फ़ोन लगाया, मैडम मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, द वे यू हैव टेकन द एफर्ट. शिवराज पाटिल साहब, आपने भी बहुत एफर्ट लिए, सभी लोगों को इसके बारे में मैसेज लिखा, सभी MLAs को चिट्ठियाँ गई, और इस तरीके से अक्रॉस पार्टी से उठकर इस राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन का जो एक पोजिशनिंग है, मुझे लगता है आज एक सफलता के दिशा में आगे बढ़ेगा. इतना ही मैं यहाँ पे कहूँगा. आखिरी में बस एक बार फिर से आपके सामने सबके आभार प्रकट करने के लिए वोट ऑफ थैंक्स के दौरान मैं फिर से आऊँगा. तो अगला सम्मेलन नवंबर में 2024 नवंबर की तारीखें कुछ तय होगी, बट नवंबर तारीख आप नवंबर 2024 यानी 18 महीने बाद, हर 18 महीने बाद ये सम्मेलन अलग अलग राज्यों में जाएगा. तो मुझे फिर से एक बार मैं प्रमोद सावंत जी का, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा, very because we have worked with Goa government before. I must tell you, the National Women's Parliament, National Panchayat Parliament, so many parliaments he has already very successfully conducted, very, very dynamically. His enterprising approaches I have already observed, and I have worked with Honorable Chief Minister. So thank you Pramod Sawant साहब, आपका यहाँ पे आना हुआ, और शिंदे सर आपके हाथ से ये तो एक लीगेसी बन गई. तो इतना एक ऐतिहासिक मूवमेंट भारत के इतिहास में, ये परंपरा अपने अमेरिका में 50 राज्य, भारत में 30 राज्य, इतनी सारी भाषाएं, अपनी डाइवर्सिटी, अपना एक अद्भुत ऐसा एक ढांचा, और इसका एक अलग तरीके का सेलिब्रेशन मुझे लगता है इस राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन के माध्यम से हम सेट कर पाएंगे. बहुत बहुत शुभकामनाएं. धन्यवाद. Thank you, sir. And it is one more important proceeding that is left. That is the transfer of
responsibilities by signing a document. It's a very, very beautiful moment where both the chief ministers and dignitaries on the dais would be signing the document, formally handing over and taking over of the National Legislators Conference in the presence of the chief convener, Shri Rahul Karad. The signing of documents ceremony is happening. Let's give a big round of applause, my friends. Such a beautiful moment the camera is capturing. तो ये एक बहुत ही सुंदर लम्हा आप देख रहे हैं कि जिम्मेदारी जो है वो अब आगे बढ़ गई है और महाराष्ट्र से अब गोवा चली गई है ये जिम्मेदारी नेशनल लेजिस्लेटर्स कॉन्फ्रेंस की। इसके औपचारिक स्वरूप इसे दे दिया गया है इस पर हस्ताक्षर के साथ ही। तो ये जो रिकॉर्ड बुक है, जो दस्तावेज हैं, उसके ऊपर हस्ताक्षर के साथ ही एक औपचारिकता इसकी पूरी हुई कि अगला मेज़बान राज्य नेशनल लेजिस्लेटर्स कॉन्फ्रेंस का महाराष्ट्र के बाद गोवा होगा। Absolutely. And this is the formal handing over and taking over of the National Legislators Conference. But there is a permanent record. I would now like to request the Honorable Chief Minister of the State of Maharashtra to felicitate the Honorable Chief Minister of the State of Goa. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी सम्मानित करते हुए गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत को। Thank you very much for that beautiful moment. My friends, I'm sure we all have witnessed the history in making just now, where we have seen such a beautiful moment of handing over of responsibility of National Legislators Conference. But as the convener of this conference, there is some permanent record which is being kept. And now I would like to request the patron of this platform, on behalf of all the patrons of this platform, Shivraj Patil ji, to hand over the record book of all the signatures of all the honorable MLAs and MLCs which is created during first National Legislators Conference, to be handed over to the convener of National Legislators Conference, Shri Rahul Karad. I request all the patrons, Dr. Meera Kumarji, Shri Shivraj Patil ji, to kindly come forward and hand over this formal record of all the signatures of honorable MLAs and MLCs to the convener, so that the same record can be taken over to the next state. तो आप सबको बता दूं, यहाँ पर जो आप दृश्य देख रहे हैं, तो वो आप सब लोग जो यहाँ पर आए और अपनी अपनी उपस्थिति को दर्ज कराया, उसका जो रिकॉर्ड है उसको हमारे मार्गदर्शक जो हैं वो हैंड ओवर कर रहे हैं इसके संयोजक राहुल कराड़ जी को। और अब मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी से आग्रह करूंगी कि वो ऑनरेबल स्पीकर कर्नाटका लेजिस्लेटिव असेंबली श्री यूटी खादर फरीद को सम्मानित करें। एक बार फिर से आग्रह करूंगी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी से कि वो श्री यूटी खादर फरीद का सम्मान करें। श्री यूटी खादर फरीद माननीय स्पीकर कर्नाटका विधानसभा। Honorable Governor of Maharashtra, Honorable Chief Minister of Maharashtra, and all the dignitaries on the dais, dignitaries of the dais, I appreciate and thank the Maharashtra government and the MIT, especially Rajesh Karad and all the team for organizing a historical moment over here. I think this success program has inspired us to continue this journey in the days to come. Me, as a Speaker of Karnataka Assembly, and Basavaj Horati ji, the Chairman of Karnataka Vidhan Parishad, had a talk with our Chief Minister Sanmanya Siddaramaiah ji, telephonic talk, and expressed our views. And our Chief Minister agreed for the third edition of the National Legislators Conference to be held in Karnataka. So I thank for the opportunity given to us by the MIT and all the organizers. I like to say one thing. The unity of legislatures is the strength of our country. Thank you. Give a big
Big round of applause, my friends, for to the state of Karnataka for taking the responsibility of 3rd National Legislators Conference. A big round of applause, my friends. जोरदार तालियां कर्नाटका के लिए। धन्यवाद। और हमने आपको कुछ देर पहले ही बताया था कि हम आपको एक फिल्म दिखाएंगे। उस वक्त कुछ टेक्निकल गड़बड़ी की वजह से ये नहीं चल पाई फिल्म। अब ये फिल्म तैयार है आपके लिए, तो एक झलक देखिए कि किस तरह से ये आज का दिन जो है इसने रूप लिया है। और ये पिछले 3 दिनों में जो तमाम चीज़ें हुई हैं, जो प्रोसीडिंग्स रही हैं, वो एक फिल्म के स्वरूप में आपके सामने ला रहे हैं। तो वी विल बी नाउ प्लेइंग ग्लिम्पसेस ऑफ making and proceedings of the first National Legislators Conference. Can I ask my technical team to now please play the film? A very warm welcome to National Legislators Conference, Bharat. Parliamentary democracy is not only sustained in this country, but parliamentary democracy is also developed for the betterment of the people. ऐसा ना हो, ये एक दफ़ा एक सम्मेलन हुआ था मुंबई में और वो इतिहास बन करके रह जाए, ऐसा नहीं। हम इसको आगे लेते जाए, हर कदम पर लेते जाए। Anything you desire for the welfare of a person, this constitution paves a way for you to achieve your goal. There are so many subjects, but once we are MLA, select your subject and get some mastery on it. Study that one. We have to select, we have to study, we have to work for all.
चुनाव के अंदर पैसे का उपयोग होना, गाड़ी में बैठकर जाना है तो कोई बुरी बात नहीं है, मगर वोट के लिए अगर कोई पैसा दे रहा है चुनाव के अंदर तो वो अच्छी बात नहीं हो सकती है। संविधान कितना भी अच्छा हो, उसको पालन करने वाले व्यक्तियों पर निर्भर करता है। That was so beautiful. Did you all like it? अगर आप लोगों को अच्छी लगी फिल्म तो जोरदार तालियों के साथ सुनना चाहिए कि आपको पसंद आई ये फिल्म. Thank you so much. That was a beautiful glimpse of the past 3 days and all that happened. और अब समय है कि मैं मंच पे बुलाऊं श्री हरिवंश जी को. श्री हरिवंश जी माननीय डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा, आग्रह करूंगी आपसे मंच पर आएं और यहाँ मौजूद तमाम लोगों को संबोधित करें. Right, thank you. महामहिम गवर्नर माननीय श्री रमेश बैस जी, माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र श्री एकनाथ शिंदे जी, माननीय मुख्यमंत्री गोवा डॉक्टर प्रमोद सावंत जी, माननीय अध्यक्ष महाराष्ट्र विधानसभा एडवोकेट राहुल नार्वेकर जी, माननीय उपसभापति महाराष्ट्र विधान परिषद डॉक्टर नीलम गोरहे जी, माननीय नेता विपक्ष महाराष्ट्र विधान परिषद श्री अंबादास दानवे जी, माननीय अध्यक्ष श्री अवध बिहारी चौधरी जी, माननीय अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी जी, माननीय अध्यक्ष सतीश महाना जी, माननीय श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी, माननीय अध्यक्ष कर्नाटक एवं अन्य उपस्थित सभी विधानसभाओं विधान परिषदों के अध्यक्षगण, माननीय भूतपूर्व अध्यक्ष लोकसभा श्री शिवराज पाटिल जी, माननीय भूतपूर्व अध्यक्ष लोकसभा आदरणीय श्रीमती मीरा कुमार जी, देश की अन्य विधानसभाओं एवं विधान परिषदों के माननीय अध्यक्षगण, सभापतिगण, उपाध्यक्षगण, उपसभापतिगण एवं माननीय वरिष्ठ सदस्यगण, उपस्थित अधिकारीगण, मीडिया के भाइयों, देवियों और सज्जनों, सबको नमस्कार। सबसे पहले मैं आयोजकों का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, धन्यवाद। आपने हमें अपने बीच होने का मौका दिया। यह विशिष्ट आयोजन है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस तो हर साल होती है, पर विधायक आपस में मिलें, संवाद करें, शायद यह देश में पहला प्रयास है। इस कॉन्फ्रेंस का सफल आयोजन हमारे वरिष्ठ माननीय श्री आदरणीय वेंकैया नायडू जी, श्री शिवराज जी पाटिल, श्री मनोहर जोशी जी, श्रीमती सुमित्रा महाजन जी, डॉक्टर कर्ण सिंह जैसे अनुभवी व दृष्टि संपन्न लोगों के मार्गदर्शन के बगैर संभव नहीं था। पर श्री राहुल कराड जी को, उनके विजन को, उनकी प्रतिबद्धता को, उनके प्रयास को जितना भी हम धन्यवाद दें वह कम होगा। उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद इस अद्भुत आयोजन के लिए। मैं बहुत कम समय में 12-14 चीज़ें पॉइंट वाइज कहूँगा। मुझे उम्मीद है कि इस 2 दिन के अति विशिष्ट कॉन्फ्रेंस में हम लोगों ने उन मुद्दों पर जरूर बात की होगी जो आज हमारे द्वार पर, मनुष्य, इंसान और संसार के द्वार पर खड़े हैं। पहली चीज़, दुनिया परिवर्तन के टेक्टोनिक शिफ्ट की स्थिति में है, यानी स्तब्धकारी बदलाव के कगार पर। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,
चैट जीपीटी जैसे आविष्कारों ने हमें एक नई और अप्रत्याशित दुनिया के द्वार पर ला खड़ा किया है। यह डिजिटल एरा है। क्लाइमेट चेंज के अलावा डाटा प्राइवेसी, साइबर सिक्योरिटी, मशीन लर्निंग, ऑटोमेशन एंड इथिकल इम्प्लीकेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज के चुनौतियों के हल के लिए हम सबको मिलकर एक फोकस लेजिस्लेटिव अटेंशन की जरूरत है। तेजी से हो रहे बदलावों के अनुरूप हमारा मुल्क और समाज कैसे बढ़े, इन इश्यूज पर बहस करना, लेजिस्लेट करना, इनसे कंसर्न होना हम लेजिस्लेचर्स का पहला दायित्व है। मित्रों, कोविड-19 के बाद का संसार, कोविड सदियों बाद संसार पर आई अप्रत्याशित महाविपत्ति साबित हुई। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, सामाजिक और निजी जिंदगी के हर पहलू पर इसके गहरे असर पड़े हैं। We as legislators have moral obligation to act decisively and swiftly to formulate policies and legislative interventions to expedite the recovery process in the wake of pandemic. यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट ने इसमें आग में घी जैसा काम किया है। और अगली चीज कि ये सारी चुनौतियां वो हैं जिन्हें हमें अपनी पार्टियों के घेरे से, निजी घेरे से ऊपर उठकर नेशनल कॉन्शसनेस बनाने की जरूरत है। तीसरी चीज का मैं उल्लेख करना चाहूंगा, समय इतनी तेजी से बदल रहा है कि वक्त और जरूरत के अनुसार अगर हमने कानून नहीं बनाए तो हम पीछे छूट जाएंगे। मैं याद दिलाना चाहूंगा, इतिहास से हमें सीखना चाहिए। लोकपाल एंड लोकायुक्त बिल 1968 में आया, पर कानून अंततः बन पाया 2019 में, 51 वर्षों बाद। 1960 में लॉ कमीशन ने बैंक्रप्सी लॉ रिफॉर्म्स पर रिपोर्ट दी, पर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 में बना। बढ़ती ट्रैफिक दुर्घटनाओं की गूंज सदन से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पीआईएल पर हुई, पर प्रभावी और व्यापक मोटर व्हीकल एक्ट 30 वर्षों बाद बना। नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 में बना। इस रिफॉर्म से नए मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ी। ऐसे अनेक जरूरी कानून की लंबी सूची है जो बहुत पहले बनने चाहिए थे। विलंब से समाज और देश ने कीमत चुकाई। हम कह सकते हैं कि कानून तो सरकार लाती है, विधायी का काम उसे पास करना है। अगर सरकार किन्हीं कारणों से बिल नहीं ला पा रही है तो विधायिका बहस द्वारा उस इश्यू की गंभीरता एवं कानून की आवश्यकता को पब्लिक डोमेन में लाकर एक माहौल बना सकती है। अगली चीज, पांचवी चीज मैं कहना चाहूंगा कि आज की सबसे बड़ी जरूरत है नीड ऑफ डायनेमिक लेजिस्लेचर, यानी इन परिस्थितियों में जो दुनिया चुनौती और परिवर्तन के कगार पर खड़ी है, हमें डायनेमिक लेजिस्लेचर्स की जरूरत है। इसकी दृष्टि फ्यूचरिस्टिक हो, विधायिका भविष्य की चुनौतियों को बहस का मुद्दा बनाए, समय रहते देश, समाज और सरकारों को प्रभावी ढंग से सावधान करे। और यह काम दुनिया के दूसरे देशों में हो रहा है। ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री ऑफिस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, वह भविष्य के निर्णायक मुद्दों पर तथ्य एकत्र करती है, पार्लियामेंट को इनपुट देकर उनका परीक्षण, अध्ययन और आगे क्या करना है यह प्रयास बताती है। फिनलैंड संसद की फ्यूचर्स कमेटी का काम उन इश्यूज को पहचानना और समझ विकसित करना है जो आने वाले समय में देश को प्रभावित करने वाले हैं। हाल ही में आपने देखा होगा, मुश्किल से 20-21 दिनों पहले अमेरिकी कांग्रेस की सीनेट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करने के बारे में अपने एक्सपर्ट्स को बुलाया, देश के एक्सपर्ट्स को बुलाया। इसमें सैम अल्टमैन, सीईओ ऑफ ओपन एआई थे, जिस व्यक्ति ने यह चैट जीपीटी का आविष्कार किया। इसकी संभावनाओं पर चर्चा हुई और इसके क्या प्रभाव होने वाले हैं इसके बारे में इसके आविष्कर्ता ने कहा कि हम इसको समझ लें, दुनिया पर गहरी असर डालने वाला है। मैं आपको बताऊं कि 2019 में इस व्यक्ति ने, जिसने चैट जीपीटी का आविष्कार किया, 3-4 महत्वपूर्ण बातें कही थी, पर उसमें से एक का मैं उल्लेख करना चाहूंगा। उस व्यक्ति ने कहा कि जैसे 1945 में ओपेनहाइमर ने परमाणु बम खोजा था, मेरा आविष्कार उसी के समकक्ष का प्रभावकारी होगा। उस व्यक्ति ने कहा कि यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नया इजाद दुनिया को वो समृद्धि देगा जिसकी दुनिया ने कभी कल्पना नहीं की थी, पर यह वो चुनौती भी देगा जिसकी दुनिया ने कभी कल्पना नहीं की। हमें इस इश्यू पर बड़ी प्रायोरिटी के साथ पूरे देश को सोचना और गंभीरता से विचार करना चाहिए। बजट स्क्रूटनी, मैं अपने अनुभव से चीज़ें आपके सामने रख रहा हूं। मुझे लगता है कि जब हम लोग बजट डिस्कस करते थे तो कई जटिल टेक्निकल टर्मिनोलॉजी अच्छी तरह से
हमें नहीं, कम से कम मुझे नहीं मालूम थे, रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, फिजिकल डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट, रेवेन्यू लॉस, बजट एस्टिमेट, रिवाइज्ड एस्टिमेट, ये सारे टर्मिनोलॉजी आज हमें जानना जरूरी है, क्योंकि अंततः आर्थिक विकास का पैमाना ही दुनिया में आपकी स्थिति को तय कर रहा है। अगर आर्थिक रूप से आप मजबूत नहीं हैं तो भविष्य आपका बहुत बेहतर नहीं है। ये दुनिया की मौजूदा स्थिति है। हमें इसके साथ साथ अपने देश के सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को जानना होगा। यह जानना जरूरी है कि हमारे समाज के सोशल और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कहाँ हैं, हम गरीबी में कहाँ खड़े हैं, हम बाकी चीज़ों में कहाँ हैं, समाज का कौन सा तबका कहाँ है, किसको सबसे अधिक मदद की जरूरत है, आदिवासी कहाँ खड़े हैं, पिछड़े कहाँ खड़े हैं, गरीब कहाँ हैं। अगर ये सोशल इंडिकेटर्स हमें नहीं मालूम है, उसके अनुसार बजट एलोकेशन नहीं है, तो हम अच्छी तरह उसकी समीक्षा नहीं कर सकते। अगली बात मैं कहना चाहूँगा कि हमें हमारे विधायिका के प्रति आज देश में, हम स्वीकार करें या न करें, पब्लिक सिनिसिज्म है। हमें अपने काम काज से सदन को श्रेष्ठ तरीके से चलाकर अपनी यह खोई प्रतिष्ठा हासिल करनी। मैं यह भी उल्लेख करना चाहूँगा कि आम तौर पर सदन में दोपहर के बाद जिस रूप में अटेंडेंस कम होती है, उसे हमें बढ़ाना चाहिए। पुराने कानून जो बहुत पुराने हो गए हैं, कम से कम उन रिडंडेंट लॉज को हमें ख़त्म करना चाहिए, और जो कानून बनाएं, अब दुनिया में ये पद्धति आ गई है कि सनसेट क्लॉजेज हम उनके साथ जोड़ें। ऑब्सलीट लॉज को स्टैट्यू बुक में बने रहने से कन्फ्यूजन और उनका मिसयूज होता है। उनकी रेगुलर रिव्यूइंग रिपील जरूरी है। आपने सुना होगा इंडिपेंडेंस डे पर कुछ वर्षों पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक कानून का उल्लेख किया जो 1857 में बना था, जो 200 वर्षों से देश में लागू था। इस तरह अनेक रिडंडेंट लॉज हैं जो खत्म होने चाहिए। 2014 से 2020 1500 पुराने कानून रिपील किए गए, और कई अन्य राज्यों ने भी अपने कानून पुराने हटाए हैं। समय का अभाव है, नहीं तो मैं सबका उल्लेख करता। अगला बिंदु मैं कहना चाहूँगा कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस। बदलते समय में हमें अपने रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस के बारे में विचार करना चाहिए। ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर की नींव 1920 में पड़ी। 1952 के बाद डे टू डे कामकाज के अनुसार समय समय पर प्रोसीजरल चेंज हमने किए, पर वो कम्प्रहेंसिव नहीं थे। मेरा मानना है कि बदली परिस्थितियों में लोगों की आकांक्षाओं अपेक्षाओं के अनुरूप इनको मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत है, इन्हें रीलुक करने की ज़रूरत है, रिव्यू करने की ज़रूरत है। इसी तरह विधानसभाओं के रूल्स ऑफ प्रोसीजर में भी समय समय पर रिव्यू हुए, कुछ एक ने नई चीज़ें भी जोड़ी हैं, परंतु बदलते समय के संदर्भ में इन्हें रीलुक करने की ज़रूरत है। और ये काम दुनिया के दूसरे देश कर रहे हैं, मैं उसका उल्लेख करना चाहूँगा। इस तरह के रूटीन अमेंडमेंट्स के साथ समय के संदर्भ के अनुरूप व्यापक बदलाव के प्रयास दुनिया की अन्य संसदें कर रही हैं। यूके पार्लियामेंट सेलेक्ट कमेटी ऑन मॉडर्नाइजेशन ऑफ द रूल्स बनी, जिसने बेसिक स्ट्रक्चरल चेंज सजेस्ट किया। 2010 में ऑस्ट्रेलिया में मेजर पॉलिटिकल पार्टीज के बीच एक एग्रीमेंट हुआ बेटर पार्लियामेंट्री कंडक्ट के लिए। कैनेडियन पार्लियामेंट में मैग्रा कमेटी ऑन मॉडर्नाइजेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर 1985 में, एवं देन स्पेशल कमेटी ऑन मॉडर्नाइजेशन 2001 में बनी। इफेक्टिव एंड कंप्रहेंसिव स्क्रूटनी ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। दरअसल आप सब अच्छी तरह वाकिफ हैं कि कानून बनाने के दो पार्ट हैं। एक हम एक्ट पास करते हैं, दूसरे उसके अंदर जो रूल्स और रेगुलेशन हैं उसे इन्फोर्स करने के लिए वे सरकारी अधिकारी बनाते हैं और वही इंप्लीमेंट भी करते हैं। पर यह मॉनिटर करना कि रूल्स समय से बन रहे हैं, एक्ट के लेटर एंड स्पिरिट में बन रहे हैं, उनकी ड्राफ्टिंग ठीक है कि नहीं, यह देखना हम सांसदों और विधायकों का दायित्व काम है, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कमेटी का काम है। यह काम इफेक्टिवली और कंप्रहेंसिवली हम करें, इस पे हमें गौर करना चाहिए। पेंडिंग गवर्नमेंट एश्योरेंसेज। इसी तरह 25-30 वर्षों से सदनों के फ्लोर पर मंत्रियों द्वारा दिए जाने वाले सैकड़ों एश्योरेंसेज पेंडिंग है। यह सबको पता है कि इन्हें इम्प्लीमेंट करने के लिए इनका न बजट में प्रावधान होता है, न ही योजना में ऐसे पुराने एश्योरेंसेज को चिन्हित करके ड्रॉप करना जरूरी है। इसमें अनावश्यक श्रम और जनता का पैसा खर्च हो रहा है, इस पर हमें गौर करना चाहिए। आप और हम अच्छी तरह जानते हैं कि पार्लियामेंट्री कमिटीज़ में कैसे हम विधायिका के लोग दलों के दायरे से ऊपर उठकर काम करते हैं। सरकार की अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने और मॉनिटर करने का काम कमेटियों के द्वारा होता है।
सरकारी अधिकारियों से सवाल पूछने का अवसर मिलता है, विषय के जानकार लोगों से हम बहुत कुछ तहमे जाते हैं और सीखते हैं, इसलिए हमें पूरी तैयारी के साथ इसमें भाग लेना चाहिए। आज दुनिया में ट्रेनिंग का बड़ा महत्व है, हमें विधायिका के लोगों को भी एक्सपर्ट से इन विषयों को जो दुनिया में तेजी से बदल रहे हैं समझना चाहिए, और विधायिका को कैसे हम बगैर शोर शराबा, व्यवधान, असंसदीय तौर तरीका जो दिखाई देता है उसको दूर कर अपनाएं। गांधी जी को मैं कोट करना चाहूँगा, उन्होंने यंग इंडिया में लिखा, इनडिसिप्लिन इज वॉयलेंस। जवाहरलाल जी ने साफ साफ कहा था कि ये प्रॉपर डेमोक्रेसी इज सिंपली सेल्फ इम्पोज्ड, देयर इज नो डेमोक्रेसी इफ देयर इज नो डिसिप्लिन। आश्चर्य होता है मुझे कि कई बार मैंने पाया है कि विशिष्ट अवसरों पर जो सामूहिक निर्णय और संकल्प हम लोग लेते हैं वो हम कुछ दिन में भूल जाते हैं। मसलन पार्लियामेंट ने गोल्डन जुबली के अवसर पर एक प्लेज लिया था कि सदन में क्वेश्चन आवर डिस्टर्ब नहीं करेंगे, वेल में नहीं आएंगे, परंतु उसका पालन करने में हम कितना सफल हुए ये हमें इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। चैलेंजेस टू प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, हाउस चलाने में प्रिजाइडिंग अफसर्स को आज कितनी दिक्कतें हैं, इसमें मैं बगैर कुछ कहे फॉर्मर स्पीकर सोमनाथ चटर्जी जी को कोट करना चाहूँगा। आई कोट, इफ आई टेक ए स्ट्रॉन्ग एक्शन आई एम ब्लेम्ड फॉर बीइंग पार्टिसन, इफ आई टेक ए माइल्ड एक्शन देन ऑल्सो आई एम एक्यूज्ड। इसलिए इस पर हमें गौर करना चाहिए। सदन के बैठने की संख्या और बढ़े, अवधि बढ़े, इस पर भी हमें विचार करना चाहिए, क्योंकि हिरन मुखर्जी ने बहुत पहले कहा था 78 में, इफ पार्लियामेंट डिड नॉट प्राइज इट्स डिग्निटी इट्स पावर ऑल्सो विल बी इम्पेरिल। टाइम मैनेजमेंट इन हाउस ये बड़ा चुनौतीपूर्ण काम है और हम सब मिलकर ही साथ में इसको पूरा कर सकते हैं। डिस्कस, डिबेट एंड डिसाइड। पार्लियामेंट सबका मतलब ही होता है, यह विधायिका का यह फोरम फॉर डिस्कशन, जहाँ चीज़ें पक्ष विपक्ष में चर्चा से तय होती हैं, परंतु उसके लिए सदन में ऑर्डर जरूरी है, क्योंकि डिसऑर्डर एंड डिस्कशन दोनों एक साथ संभव नहीं। इसलिए सांसदों, विधायिका के लोगों को अपने कामों को रेगुलेट करने के लिए रूल्स ऑफ प्रोसीजर बने हैं। हमारे रूल्स ऑफ प्रोसीजर के पीछे स्पिरिट है कि विपक्ष को अपनी बात रखने का पूरा मौका मिले एवं सरकार उनका उत्तर दे, निर्णय मेजॉरिटी वोट के आधार पर। यह कॉन्स्टिट्यूशन का स्पिरिट है। उसके बाद सरकार का काम चले। चेयर से भी यही अपेक्षा है कि उसे फेयर और इम्पार्शियल तरीके से संपन्न करे। रूल्स एंड पार्लियामेंट्री कंडक्ट जो हमने मिलकर बनाया है उसका हम पालन करें, क्योंकि ये टूटता है तो बैलेंस खराब होता है। अंत में अगर हमने इन चीज़ों को नहीं गौर किया तो डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ने क्या कहा था, वो कोट मैं आपको सुनाना चाहूँगा। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ने एक चेतावनी के साथ 21 मई 1952 को कहा था कि अगर हमने, विधायिका ने अच्छी तरह अपना काम नहीं किया तो उसका परिणाम क्या होगा। Unless we in Parliament realize our responsibilities and shoulder the task of looking after the welfare and good of the people within a reasonable time, I have not the slightest doubt in my own mind that this Parliament will be treated by the public outside with utter contempt. It would be a thing not wanted at all. मुझे अपने निजी विचारों को इस अगस्त फोरम में रखने का मौका मिला। आयोजकों को पुनः धन्यवाद। यहाँ उपस्थित सभी महत्वपूर्ण लोगों के प्रति कृतज्ञता। ध्यान से आपने मेरी बात सुनी। कार्यक्रम के आयोजकों को पुनः बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी व्यवस्था के लिए। साथ ही पहली बार मुल्क में इस तरह की सूझ पर सार्थक और बेहतर चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हरिवंश जी, और ये बताने के लिए कि कैसे डिसऑर्डर और डिस्कशन जो है वो एक साथ नहीं होता। तो जहाँ पर अनुशासन रहेगा वहीं पर अच्छी बातचीत हो सकती है, और यही कोशिश लगातार रही है इस मंच की कि अनुशासन के साथ बातचीत हो। मैनी थैंक्स टू यू हरिवंश जी इस बात को दोहराने के लिए। और ये एक ऐसा मंच है जहाँ पर लगातार संवाद हो रहा है, सबकी आवाज़ को जगह मिल रही है। तो इस समय मैं रिक्वेस्ट करूंगी अपनी टेक्निकल टीम से कि एक वीडियो संदेश यहाँ पे चलाएंगे हम श्री मल्लिकार्जुन खड़गे का। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं राज्यसभा में और जो प्रेसिडेंट हैं भारतीय नेशनल कांग्रेस के, तो उन्होंने अपना एक वीडियो संदेश भेजा है इस राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन के लिए। कैन आई रिक्वेस्ट द टेक्निकल टीम टू नाउ प्लीज प्ले द वीडियो मैसेज। I express my sincere thanks for the kind invitation to be the chief guest of the
valedictory function of the National Legislators Conference. Much as I wished it would not be feasible for me to attend the function owing to my pre-committed engagements at the outset, I commend this initiative of convening the National Legislators Conference, which would facilitate bringing together legislators of legislative bodies from all across the country on a single platform for sharing their respective views of their experience as legislators. It is my fond hope that this gathering will promote meaningful dialogue and exchange of ideas to strengthen our democratic institutions. I would wish to share my views based on my more than half-century experience as a legislator both at the state level and in Parliament on this occasion. As the legislators gather in this three-day conference to deliberate on the challenges and opportunities that lie ahead, it is essential to reflect upon the invaluable contributions of our Indian freedom fighters who laid the foundation for our constitutional democracy. The tireless efforts of visionaries like Mahatma Gandhi, Pandit Jawaharlal Nehru, and B.R. Ambedkar in shaping our nation's destiny cannot be overstated. Mahatma Gandhiji's philosophy of non-violence and civil disobedience paved the way for a peaceful struggle against colonial rule. Pandit Nehru, with his deep commitment to parliamentary democracy, championed the cause of a united and progressive India. He recognized the significance of scientific temper and the need for a rational approach to governance. Dr. B.R. Ambedkar's vision for equality and social justice found expression in the drafting of our revered Constitution, which enshrines the principles of liberty, equality, fraternity, and justice. At this moment, I would want to quote Dr. Ambedkar, who famously said, "Political democracy cannot last unless there lies at the base of its social democracy." What does social democracy mean? It means a way of life which recognizes liberty, equality, and fraternity as the principles of life. As we celebrate the accomplishments of our democratic journey, it is imperative to acknowledge that there is still work to be done. Enhancing the quality and standards of parliamentary debates and discussions is a pressing need. It is through informed and constructive deliberations that we can address the concerns of our diverse nation and arrive at comprehensive solutions. We must strive to foster an atmosphere where ideas are debated based on their merit and the collective wisdom of our legislators shapes our policies and laws. Furthermore, the legislator's duty and responsibility to act as a check on the executive cannot be understated.
The separation of powers is a cornerstone of our democracy, ensuring that the executive remains accountable to the people. It is crucial for legislators to uphold this responsibility with the utmost diligence, maintaining a robust system of checks and balances to safeguard the interest of our citizens. We must always remember that democracy can only function through debate, deliberations, and discussions. Pandit Jawaharlal Nehru, in this regard, had once said, democracy means tolerance, tolerance not merely of those who agree with us, but of those who do not agree with us. I believe that such conferences provide a valuable platform for legislators to collaborate, learn from each other's experiences, and contribute towards the progress and well-being of our nation. I wish this conference all the success. Thank you. Thank you very much, sir. Let's give a big round of applause for Shri Mallikarjun Kharge ji. He wanted to be here in person, but it's good fortune that he could at least share his video message. And now, it's my honor and privilege to welcome on stage the host of 2nd National Legislators Conference, the Honorable Chief Minister of the State of Goa. Please put your hands together to welcome Dr. Pramod Sawant ji. For the first National Legislature Conference, हमारे साथ में यहाँ पे मौजूद हैं कि पूर्व लोकसभा स्पीकर डॉक्टर मीरा कुमारी जी, श्री शिवराज पाटिल जी, यहाँ के आज के समापन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी, यहाँ के महाराष्ट्र के स्पीकर श्री एडवोकेट नार्वेकर जी, बाकी राहुल कराड़ और बाकी सभी मान्यवर जो स्टेज पे उपस्थित हैं और सभागृह में आए हुए सभी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक आए हुए सभी विधायकगण, मैं आपका बहुत बहुत, महाराष्ट्र राज्य के गवर्नर यहाँ पे मौजूद हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ और उपस्थित सभागृह में बैठे हुए मेरे सभी भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत करता हूँ। फॉर द 2nd नेशनल लेजिस्लेटिव कॉन्फ्रेंस आप गोवा में आने के लिए तैयार हैं? भैया तैयार है क्या? तैयार है तो मेरे साथ में बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे। तो फिर मैं गोवा में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। गोवा तो सबसे छोटा प्रदेश है, लेकिन फिर भी महाराष्ट्र के बाद हमारी जिम्मेदारी बनती है कि 2nd नेशनल लेजिस्लेटिव कॉन्फ्रेंस जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी और राहुल कराड़ ने हमें जिम्मेदारी सौंपी है, तो डेफिनेटली हम 2nd नेशनल लेजिस्लेटर कॉन्फ्रेंस गोवा में करने के लिए तैयार हैं और बिल्कुल इसी तरह से बड़ा आयोजन गोवा में भी रहेगा और आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं 3 दिन के इस कॉन्फ्रेंस में ढेर सारे डिबेट डिस्कशन यहाँ पे हुए होंगे। इस आज़ादी के अमृत काल में मुझे लगता है जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर विकसित भारत 2047 की बात कर रहे हैं, तो इस तरह के कॉन्फ्रेंस की बिल्कुल ज़रूरी है। अभी जो अपने राज्यसभा के जो स्पीकर रहे हरिवंश जी, उन्होंने जो बात की कि द रूल एंड प्रोसीजर कंडक्ट ऑफ द असेंबलीज, लोकसभा, राज्यसभा, इनमें जो बदलाव लाना है, द कॉन्स्टिट्यूशंस, हमें जो डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ लॉज करने हैं, नए भारत के लिए जिस तरह से हमें बदलाव लाना है, मुझे लगता है कौन ला सकता है, तो डेफिनेटली
द लेजिस्लेचर मिनिस्ट्री और इसमें कौन सुझाव दे सकता है, तो डेफिनेटली यू पीपल द MLAs एंड MPs कैन गिव दिस द सजेशंस। तो इसकी शुरुआत अपने अपने राज्य से होनी चाहिए और इसकी शुरुआत डिबेट और डिस्कशन से होनी चाहिए। मुझे लगता है कि लोकसभा के जो स्पीकर इस कॉन्फ्रेंस में जो गाइडेंस की तरह यहाँ पे रहे हैं, तो आगे यानी इसी गाइडेंस को आगे लेते हुए हर राज्य में इसका डिस्कशन डिबेट हो जाए तो ही हम आगे ले जा सकेंगे। आज इस कॉन्फ्रेंस में जैसे कि मैं खुद स्पीकर रहा हूँ, मैंने कॉमनवेल्थ एसोसिएशन अटेंड किया है, कॉमन पार्लियामेंट एसोसिएशन अटेंड किया है, लेकिन उससे भी ज़्यादा बड़ा आयोजन राहुल कराड़ और MIT ने किया है। इनके लिए मैं बहुत बहुत उनका अभिनंदन करता हूँ। सही में एक अच्छा आयोजन देश में से सभी ने ईच एंड एवरी लेजिस्लेचर को अपने फोरम के ऊपर डिस्कशन, द बेस्ट प्रैक्टिसेस इन ईच एंड एवरी स्टेट्स, द बेस्ट अच्छा गुड गवर्नेंस जो स्टेट में है वो डिस्कशन के लिए, डिबेट के लिए यहाँ पे मौजूद है और वही डिबेट और डिस्कशन डॉक्यूमेंट की तरफ से वो तैयार कर रहे हैं और द स्टडी पर्पस ही इज शेयरिंग द डॉक्यूमेंट्स विथ रेस्ट ऑल द लेजिस्लेचर्स। और यही अपने लिए एक अच्छा फोरम है जिस तरह से बाकी स्टेट के बेस्ट प्रैक्टिसेस हम डिस्कस कर सके और बेस्ट प्रैक्टिसेस इम्प्लीमेंट करने के लिए हम एक साथ में ले सके। तो फिर मुझे लगता है कि इस तरह के फोरम के ऊपर डिस्कशन होना बहुत ही ज़रूरी है और कंटिन्यूसली इस तरह का कॉन्फ्रेंस होना भी ज़रूरी है। बिल्कुल इस तरह के कॉन्फ्रेंस में हम पूरे विविधता से एकता और एक राष्ट्र की एकता रखने के लिए हम सब एकजुट से काम कर सकते हैं और वही काम आगे बढ़ाने के लिए इस तरह की कॉन्फ्रेंस जरूरी रहेगा। एंड इफ हम सब बेस्ट प्रैक्टिसेस एक साथ में करेंगे और अभी तक जो जो प्रैक्टिसेस हमने देखे हैं, यानी लास्ट टाइम वी हैव ऑर्गेनाइज्ड द नेशनल यूथ पार्लियामेंट, नेशनल पंचायत पार्लियामेंट, नेशनल वुमेन पार्लियामेंट और गोवा में 5 दिन का यशस्वी आयोजन हम MIT ग्रुप ऑफ राहुल कराड़ जी के साथ बहुत अच्छी तरह से नेशनल लेवल कर सके थे और इससे आगे हम ये सेकेंड नेशनल लेजिस्लेटर फोरम गोवा में बिल्कुल अच्छी तरह से करेंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। मैं आज इस अवसर पर जो आज़ादी के अमृत काल में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो क्लीन इंडिया से फिट इंडिया, जो स्वच्छ भारत से सशक्त भारत की नींव रखी है और नव भारत की निर्माण और विकसित भारत का निर्माण का जो सपना मुझे लगता है अपने देश को दिखाया है, वही आगे बढ़ाने के लिए जो जो चेंजेस सजेस्ट किया है, वही गुड प्रैक्टिसेस इररिस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज वी वांट टू फॉलो, अपने अपने प्रदेश में फॉलो करना जरूरी है और वही मुझे लगता है कि गुड गवर्नेंस का मॉडल अपने स्टेट में फॉलो करना जरूरी है। तो टीम इंडिया की तरह हम जब यानी नव भारत की निर्माण की सोच ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर आगे रख रहा है, तो वही सोच आगे रखते हुए यानी अगेन मैं कहूँगा कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी हमने पहली सोच नव भारत की निर्माण की रहना चाहिए। जब विकसित भारत 2047 की रहते हैं तो हर एक प्रदेश विकसित होना जरूरी है। हर प्रदेश विकसित होने के लिए हर प्रदेश के MLA की सोच उसी तरह से आगे बढ़नी चाहिए और वही सोच हम सब आगे लेके विकसित भारत को आगे लेके जाने के लिए नेशनल लेजिस्लेटर फोरम का जो डिबेट डिस्कशन 3 दिन का रहा है, वही डिबेट डिस्कशन हमें आगे काम आएगा। हमारे अपने हर एक असेंबली सेशन हो और हमारे प्रदेश में इस तरह के अच्छे कार्यक्रम आयोजन के लिए भी इसकी बहुत उपयोगिता होगी, ये मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ। मैं इस अवसर पर जी हाँ बिल्कुल ऑर्गेनाइजर्स का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ क्योंकि इस तरह का फर्स्ट टाइम द नेशनल लेजिस्लेटर फोरम कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक इस तरह से
विविध पार्टी यानी डिफरेंट पार्टी के सभी एमएलएस को एक जगह पे लाना और वन प्लेटफॉर्म पे इस तरह का डिस्कशन करना ये बहुत ही डिफिकल्ट था, लेकिन राहुल कराड़ जी ने जो करके दिखाया, इसलिए राहुल कराड़ जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और एमआईटी ग्रुप ऑफ के आयोजन का भी बहुत बहुत उनका भी अभिनंदन करता हूँ। और फिर से एक बार 2024 के आयोजन के लिए गोवा आपके साथ में है, गोवा आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आप सभी लोग 2024 के सेकंड लेजिस्लेटर फोरम में, नेशनल लेजिस्लेटर फोरम में आप लोग आएंगे और इसी तरह से इसका एक बड़ा आयोजन हम गोवा में करेंगे। यही कह के मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। तो गोवा आप लोगों का इंतज़ार करता है। आप सब लोग तैयार हैं गोवा जाने के लिए। उम्मीद है कि आप सब लोग गोवा में भी इसी तरह से शामिल होंगे और आप सबको आमंत्रण मिल गया है गोवा आने का। और महाराष्ट्र ने इस बार बहुत अच्छी मेज़बानी की है। महाराष्ट्र हैज़ बीन द होस्ट स्टेट ऑफ द नेशनल Legislators Conference, the first ever National Legislators Conference, and Maharashtra has created history. I would now like to request the Honorable Chief Minister of Maharashtra, Shri Eknath Shinde, to please address the gathering. इस राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन 2023 में उपस्थित हमारे महाराष्ट्र के महामहिम राज्यपाल रमेश बैस जी और डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा के हरिवंश जी, माजी लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार जी, हमारे मित्र गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर जी, विधान परिषद की उपसभापति डॉक्टर नीलम ताई गोरे जी, माजी लोकसभा अध्यक्ष शिवराज पाटिल जी, कर्नाटका के विधानसभा अध्यक्ष खादर फरीद जी, बिहार के विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी जी, डॉक्टर सीपी जोशी जी और श्री शैलो जी, देवेश चंद्र ठाकुर जी, अरुण कुमार उपरेती, सेल्वम पंडेचेरी विधानसभा अध्यक्ष, डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी और इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक संयोजक जिन्होंने बहुत ही शानदार काम किया है, पूरे हिंदुस्तान को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम जिन्होंने किया, ये डॉक्टर राहुल कराड़ जी। और मैं जब यहाँ बैठा था तो वो सामने बैठे थे, तो इसलिए मैंने उनको बुलाया यहाँ पर स्टेज पे आके बैठिए, क्योंकि ये जादुई भरा काम आपने किया है और देश में से लगभग 1900 विधायक एक मंच पर, एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम आपने किया है। और इसलिए मैं महाराष्ट्र की ओर से आपको, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के नाते आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपका अभिनंदन करना चाहता हूँ, आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और सभी पूरे देश भर से आए हुए सभी विधायक, उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आई वेलकम ऑल द लेजिस्लेटर्स ऑन द बिहाफ ऑफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट। और मैंने अभी अभी आपका कराड़ जी का तो स्वागत कर दिया है। इस
ये जो आज राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन हुआ है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये राजनीति से परे है, राजनीति से उठकर है। यह सभी पार्टियों के, सभी दलों के लोग यहाँ उपस्थित हैं। हमें अपने अनुभव, विचारों और योजनाओं को एक दूसरे से शेयर करने के लिए एक उपयुक्त ऐसा अवसर आज प्राप्त हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा देश है और आज यहाँ पे मैं लगभग कहूँ तो आधे लोकतंत्र को यहाँ लाने का काम राहुल और उनके टीम ने किया है। यह बहुत ही खुशी और गर्व की बात है कि यह महत्वपूर्ण जो राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन है, ये इसका शुभारंभ हमारे महाराष्ट्र राज्य में और खास करके मुंबई में हो रहा है। ये हमारे सब के लिए गौरव की बात है। यह मुंबई हमारे भारत की आर्थिक राजधानी है और इसीलिए पूरे देशवासियाँ, दुनिया भर से लोग इस मुंबई में आते हैं और यह भूमि छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है। छत्रपति शिवाजी महाराज ऐसे राज्यकर्ता थे जिन्होंने सर्वप्रथम लोकतंत्र की कल्पना की थी। न सिर्फ कल्पना की बल्कि उसे स्थापित भी किया। हम सब लोग उनके आदर्श पे चलने का काम कर रहे हैं। इसे महज सहयोग नहीं कहा जा सकता कि इसकी शुरुआत महाराष्ट्र से हो रही है। अब गोवा में अगली बार हो गया। हमारे प्रमोद जी ने सबको न्योता तो दिया है और बड़े जोर शोर से अगला सम्मेलन भी गोवा में होगा। इसलिए मैं पहले ही मुख्यमंत्री प्रमोद जी सावंत जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, उनका भी अभिनंदन करता हूँ। मैंने कहा था कि ये शुरुआत महाराष्ट्र से हो रही है, महज संयोग नहीं है। विधायक शब्द के दो मतलब होते हैं। हिंदी में विधि मतलब लॉ बनाने वाले और मराठी में विधायक का मतलब है अच्छा और रचनात्मक काम करने वाले। और इसीलिए आज हम कानून बनाने वाले, कानून पारित करने वाले, अन्य अन्य राज्य के सब विधायक यहाँ इकट्ठा हुए हैं। यह उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति पर लोकतंत्र के 3 मूलभूत स्तंभ को मजबूत करने की जिम्मेदारी होती है। ये 3 स्तंभ है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। और मैं ये भी कहूँगा, ये हम पूरे दुनिया, देश भर में हम अलग अलग राज्य से विधायक हमें लोग चुनकर विधानसभा में भेजते हैं और वहाँ पर हम लोग हमारे चुनाव क्षेत्र के तो काम करते हैं, विधानसभा का जब सत्र होता है, सेशन, लेकिन उसके साथ हर स्टेट की, हमारे देश के बारे में भी जो पॉलिसी होती है उसके बारे में भी चर्चा होती है। मैं यहाँ पर यह भी कहूँगा कि स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का भाषण मैंने सुना था। उन्होंने कहा था, सरकारें आएगी, सरकारें जाएगी, पार्टियां बनेगी, पार्टियां बिगड़ेगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। हमारी ये सबकी जिम्मेदारी है कि चाहे कुछ भी हो, हमें लोकतंत्र की रक्षा करनी चाहिए। और हमें विश्वास है कि इस मंच पर की गई चर्चाओं और नए विचारों से जनता की भलाई निश्चित रूप से सुनिश्चित होगी और हमारे राष्ट्र के डेमोक्रेटिक ढांचे को और मजबूत ऐसा कार्यक्रम करेगा। इसलिए ऐसे कार्यक्रम की आवश्यकता भी है। आज G20 के माध्यम से
हमारे भारत देश को अध्यक्षता प्राप्त हुई है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में G20 के समिट हुए, मीटिंग हुए, मुंबई में भी हुई है। ये हमारे पूरे देशवासियों के लिए गौरव की बात है कि G20 की प्रेसिडेंटशिप हमारे भारत को मिली है, हमारे देश को मिली है, हमारे हिंदुस्तान को मिली है। और इसलिए इस कार्यक्रम की वजह से पूरी दुनिया का ध्यान हमारे देश में पर भी केंद्रित हुआ G20 के माध्यम से। मैं सभी राजनीतिक दलों से आह्वान करूंगा, विनती करूंगा कि हम इस देश के लिए क्या कर सकते हैं, हर एक राज्य के लिए अपने अपने क्या कर सकते हैं। निश्चित रूप से देश के हित में कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हमें करना चाहिए। जो अच्छा हो रहा है उसे अच्छा कहने की भी आवश्यकता है। हमें क्या मिलेगा, इससे हम देश को क्या देंगे, इस पे विचार करने की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और सब हम लोग हमारे राज्य के विकास के लिए काम करते, हमारे राज्य के लिए हमारे स्पीकर जी ने भी कहा है, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर जी भी यहाँ पर कार्यक्रम में आके गए, और हम हमारे व्यक्तिगत लाभ के बगैर हम हमारे राज्य के विकास के लिए, हम हमारे राज्य की जनता के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये हर राज्य का विधायक सोचेगा तो निश्चित रूप से उस राज्य की प्रगति होगी, उस राज्य का विकास होगा। राज्य का विकास होगा तो देश का विकास होगा, राज्य आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। यही हमारी सोच होनी चाहिए। और इसीलिए मैं आप सभी लोगों को फिर एक बार धन्यवाद दूंगा, क्योंकि हम लोग जब विधानसभा में जाते हैं तो विधानसभा में मैं भी मुख्यमंत्री बन गया, लेकिन विधानसभा का पहले सदस्य बन गया, उसके बाद ही मुख्यमंत्री बन गया। ऐसे यहाँ सभी लोग हैं बैठे, स्पीकर है, डिप्टी स्पीकर है, मुख्यमंत्री जी है और सभी मंत्रीगण। और इसलिए हम तो हमारे चुनाव क्षेत्र की बातें तो विधानसभा सत्र में रखते हैं, लेकिन चुनाव क्षेत्र के साथ साथ हमारे राज्य के विकास, राज्य की पॉलिसी, इसके ऊपर भी हमें, और हमारे राज्य का, देश का विकास भी हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। और उस मुद्दे को भी हमें प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। हमने देखा है हमारे देश का नया संसद भवन, उसका भी उद्घाटन हुआ और रिकॉर्ड टाइम में ऐतिहासिक भव्य वास्तु का निर्माण भी हो गया, और उसका उस ऐतिहासिक क्षणों का भागीदार होने का मौका भी हमें मिला। ये भी हमारे लिए, वो लोकसभा का जो संसद है, लोकशाही का पवित्र मंदिर है। जैसे विधानसभा हमारा सार्वभौम मंदिर होता है, वैसा लोकशाही का मंदिर, हमारे देश का मंदिर, लोकसभा का संसद भी होता है। और डिप्टी चेयरमैन यहाँ पर उपस्थित है लोकसभा राज्यसभा के, उन्होंने भी उस वक्त संबोधित किया था। और इसमें ये सभी बातें जो है ये राजनीति के परे होने चाहिए। राजनीति के स्थान पर राजनीति हमें करनी चाहिए, लेकिन हमें सभी लोगों ने मिलके इस देश के सार्वभौमिकता को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। यही मेरा आपसे अनुरोध है। चुनावी राजनीति तो आती है जाती है, जैसे मैंने कहा, लेकिन यहाँ पर हर विधानसभा सेशन में या लोकसभा में इस देश के बारे में, राज्य के बारे में, उसके प्रगति के बारे में, उसके उन्नति के बारे में हमें विचार रखने की आवश्यकता है। और यहाँ पर अलग अलग, हमारे देश में अलग अलग पार्टियां हैं, उनके अलग अलग विचार हैं, लेकिन अलग अलग विचार होने के बावजूद भी एक मंच पर आने का अवसर आप सभी को मिला है। और यह अवसर देने वाले डॉक्टर राहुल कराड़, इनका फिर एक बार आप सभी के माध्यम से मैं अभिनंदन करूंगा। और निश्चित रूप से राजनीति से ऊपर उठकर देश को और शक्तिशाली बनाने की चर्चा यहाँ हुई है, और यह हमारे लिए, सबके लिए बहुत ही बड़ी बात है, गर्व की बात है। आज हमारा देश
आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। अभी मैं यही कहूँगा कि निश्चित रूप से बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। ऐसे परिस्थिति में हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बनाए रखने का काम भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। निश्चित रूप से ये भी सराहनीय है और सराहनीय है, और इसका स्वागत खुले दिल से हमें करना चाहिए। जो सच है सच है, और इसीलिए निश्चित रूप से अपने देश का विकास का विचार कर एक साथ आना, विचार मंथन करना और कुछ बुनियादी प्रश्नों पर समाधान खोजना, ये भी बात महत्वपूर्ण है। इसलिए ऐसे प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है। वर्तमान में एक बड़ा निश्चित रूप से परिवर्तन चल रहा है, प्रणालियाँ विकसित हो रही है, व्यक्ति रूपांतरित हो रहे, और भारत तकनीकी प्रगति कर रही है। एडवांस टेक्नोलॉजी का हम लोग अब इस्तेमाल कर रहे हैं, और निश्चित रूप से ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी बात है। इस सम्मेलन के जरिए राजनीति से हटकर बात हो रही है, ये भी निश्चित रूप से समाधान की बात है। इससे हमारे लोक प्रतिनिधियों के बीच सहयोग और तालमेल बढ़ेगा। नहीं तो कौन काम मिलता है एक दूसरे को, सब अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं। अभी तो पूरे देश में से सभी राज्यों के लोग यहाँ पर आए हैं, आपस में भाईचारा बढ़ता है, बातचीत होती है, अपने अपने विचार एक दूसरे को शेयर किए जाते हैं, अपने राज्य की प्रगति, अपने राज्य के मुद्दे, अपने राज्य की पॉलिसी, ये एक दूसरे को हम जब शेयर करते हैं तो निश्चित रूप से इसका लाभ अपने अपने राज्य को होता है। और राजनीति में भले पार्टियां अलग हो, विचार अलग हो, लेकिन देश और जनता की भलाई का ध्येय अंतिम है। और इसीलिए इन 3 दिवसीय सम्मेलन में कई प्रसिद्ध नेशनल ग्लोबल लीडर्स के साथ साथ विभिन्न दलों के नेताओं और लीडर्स को सुनने का भी सभी लोगों को अवसर मिला है। मुझे आते आते राहुल जी ने बताया, सब उनका नियोजन बताया, कैसे कौन सा विधायक कैसे बन गया, कितनी मेहनत किया, उसकी बैकग्राउंड क्या है, और इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है, मोटिव क्या है, ये सब देखते मैंने देखा बहुत बड़ा नियोजन है। मुझे पहला, और ये व्यवस्था, ये सम्मेलन मुंबई में हो रहा है, ये भी मैंने कहा है कि हमारे लिए गौरव की बात है। और इसी सम्मेलन निश्चित रूप से भविष्य की कई अच्छी योजनाएं और कार्यक्रमों को आरंभ करेगा, गति शक्ति देगा, ऐसा विश्वास मुझे है। इस तरह के सम्मेलन हमें याद दिलाते हैं कि हमारा अंतिम ध्येय क्या है। स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता से मैं अपने भाषण का समापन करना चाहूँगा। हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल, वर्तमान के मोहजाल में आने वाला कल ना भुलाए, आओ फिर से दिया जलाए। चाहे कुछ भी हो, लोकतंत्र का दिया हमें जलाए रखना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और जय महाराष्ट्र। बहुत बहुत धन्यवाद आपका माननीय मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी। बहुत धन्यवाद आपका। याद दिलाया आपने, वाजपेयी जी को भी याद दिलाया कि सत्ताएं आती जाती रहती हैं, लेकिन लोकतंत्र को मजबूती से बचाए रखना है, और यही इस मंच का उद्देश्य है। बार बार हम इस बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हैं कि संवाद होता रहे। और अब मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ माननीय राज्यपाल महाराष्ट्र के श्री रमेश बैस जी को कि वो मंच पे आएं और आपके साथ अपने विचार साझा करें। मे आई प्लीज रिक्वेस्ट द ऑनरेबल गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र श्री रमेश बैस जी। आज के कार्यक्रम में उपस्थित महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी, गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी,
उपसभापति राज्यसभा श्री हरवंश जी, महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष श्री राहुल नार्वेकर जी, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष श्री शिवराज पाटिल जी, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष डॉक्टर मीरा कुमार जी, श्री अवध बिहार चौधरी जी, डॉक्टर CP जोशी जी, श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी, श्री लाल रिंड लिनियाना जी, देवेश चंद्र ठाकुर जी, सतीश महाना जी, श्री UT कादर जी, श्री अरुण कुमार उप्रेती जी, एमल बम सेल्वम और इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर राहुल कराड़ जी, विभिन्न राज्यों से आए प्रतिनिधिगण, सबसे पहले मैं महाराष्ट्र के राज्यपाल होने के नाते आप लोगों का मुंबई में हार्दिक स्वागत करता हूं। MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट द्वारा आयोजित राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन में देश के विभिन्न हिस्सों से आए सभी विधायकों का पुनः स्वागत करते हुए मैं अपनी बात रखना चाहूँगा। यह संभवतः पहली बार है कि भारत के सभी प्रदेशों के विधायक एक साझा मंच पर एकत्रित हुए हैं। मैं MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट को उनकी शानदार पहल के लिए बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है इस पहल से विधायकों को अपने अनुभव साझा करने और राज्य के विभिन्न हिस्सों में अपनाई जाने वाली सर्वोत्तम प्रथाओं को सीखने का अवसर मिलेगा। मैं वर्ष 1980 में मध्य प्रदेश विधानसभा का सदस्य बना था। उस समय छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा था। विधानसभा में मेरे 5 वर्षों ने मुझे संसदीय लोकतंत्र के कामकाज और कार्यों के नियमों को समझने में मदद की। प्रश्नकाल क्या होता है, शून्यकाल क्या होता है, स्थगन प्रस्ताव क्या होता है, प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है, यह मेरी समझ में नहीं आता था। मुझे यह भी पता नहीं था कि सदन की विभिन्न समितियां कैसे काम करती थी। इसलिए राज्य स्तर पर मेरे 5 साल काफ़ी शिक्षाप्रद रहे। इसने मुझे लोकसभा के सदस्य के रूप में मेरी अगली भूमिका के लिए मैं तैयार हुआ। मुझे 7 बार लोकसभा का सदस्य बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुझे विभिन्न संसदीय समितियों के अध्यक्ष और सदस्यों के रूप में कार्य करने का अवसर मिला। मैं आपको बताना चाहता हूं कि संसदीय समिति हमारे लोकतंत्र में कितनी प्रभावी भूमिका निभाते हैं। पहले विधानसभा में किसी विषय में बहस भाग लेने के लिए आवश्यक सामग्री एकत्रित करते थे, लेकिन अब नेट और गूगल के माध्यम से जल्द ही जानकारी हासिल कर सकते हैं। अक्सर देखने में आता है कि विधानसभा के समितियों की बैठक में विधायक तैयारी से नहीं आते, जिसके कारण चर्चा जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो पाता। यह देखा जाता है कि सदस्य विधानसभा की कार्यवाही के समय पूरा समय नहीं बैठते। अगर हम दूसरे सदस्य क्या बोल रहे हैं उसे भी सुने तो कई महत्वपूर्ण जानकारियां हमें मिल सकती है। अक्सर यह भी देखा जाता है कि विधानसभा की कार्यवाही प्रारंभ होती तो कोरम पूरा नहीं होता। कई बार जरूरी बिल पर बहस होती तो व्हिप के जरिए कोरम पूरा करना पड़ता है। अगर उत्कृष्ट सदस्य बनना है तो सभी कार्यवाही में भाग लेना चाहिए और अपनी बातों को सही ढंग से सदन में रखना चाहिए। सदस्य सदन में जो भी बोलता है
विधानसभा का धरोहर हो जाता है, वह रिकॉर्ड होता है। इसलिए कई सदस्य जब सदन के बहस में भाग लेते हैं तो कई बातों को रेफरेंस के रूप में बोलते हैं। इसलिए मेरा आग्रह है सभी सदस्यों को सदन में ज़्यादा से ज़्यादा समय देना चाहिए। जब कोई सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करता है तो उसे मसूरी, हैदराबाद, नागपुर या अन्य स्थानों पर प्रशिक्षण लेना पड़ता है। इसी तरह मुझे लगता है कि पहली बार सदन में कदम रखने से पहले एक विधायक को कम से कम 3 महीने का प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए। MIT, स्कूल ऑफ गवर्नमेंट और विभिन्न राज्य विधानमंडल इस दिशा में पहल कर सकते हैं। यह सम्मेलन हमारे लिए एक साथ आने, अपने विचारों का आदान प्रदान करने और एक दूसरे के अनुभवों को से सीखने का एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करता है। बहुत अच्छा होगा यदि यह सम्मेलन हर वर्ष आयोजित हो। विभिन्न विषयों पर रखे हुए सेशंस, राज्यों के पेवेलियन हमें एक दूसरे को समझने में उपयुक्त सिद्ध होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। विधायकों के रूप में नीतियों और कानूनों को आकार देने की बड़ी जिम्मेदारी आप लेते हैं, जो हमारे प्रदेश के नागरिकों के जीवन को सीधा प्रभावित करता है। हमारे फैसलों में समुदायों को बदलने, व्यक्तियों को सशक्त बनाने और प्रगति को गति देने की शक्ति है। इसलिए हमारे लिए यह अनिवार्य है कि हम उत्कृष्टता के लिए लगातार प्रयास करें, बदलाव का सहर्ष स्वीकार करें और शासन के लिए नवीन दृष्टिकोणों को बढ़ावा दें। पूरे इतिहास में महान नेताओं ने राष्ट्र निर्माण में ज्ञान और शिक्षा के महत्व को पहचाना है। इस सम्मेलन का विषय सर्वश्रेष्ठ अभ्यास और अभिनव विकासात्मक मॉडल सामाजिक और प्रासंगिक दोनों हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया। कई संसद को पेपरलेस बनाने की बात कही। हमें अपने अद्वितीय राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संदर्भों को अनुरूप उन्हें अनुकूलित करते हुए दुनिया भर से सफल मॉडलों को समझना और अपनाना चाहिए। नई संसद में डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए किसी भी भाषा में कार्यवाही पढ़ या सुन सकता है। यह डिजिटल संसद कागज रहित संसद होने जा रही है। मुझे विश्वास है कि अगले कुछ वर्षों में सभी राज्य विधानसभाएं भी कागज रहित हो जाएगी। इससे पहले बड़ी संख्या में सदस्यों को बजट के कागजात बांटे जाते थे। कागज भी भारी बर्बादी होती थी। इसके बाद राज्य विधानसभाएं भी कागजी कार्यवाही से दूर हो जाएगी। राज्य विधानमंडल आमतौर पर साल में 3 बार सत्र बुलाते हैं, यानी बजट, मानसून और शीतकालीन। यह देखा गया है कि राज्य विधानमंडल प्रति वर्ष पहले की तुलना में कम दिनों के लिए बैठक कर रहे हैं। राज्य विधानमंडल मुख्य रूप से कानूनों को पारित करने और बजट को मंजूरी देने के लिए जिम्मेदार है। राज्य विधानमंडल विभिन्न तंत्रों के माध्यम से कार्यपालिका सरकार के कार्यों पर एक पर्यवेक्षण निकाय के रूप में कार्य करती है। विधानसभा की कम बैठकें इसकी जांच की जिम्मेदारी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ती है। उदाहरण के लिए सरकार राज्य विधानमंडल में पारित होने के लिए विभिन्न विधेयक पेश करती है। इन विधेयकों का शासन और नागरिकों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। पर्याप्त बैठकों की कमी के कारण सदस्यों के पास विधेयकों के पर विचार विमर्श की तैयारी के लिए पर्याप्त समय नहीं होता है और उनमें से कई बिना चर्चा के ही पारित किए जाते हैं। कई महत्वपूर्ण विधेयक और यहाँ तक कि बजट भी बिना किसी चर्चा के एक ही दिन में पास कर दिए जाते हैं। वर्षों से राज्य केंद्रीय योजनाओं और कार्यान्वयन के केंद्र बिंदु बन गए हैं।
इसलिए सरकार के काम की जांच करने के लिए विधानमंडलों के लिए अधिक बार बैठक करना आवश्यक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 केवल निर्दिष्ट करता है कि राज्य विधानसभाओं की 2 बैठकों के बीच 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, किंतु राज्य विधानमंडलों के लिए बैठने के दिनों की संख्या निर्धारित नहीं करता। सन 2002 में संविधान के कामकाज की समीक्षा करने के लिए एक समिति ने सिफारिश की है कि 70 से कम सदस्यों वाले राज्य विधानमंडलों के सदनों को 1 वर्ष में कम से कम 50 दिन के लिए मिलना चाहिए और अन्य सदनों को कम से कम 90 दिनों के लिए मिलना चाहिए। कई देशों में राज्य विधानमंडल की बैठकों के लिए एक निश्चित कैलेंडर होता है। यह सुनिश्चित करता है कि अन्य राजनीतिक घटनाक्रम इसके कामकाज को प्रभावित नहीं करते। जब विधायक मामूली कारणों से सदन को बाधित करते हैं तो लोगों का लोकतंत्र पर से विश्वास उठ जाता है। व्यवधानों पर नियंत्रण रखने में पार्टी भी अहम भूमिका निभा सकते हैं। मैं आप सभी को सत्रों में सक्रिय रूप से भाग लेने, सार्थक चर्चाओं में शामिल होने और अपनी बहुमूल्य अंतर्दृष्टि साझा करने के लिए अनुरोध करता हूं। अंत में मैं इस उल्लेखनीय सम्मेलन के आयोजक में उनके अथक प्रयासों के लिए MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट की सराहना करता हूं। मैं सभी प्रतिभागियों, प्रतिनिधियों और पीठासीन अधिकारियों को इस कार्यक्रम को शानदार और सफल बनाने में उनके योगदान के लिए आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बहुत धन्यवाद आपका माननीय राज्यपाल, महाराष्ट्र के माननीय राज्यपाल। और ये पूरा जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत एक, जैसे कहते हैं, एक विचार से होती है और एक सपने से होती है, और वो सपना जो है श्री राहुल कराड ने देखा था। So it took him a long time to prepare for this day, to bring this day and to bring all of you together on this very beautiful platform। जब आप सब लोग अलग अलग क्षेत्रों और राज्यों से आए हैं, यहाँ इकट्ठा हुए हैं, I would like to now invite Dr. Rahul Karad ji to please come on the dais and address you। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। The respected dais, this is a very last important moment, a very emotional moment for all of you, and for me, it's quite emotional. Thank you so much, all the respected honorable MLAs, MLCs, respected ministers sitting in this very important historic auditorium. I just wish to express my gratitude for few members here. Particularly the state of Maharashtra, the Honorable Chief Minister, our Deputy Chief Minister, Shri Devendra Fadnavis ji, our patrons, the Mananiya Shivraj Patil ji, Meera Kumar ji, Sumitra Mahajan ji, and Manohar Joshi ji, उनके प्रेयर की हेल्थ के लिए भी हम प्रे करते हैं। ये चारों लोगों ने इतना काम किया पिछले 12 महीने में, पूरा भारत भ्रमण। I traveled each and every state, almost 22 states, and opposition leaders को, मुख्यमंत्री महोदय को, सबको मिलके इसके बारे में जो एक कंसेंसस हो के आप सब लोगों का यहाँ पे आना हुआ, मैं गदगद हूँ, बहुत इमोशनल भी आज हो गया हूँ कि ये जो कल्पना बहुत 3, 4, 5 साल पहले मैंने बहुत सारे लीडर्स से बात किया था इसके बारे में, ये आज एक मैनिफेस्टेशन, एक इमेजिनेशन इस तरीके से यहाँ पे साकार हुआ। बहुत बड़े दिल से माननीय मुख्यमंत्री महोदय, महाराष्ट्र का ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस उनकी तरफ देखता है, उन्होंने भी बहुत मन से इसकी तारीफ़ की। प्रमोद सावंत जी, आपका भी मैं मन से स्वागत अभिनंदन करता हूँ कि आपने ये ग्रेशियसली ये बैटन आज इस पर्टिकुलर NLC फाउंडेशन की संस्था की तरफ से, MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट की तरफ से एक्सेप्ट किया। मैं आपका आभारी हूँ। माननीय गवर्नर महोदय कुछ दिनों पहले MIT आए थे, उनका भी मैं आभारी हूँ। मैं स्पेशल रूप से, मतलब यहाँ हमारे मंच के ऊपर सभी विधानसभा के स्पीकर्स बैठे हुए हैं, मैं उनका मन से आभारी हूँ। लेकिन पिछले 12 महीने में ज़्यादा से ज़्यादा मैंने जिन महानुभाव स्पीकर्स को तकलीफ़ दिया इस विषय में, और कंटिन्यूसली इतने सारे कम्युनिकेशंस, कॉरस्पॉन्डेंस में CP जोशी साहब, सतीश महाना साहब, उत्तर प्रदेश असेंबली के स्पीकर,
हमारे राहुल नार्वेकर जी, मैं कहना चाहूँगा कि इवन देवेश चंद्र ठाकुर जी, आपको भी मैंने इस विषय में बहुत बार आपको इनपुट्स एंड अप्रोचेस वैलिडेट आपसे करवाए। मैं ज्ञानचंद गुप्ता जी को भी यहाँ पे याद करता हूँ कि जो हरियाणा विधानसभा के स्पीकर महोदय, और श्री कुलतार सिंह जी, उनको भी मैं याद करता हूँ कि ये 7 विधानसभाओं के अध्यक्ष, इन्होंने इस पूरे विषय में इसको बढ़ावा देने के लिए बहुत अविरत प्रयास और प्रयत्न करके, मतलब ये कई बार आपको लग रहा होगा कि ये कैसे ये बन गया, बिकॉज इन सभी महानुभावों ने, सुमित्रा ताई जी ने बीजेपी के सभी जगह पे फ़ोन किए, बाकी भी कांग्रेस के लोगों को भी किया, ऐसे नहीं है। उसी तरीके से मीरा कुमार जी ने भी, उनका तो वो लोकसभा के अध्यक्ष, उन्होंने भी सबको फ़ोन करके इस विषय में कि भाई एक बहुत महत्वपूर्ण है, सभी पार्टी फाउंडर्स को भी इसमें कम्युनिकेशन किया गया। मैं उनका सबका हृदय से, मन से मैं यहाँ पे आभार प्रकट करना चाहता हूँ। और आज यहाँ पे गिरीश गौतम साहब का भी मैं यहाँ पे नाम लूँगा, मध्य प्रदेश असेंबली के महान स्पीकर महोदय, एंड श्री पठानिया जी, हिमाचल प्रदेश के स्पीकर महोदय। तो ये 7-8 लोगों का एक इस तरीके से जो ग्रुप बन गया था। दिल्ली विधानसभा के स्पीकर हमारे बीच में नहीं है, तो गोयल साहब, उन्होंने भी इसमें बहुत एफर्ट लेके हमारा डायलॉग और काफ़ी सारी मीटिंग्स इसमें अटेंड की। मैं उनका यहाँ स्वागत अभिनंदन करता हूँ। इस पूरे ऑडिटोरियम में कुछ एमएलएज महाराष्ट्र के और महाराष्ट्र के बाहर के भी बैठे, वो कॉन्फ्रेंस क्यूरेट करने में उन्होंने इसमें भागीदारी दी। करीबन 350 एमएलएज को हमने, कि इसका स्ट्रक्चर और ढांचा और डिज़ाइन कैसे होना चाहिए, जो वॉल बाहर वहाँ पे लगा हुआ है, उनका भी मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इस विषय में मुझे मदद किया। सॉरी, यस, थैंक यू। तो मैं अभी इस पर्टिकुलर सेशन में इतना ही कहना चाहूँगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का मन से उन्होंने जो बहुत सुंदर मैसेज इस विषय के लिए, सुमित्रा ताई महाजन जी ने जिस तरीके से इस विषय में एफर्ट लेके मॉर्निंग में उसका आपके सामने एक्सप्रेस किया, बहुत ही सुंदर। इट इज़ वेरी वेरी मोटिवेटिंग माय डियर फ्रेंड्स। मैं श्री लीडर ऑफ अपोजिशन श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी का भी मैं आभारी हूँ कि उन्होंने भी इस विषय की महत्व समझते हुए इसको, जो एक स्पेशल, वो फिजिकली आना चाह रहे थे, लेकिन कुछ घर परिवार में होने के नाते उनके साथ बड़ी विस्तृत मेरी चर्चा हुई, लेकिन वो आ नहीं पाए। मैं उनका भी यहाँ पे आभारी हूँ। मैं राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन साहब श्री हरिवंश जी, जो इस विषय की हमेशा सराहना, जब भी मैं उनको मिला हूँ, भारतीय छात्र संसद जो बहुत बड़ा यूथ पार्लियामेंट का जो प्लेटफॉर्म है, उसकी उन्होंने सराहना की, MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट की सराहना की। और जब भी मिलता हूँ तो मैं और मेरे पिताजी आदरणीय विश्वनाथ कराड़ जी, जिनके आशीर्वाद से, जिनके क्रिएशन की वजह से ये जो शैक्षणिक संस्थान जो बना, और उनका भी मैं यहाँ पे मन से, हृदय से यहाँ पे नमूद करना चाहूँगा कि उन्होंने इस विषय में मेरा इनकरेजमेंट, मेरे इंस्टीट्यूशंस में जो ये जो विज़न में आगे लेके जा रहा था, तो मैं बहुत भावनापूर्ण तरीके से, उन्होंने मुझे, जब भी मैं पिछले 3-4 महीने में जब नर्वस होता था, तो आप आगे बढ़ो, आप चिंता मत करो। मुझे लगता था किस तरीके से रिस्पांस आएगा, 200, 300, 400 एमएलए, कितने एमएलए आएंगे पता नहीं, 500 आएंगे, 700 आएंगे, फैसिलिटी कितनी बड़ी करनी चाहिए, समझ में नहीं आ रहा था, कन्फ्यूजन हो रहा था। लेकिन आप सब लोगों ने इस विषय के ऊपर एक विश्वास और फेथ, और मैं पहले दिन भी इनॉग्रेशन में भी मेरी ये बात हुई कि आप सब लोगों का फेथ इस विषय में होना बहुत ज़रूरी है। किसी शंका से ये प्लेटफॉर्म मुख्यमंत्री महोदय की, ये बीजेपी का है कि कांग्रेस का है कि शिवसेना का है, तो ये बात मैंने उद्घाटन में भी बोली, और उसी बात को एक तरीके से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी जिस तरीके से आपके सबके सामने रखा, मैं उनको वही बोला, आप जिस तरीके से बात कर रहे तो मन की उदारता अटल बिहारी वाजपेयी साहब की मुझे याद आई। और राजनीति में मुझे लगता है ये मन की उदारता हमें सबको बढ़ाने की ज़रूरत है, और तभी हम जैसे एक्टिव सिटीज़न और जो सोसाइटी के जो लोग हैं, हमारी एम्पावरमेंट हो पाएगी और हम कुछ आगे चल के हम काम कर पाएंगे। तो आप सब लोग हमारे लॉ मेकर्स हैं, इस सोसाइटी का, किसी भी कंट्री का लॉ एंड लॉ एग्जीक्यूटिव्स, लॉयर्स एंड अदर मशीनरी, एग्जीक्यूटिव विंग and the judiciary, they have their important role, but the law making bodies, they decide the fate for any nation, my dear friends. So मुझे बहुत ही प्रसन्नता है, मुझे ये भी बताते हुए हर्ष है कि करीबन 15 विधानसभाओं ने अपने अपने विधानसभा के अंदर ये MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट जैसी संस्था शुरू करने के बारे में एक पॉजिटिव उनका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, एक MOUs भी इसके बारे में साइन हुए। तो इसलिए मैं सभी जो जितने भी स्पीकर महोदय यहाँ पे, मैं उनका भी मन से यहाँ पे स्वागत अभिनंदन करता हूँ कि इस विषय की इम्पोर्टेंस उन्होंने जान के इसको ताकत दी। और मैं CP जोशी साहब के बारे में मेरी भावना व्यक्त की मैंने। CP जोशी सर, आप इस विषय में जो आपकी एकेडमिक रुचि, और राजस्थान में आप बहुत फेमस है,
इस विषय में आप किस तरीके से भूमिका रखते हैं, कितने असर्टिवली, कितने निष्पक्ष तरीके से, कि जब भी वो असेंबली में तो मतलब कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, लीडर, और इतना सहजता से उनका बिहेवियर, तो मुझे एक जब भी मैं उनके साथ बैठता हूँ तो शायद एक स्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का भी टॉपिक यहाँ पे रखा हुआ था, तो राजनीति का आध्यात्मिकरण, और अभी यहाँ पे खादिर साहब यहाँ पे स्पीकर ऑफ कर्नाटका असेंबली, मतलब ये विश्वास कि कल आप मुझे राहुल जी बोले आप मुझे पहले क्यों नहीं मिले, तो कर्नाटका में हमारी ये सेकंड एडिशन इमीडिएटली हो जाती। उन्होंने कल के कल मुख्यमंत्री महोदय से वहाँ पे बात की और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि जो ये उत्साह जो है, तो मैं उनका मन से उस बारे में स्वागत अभिनंदन करता हूँ कि ये उत्साह और ये रेसिप्रोकेशन, मैं तो एक ये चेतना, जस्ट टू इग्नाइट दिस वेरी thought, you know, what God has given this little opportunity, my dear friends, and I little initiated this. So much of praising has happened last 2-3 days, so I am very, very humbled from each one of you, my dear friends. And so this particular thing, like a karwa, now this baton, the way now Honorable Chief Minister Pramod Savanji has carried forward, and further Karnataka Chief Minister and the Karnataka Vidhan Sabha. So I think this is a great reciprocation, I must say, great reciprocation from our country's leadership, my dear friend. So once again, आपका सबका यहाँ पे स्वागत अभिनंदन करता हूँ। ये बॉन्ड ऑफ सॉलिडारिटी की जो बात है, आपके हाथ में ये जो रिबिन दिए, तो इसका एक बहुत सुंदर फोटो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। मैं महाराष्ट्र की सभी लीडरशिप का, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और देवेंद्र फडणवीस जी का प्रमुख रूप से, कि जिन्होंने सभी मुख्यमंत्रियों को चिट्ठियाँ लिखी, प्रधानमंत्री जी के साथ भी इसके बारे में चर्चा हुई, लीडर ऑफ अपोजिशन और उनके साथ भी सभी लोगों के साथ इसमें चर्चा हुई, और आज एक कलेक्टिव ऐसा सभी पार्टियों ने पूरा इकट्ठा के डेवलपमेंट के मुद्दे के ऊपर, ये कई बार पार्टियों का जो भावना हम देखते हैं कि तो एक ऐसा कॉमन मीडियम, मतलब घर परिवार की अगर एक साफ सुथरापन घर परिवार में भाई बहन माँ बाप अगर बहुत साथ में अच्छे से रहते तो परिवार एकदम सुंदर तरीके से वो फलता फूलता है, कोई शहर भी। तो उसी तरीके से मुझे लगता है भारत का भी अगर चित्र हमें उस तरीके से बनाना है, तो इसमें अगर पॉलिटिकल पार्टियों में इस तरीके की मैच्योरिटी और सौहार्द और एक तरीके का संवाद अगर हो गया, तो मुझे लगता है कि अपना भारत एक बहुत सुंदर फैमिली। मुझे मैडम इंदिरा गांधी जी से लेके कितने सारे प्रधानमंत्री हो गए, तो प्रधानमंत्री मुझे लगता है कि मैडम इंदिरा गांधी इज नॉट कांग्रेस के प्रधानमंत्री नहीं हो सकते, प्रधानमंत्री मोदी जी बीजेपी के भारत के प्रधानमंत्री। तो ये मुझे लगता है एक बार कोई महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हमारे शिवसेना के इस तरीके की भावना, तो ये भावना हमारे पूरे प्रोसेस में कैसे आगे आए और मन से ये विचार कैसे आगे आए, तो ये सब छोटा सा प्रयास है। और आप सब लोगों की रेसिप्रोकेशन की वजह से इतनी ऊर्जा और इतनी एनर्जी, हम सब ऑर्गेनाइजर्स में मेरे टीम ने इतना अविरत प्रयास किया, मैं कितने लोगों के नाम लूँ तो शायद ये बहुत समय इसमें चला जाएगा, लेकिन फिर से एक बार धन्यवाद, अभिनंदन, स्वागत। थैंक यू। Very much. The convener of National Legislators Conference, Shri Rahul Karat. Thank you very much, sir, for your words. And let's get ready to look forward to second National Legislators Conference as we come to the conclusion of this first National Legislators Conference. But before we do that, I would like to share with all the honorable MLAs and MLCs that I'm sure you would have received the feedback form which is there on your desk. So I would like to request you to kindly fill that form and return it to us after this session. And now it's time that we tie the Ekata Sutra. और आप सबके पास वो एकता सूत्र जिसके बारे में हमने आपको पहले बताया था, आप सब लोगों ने एक दूसरे के साथ इस बंधन को बांधा है और ये एकता सूत्र में सभी बंधे हुए हैं। I request everyone to rise in their seats wherever they are and tie this Ekata Sutra. Oh, such a beautiful. बहुत ही सुंदर लम्हा, ये सब तिरंगे के रंगों में एकता सूत्र, और आप सब एक एकता सूत्र के साथ जुड़े हुए। Such a beautiful, picturesque moment. I'm sure you can see on the screen. Look around you, how beautiful it looks that all the honorable MLAs, MLCs from across the nation are now tied in one single thread of unity, the Ekata Sutra. How beautiful is this? This is what we aspire for, unity. From people who've come, all the legislators who've come from different parts of India are now here together, tied in one Ekata Sutra.
Thank you very much. And with this, we have now reached to the conclusion of first National Legislators Conference. I now request, yes, let's give each other a big round of applause. जोरदार तालियां। बिल्कुल, इन 3 दिनों के लिए आप सब लोग एक दूसरे के साथ मिले, संवाद हुआ, एक विचार जो था वो सपना पूरा हुआ और ये पहला ऐतिहासिक राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन जो है वो पूरा हुआ। बहुत ही भावनात्मक पल है ये, बहुत उन तमाम लोगों के लिए जो इसके साथ शुरू से जुड़े रहे और जिन्होंने इस सपने को साकार किया है। रियली वेरी इमोशनल मोमेंट, वेरी हैप्पी एंड वेरी प्राउड मोमेंट फॉर एवरीवन हु इज प्रेजेंट हियर टुडे। थैंक यू ऑल फॉर बीइंग विद अस। साथ साथ Thank you very much. Let's now everyone rise in our seats for the national anthem, with which we will conclude this season of first National Legislators Conference. I request everyone to kindly stop the movement as we are now going to have the national anthem, and I request for the final time my technical team to kindly relay the national anthem, please. सबसे आग्रह है अपनी अपनी जगह पर थम जाएं। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मागे। गाहे तब जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Thank you very much. I request the volunteers to kindly make the way for the dignitaries on the dais to exit the auditorium. I request the media team to kindly cooperate. नो फोटो। बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम लोगों का। कृपया जगह बनाएं ताकि स्टेज पे उपस्थित हमारे तमाम विशिष्ट अतिथि वहां से जा सकें। और अब सबका बहुत धन्यवाद और नमस्कार। Thank you very much. Signing off from the stage of first National Legislators Conference. Thank you.